यहाँ लगेगा क्या लगाना है आपको? आपको कुछ है तो नहीं लगाना? सर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Respected professor, senior faculty members and my dear colleagues. Good morning and very warm welcome to you all. I welcome you all for the one-day workshop on MRI for orthopedic surgeons here at the JPMC Karachi with the collaboration of Radiology department. As we all know that MRI has become an essential tool in our daily orthopedic practice, whether it is a accurate diagnosis or precise surgical planning. Magnetic resonance imaging is absolutely vital. Today we have a fantastic lineup of Karachi top expert who will guide us through the essential of musculoskeletal imaging. To formally begin our program with a blessing, I would like to invite Mukhtar for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Jazakallah, Dr. Mukhtar. Any great academic event relies on the vision and support of our leadership. To officially welcome our guest and open the floor, I am deeply honored to invite Dr. Jagdish Kumar for the welcome address. Hello. Honorable guests, respected faculty members, dear colleagues and friends, good morning. It is my great privilege to warmly welcome you all this workshop. This workshop basically designed to improve our understanding of MRI interpretation and its practical application in orthopedics. We are fortunate to have both radiologists and orthopedic surgeons participate as faculty members. Our radiologist colleagues will help you to understand how to systematically read MRI scan and identify common pathologies, while our orthopedic surgeons will guide you through case-based discussions, highlighting the clinical importance of MRI finding and their role in diagnosis and treatment. I am confident that the workshop will be informative, interactive, and beneficial for all. I would like to express my sincere gratitude to the faculty from the Department of Radiology, especially Professor Shaista Shokas and his team for their generous support, guidance, and collaboration in organizing and hosting this workshop. I would also like to thanks to our organizers, coordinators, participants, and supporting staff for their dedication and efforts in making this workshop possible. Finally, I would like to thank our valuable sponsors, Gate Pharma and Self Pharma, for their generous supports and contribution to this workshop. Thank you for all being here. I wish you all the successful and enjoyable workshop. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Jagdish, for those encouraging words and for the setting a wonderful tone for today's seminar. So now we are starting our first
session. For the first session, I would like to invite Dr. Tabinda Aruj to the stage to present her talk on MRI knee, systemic interpretation and the common pathology. Please welcome her. Assalamu alaikum. I am Dr. Tabinda Aruj, consultant radiologist in JPMC Karachi. My today's topic of presentation is MR knee joint. We are discussing the systemic interpretation and common pathologies related to knee joint. So, the basic talks of my today's presentation is knee anatomy. Then we discuss MR sequences, MRI planes, and common pathologies. So basic osseous anatomy of the knee joint, as you all know, consists of distal femur, proximal tibia, fibular head, and the patella. There are different ligaments, menisci, and cartilages that joins the knee structures to one another. We see in further images. So this is basic MR planes. This is sagittal, these two are axial, and this is the coronal plane. We're discussing one by one. So firstly, it is an outview of ligament, menisci, and tendons that are forming the knee joint. So the important ligaments are ACL, anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, medial collateral ligament, lateral ligament, medial meniscus, lateral meniscus, patellar tendon, and quadricep tendon. Okay, so there are the full detail of the attachment, MR appearance, and function of these. So first we discuss the anterior cruciate ligament. This is passing from anteromedial tibial spine to posterior lateral femoral condyle. Here you can see these are the first sagittal PD image, sagittal T2, and coronal PD fat set images. This I am explained later then what are the T1, T2 and PD fat set images. So first we see the orientation. This is ACL, anterior cruciate ligament, that is passing from posterior to the anterior aspect of the tibial spine, posterior aspect of femoral to the anterior aspect of tibial spine. You can see the orientation that is according to the line of the lateral femoral condyle. This on this image, on T2 weighted images, and you can see in the intercondylar notch of the femur, this is fan-like structure. Then again, PCL, that is also passing from the posterior tibia to the anterior lateral aspect of the femoral condyle. All the ligaments are appearing hypointense on all the pulse sequences. So this is the PCL. It is a hook-like structure that you can see best in the sagittal images. This again T2 weighted images and PD fat set images, which are best for the ligamentous study. Now we are discussing the meniscus. This is the medial meniscus. It is having the body, anterior and the posterior horn. It is basically a C-shaped structure, so the anterior horn is a little bit smaller than the posterior horn. This is lateral meniscus, which is circular in its shape, and the anterior and posterior horn are equal in size. These appear as a bow tie appearance in the sagittal images. Now we are discussing the medial collateral ligament. It is a band-like structure, is appearing hypointense, located on the medial aspect of the knee joint, extending from the medial femoral condyle to the medial aspect of tibia. Next is lateral femoral condyle. It is again a band-like structure and extending from the lateral aspect of the femur to the fibular head. It is loosely attached to the joint. Now we are discussing the MR sequences, which we are using in our department and also in different machines. So these are a basic overview: coronal PD fat set, axial PD fat set, sagittal T2 fat set, and sagittal PD images. We are discussing one by one. So these are basically T1 and T2 weighted images. Actually, there is a physics behind these sequences, which are TR and TE sequences, which is another broad topic. Basically, TR is the repetition sequence and T is the echo sequence. So when there is a short TR and short T, these are T1 weighted images. The basic points are fat, subcutaneous hemorrhage, proteinaceous fluid, and GAT contrast enhancement appears bright or high signal on T1 weighted images.
while fluid, fibrocartilage, cortical bone and tumors are appearing low or hypointense on T1 weighted images. So clinical use of T1 image is basically to see the anatomy of the knee joint, while T2 weighted images, which is having a long TR and long T sequence, in which there is this is basically used in order to see the pathologies of the knee joint, especially the joint effusions. So the free fluid is appearing bright like effusion or edema, hyaline cartilage, relatively bright, cyst, bursa and tumors with high water contents also appears bright on T2 weighted images. Otherwise fibrocartilage, cortical bone, tendon, ligament and are appearing dark, and fat is less bright compared to T1 on this sequence. Here you can see this is T1, T2 and again T1 corneal image. You can see the fat is brighter on T1 compared to T2 weighted images. This is bone marrow fat and this is subcutaneous fat, which you can see. Okay, and different menisci. This is meniscus and these are medial and lateral collateral ligaments. These are appearing darker or low signal intensity on both T1 and T2 weighted images. Now there are proton density, stir and fat suppression. Normally we are using proton density image and proton density fat set images. The PD image is basically best for the cartilage and meniscal morphology, and PD fat set becoming the gold standard as the fluid becomes brighter on this image and it is shows the pathology fastly. In comparison to PD, stir sequence is not used as widely used, as it is insensitive to the field inhomogeneity. So it is not giving the equal fat suppression. So we are basically use the proton density in order to avoid any discrepancy in the reporting. And T1 GAD. T1 GAD is also sequence in which we are giving the contrast medium in order to differentiate the tissue differentiation on MRI. Basically PD, मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ. This is PD fat set, axial and corneal image, and this is T1 fat set, post contrast axial and corneal images. Both of these are used to contrast the tissue differentiation on MRI. PD fat set is used the natural hydrogen atoms in the tissues in order to differentiate the tissue contrast between the different structures, while in T1 fat set we are giving GAD, that is gadolinium, in order to differentiate these structures. So you can see the fluid becomes bright on PD fat set images in this sequence. So it is an overview of the signal intensities. You can see fat and bone marrow appearing bright on T1, T2 and PD images, but it becomes dark or suppressed on PD fat set images, as the name indicates, fat SAT, that is fat is suppressed in this. Free fluid or effusion appear dark on T1, bright on T2, PD, as well as in stir sequences or fat set. So again hyaline cartilage becoming intermediate on first two sequence and bright on last two. Menisci appears dark on all the pulse sequences. This is point to remember. And also ligaments in its natural signal intensity appears darker on all the pulse sequences without evidence of any hyperintense signals in it. Muscles becomes intermediate. Muscles shows intermediate signals on all the sequences. Cortical bone is dark. Bone marrow edema, if present, then it appears like fluid signals appearing low on T1, that is dark, and bright on T2, PD and PD fat set images, which is best in order to see this. Similarly, subacute blood appears bright, and variable sequences on PD fat set depends upon the duration of the beat. And GAD enhancement appears bright on T1 post contrast images, and we are not applying this on the other sequences because which are having long TR and TE. So this is again an overview which is showing how the fat is appearing bright on this T2 weighted images, and PD fat set images it is showing suppression. Ligaments appears, menisci appears low on both. You can see this, and ligaments are also appearing low on both the sequences, but the fluid is becoming pop out on this image and immediately shows the joint has effusion. So you can see bone, this is PD fat set sagittal sequence that is showing bone marrow suppression, subcutaneous fat suppression, but the fluid becomes bright, that is joint effusion, and subcutaneous, this is subcutaneous fat is trending acute bursitis, which is also shows high signals because it is having the fluid in it and it is pathological fluid. The ligament again, and these are the tendons. These all are appearing low on PD fat set sequence.
Now the planes which we are used in the knee joint interpretation. First I am showing the image. This is the mapping that we are doing in order to take the sagittal images, the mid-sagittal, medial, this is medial and lateral sagittal images. So you can see the different planes are used to see the ligaments. This is anterior cruciate ligament, which is well visualized in medial to lateral. All the fibers of this are well visualized in this. And again, in this image, the pathological fluid is pop out, and you can see this. Similarly, the coronal plane, again, we are using the planning in this way, and this again giving mid-coronal, this one, lateral coronal and medial coronal images. And you can see the intercondylar notch that gives crisscross sign of ACL and PCL, that is anterior and posterior cruciate ligaments. Similarly, in axial, we are taking suprapatellar, patellar and infrapatellar levels in order to see the joint. There are two images which I am showing. This is patellar and this is infrapatellar. You can see the femur, patella, patellofemoral ligaments. Similarly, in the tibia, there is patellar ligament attachment, and the muscles and subcutaneous fat well visualized in this axial images. Now we are talking about the common pathologies that are related to the knee joint. So first we understand the anatomy and then should go to the pathology. So the first thing which we are discussing, it is very important, the grades of the meniscal signals. So first we see the chart. If it is having homogeneous low signal on all the pulse sequences, then it is a normal meniscus. But if there is an intra-substance hyperintense signals are present, that is showing myxoid degeneration but no tear. In case of grade 2, there are linear intra-substance signal is present that is not touching any articular surface. I am showing later on the pictures all these things. And if the signal is extending to the articular surface, then it is true tear, whether it is touching one articular surface or two articular surfaces. Another glance on the meniscal tears. There are different type of tears according to the orientation. This may be horizontal, that is parallel to the tibial plateau, vertical or longitudinal. Bucket handle, which is actually a type of vertical longitudinal tear, radial tear, and further division of this is the parrot beak tear, and last one is the complex degenerative tear. So firstly, we can see the horizontal tear. It is located horizontally along the tibial plateau. You can see this is run horizontally, and these are the articular surfaces of the meniscus, and it is not touching any articular surface. Secondly, it is a vertical tear. It is vertical horizontal. It can be vertical straight or vertical oblique tear. This is vertical oblique tear. The third type of tear is the radial tear, which on the sagittal image is giving gapping sign. It is a truncated meniscus, so there is a loss of triangular bow tie appearance. If this radial tear is, you can see there is a root attachment. If it is reaching to this, then it shows root attachment. But this is radial tear on the sagittal, and the same picture in the coronal, that is showing gapping between this. So it is actually the root tear of a meniscal root tear, and this meniscal root tear may be associated with aligned meniscus, or it may be displaced meniscus. Like you can see in this box, the meniscus has been has shown the tear from its root and also displaced laterally along the alignment of the bone. This is a type of bucket handle tear. It is actually a vertical tear. It is run from this to this side, that is along the long axis of the meniscus. Mostly it is occurring in the medial meniscus, and its medial fragment is displaced centrally. It is usually associated with anterior cruciate ligament tear, so it can freely move posteriorly and lying down anterior-inferior to the PCL, give double PCL sign, very famous. So you can see this is normal PCL and this is a false PCL, actually that displaced this fragment from anterior horn of the medial meniscus posteriorly anterior-inferior to the PCL. This you can also see on the coronal image. Now there are again an overview of ACL and PCL tear. There are some primary signs and a few secondary signs. So in primary sign, in case of the sagittal image, we see non-visualization of the ACL fibers. मैं इसको picture पे show करती हूँ. We are see basically 3 points. First is the alignment, that is actually along the posterior aspect of the femoral condyle. Second one, continuity and the signals that are present in it, or the retracted fibers. So in this case, the ACL, whole of the ACL appears swollen,
with hyperintense signals on this PD fat set images along with retracted fibers. Few of the fibers appears to be attached, but mostly more than 75% of the fibers has been detached and shows retraction. This is sagittal and this is same coronal view. There are secondary signs which are also seen. This usually associated with avulsion fracture, showing the avulsed attachment site at the level of tibial spine. Here you can see clearly. Similarly, bone bruise can be associated with this. Look, this is appearing hyperintense signals. Again, these are hyperintense signals that are actually showing the bone marrow edema, contusion injury. And this also be associated with Sigon fracture. That is, a chip of the bone is separated from the tibial condyle. Okay, tibial plateau, sorry. Now this is PCL tear. PCL is normally a hook-like structure. In anatomy, we have seen this is having low signal on the pulse sequences, but in this sagittal PD and corneal PD flat set images, you can see again the same three things. The first, loss of the normal alignment. Secondly, hyperintense signals that is best visualized on PD fat set images, and retracted fibers. Now the collateral ligament pathology. We can see MCL pathologies and LCL pathologies. In MCL pathologies, there are three grades: grade 1, 2 and 3. So in case of grade 1, this is a band-like structure that is passing on the medial aspect, which we have seen before. If the fluid is present along the ligament, that is periligamentous fluid, that is appear as grade 1 tear. If the tear is extending to the ligament and showing a tear in it, it is grade 2, and it is passing through and most of the fibers are involved, then it is termed as grade 3 tear. Similarly, LCL tear. LCL tear is actually attached from the lateral femoral condyle to the fibular head. In this, you can see detached ligament with zigzag course and loss of the attachment to the fibular head, and also some hyperintense signals along the fibular head representing contusion injury. Now, another important thing which we are seeing on this, first I am showing the chart again. Wait. Yes. Chondral pathologies. In chondral pathologies, the normal cartilage, it is appearing uniform signals, smooth surface, and shows intermediate signal compared to the low signals of the ligaments. So if it is swollen and becomes softened, showing signal changes, but the surface is intact, it is grade 1. If it is surface fibrillation, then but less than 50% of depth, it is partial thickness fissure. In case of grade 3, more than 50% of the depth, and gives rise to crab meat appearance. And grade 4 is the full thickness defect, which is associated with exposure of the subchondral bone and fluid-filled defect. Now we see on images. Wait. Yes. So this is the cartilage, which is best visualized on the axial images. Here you can see some irregularity is present, but otherwise the cartilage is intact. This is grade 1. In this, the fissure is present, but it is less than 50% of the depth of the cartilage. In this, it is a crab meat appearance, like reaching to the bone but not involving it. And in this, you can clearly see there is complete loss of the fissure. Fissure is extending to the bone, involvement of the or exposure of the subchondral bone with hyperintense signals, and best visualized again on PD fat set images. Now the pathologies that are related to the bone marrow. There are different pathologies including bone marrow edema, occult fractures, osteochondral lesions, and osteonecrosis. These are also best visualized on PD fat set images. Here the few images which I am taking from my cases. You can see this is a large geographical area of abnormal signal intensity showing central fat signals with peripheral double rim sign appearance, best seen on T2 sagittal images. This is inner hyperintense rim of granulation tissue and outer hypointense rim of sclerosis. Best visualized on this PD fat set images where the central fat of the bone marrow becomes suppressed and we can clearly visualize. In broad term, we can see the bone infarct. Actually, this is the medullary infarct that is converting up to the cortical infarct. Again, second pathology, this is osteochondritis dissecans, in which there is a defect of the cartilage. The subchondral bone is exposed and a fluid-filled area is present around the bone that is separating this segment from the parent bone. The segment can be present, it is again 5 grades of this segment can be present along the bone or it is detached from the bone.
This is another topic. Next thing is bone marrow edema, which is usually related to the bone injury, contusion, hyperintense signals, again best visualized on PD fat set images. Now some occult fractures which are best visualized on MRI. Here you can see, this is a blur image, linear hypointense line seen passing through the lateral tibial plateau. Good visualization on the PD fat set images showing bone marrow edema in this image also. Next is tendon pathology and some cystic and bursal lesion. In tendons, we are seeing on the knee joint the patellar tendon, the jumper knee, which I'll show in next image, quadricep tendon tear, popliteus tendon, and IT band syndrome. So this is jumper knee. Basically, there is injury or tear at the site of the patellar insertion of the patellar tendon. This one. Here the tear is present, appearing as hyperintense signals on sagittal PD fat set images associated with the contusion injury of the bone at the lower end of the patella. Now the quadricep tendon tear, there is a complete through and through tear through the tendon with undulating fibers, and these are best visualized, also seen on the T2, but best visualized on T2 PD fat set images. T2 PD fat set images. And now some lesions that are related to the synovium. This is Baker's cyst, which appears as elongated on sagittal images and give their origin on the axial images present between the semi-membranosus and medial head of gastrocnemius muscle. Now there is a prepatellar bursitis, which is usually seen in different traumatic injuries. In prepatellar subcutaneous soft tissues, a streak of the crescent-shaped hyperintense signals, that is actually the free fluid, the fluid in the subcutaneous soft tissues present. So it is also best visualized on PD fat set images. So there must be a systemic reporting checklist in which we must check bone marrow. Secondly, articular cartilage, menisci in details to see the signals and their grade of injuries that are present. Next is ligaments, that ACL, PCL, which we have discussed in detail. Similarly, medial and lateral collateral ligament. And then the tendons, which are also very important and not to avoid to see this, quadriceps and patellar. Then joint fluid, which is best seen on the axial PD fat set images along with synovium, whether it is normal. If it is on contrast imaging, then we can see the enhancement on the synovium or some thickening if it's present or not. And periarticular other structures like we have seen Baker's cyst, bursa, ganglion cyst, and other vessels and neurovascular structures. So take home message is this: the PD fat set sequence, as we have seen in whole of our presentation, it is the most important sequence that shows bright signal of fluid, dark signal of fat because of fat suppression, and cartilage and menisci are well aligned in this sequence. Stir is also important for the bone marrow edema and stress fracture, but PD fat set is a little bit superior to this. Now sagittal sequences, sagittal imaging basically is important for ACL, PCL in order to see the meniscal horns, and coronal for the collaterals and body of the meniscus. Similarly, the grade 3 meniscal signals, that is true tears, can also best visualized on MR imaging. ACL tear are visualized, and remember that always follow a systemic checklist, that is bone, cartilage, menisci, ligament, tendon and fluid. Thank you. Thank you so much, Dr. Tabinda Aruj. It was a wonderful presentation, and we got to know so many things about the MRI. And as you all know कि orthopedic surgery residents के लिए या aspirants जो एग्जाम में अपेयर होने वाले होते हैं उनके लिए MRI एक नाइटमेयर होता है. तो जब भी उनके सामने MRI रख दिया जाता है तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं. But with this presentation, I think everybody's take-home message should be that how to systematically read an MRI. As Madam has already mentioned, the 8 main focuses which you have to see in every MR knee. And if you will look at all of those structures, I am pretty sure that you are not going to miss any significant pathology in reading the MRI of the knee. It was a wonderful perspective from the radiology side, but our upcoming speech is the knee guru, and who is going to focus, who is going to illustrate how orthopedic surgeons basically see the knee and how they interpret and how they manage the knee. So
जैसे हमारा भी जब एग्ज़ाम था तो हम ये MRIs या जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती थी उनकी फिल्म्स लेके भागते थे, कभी डॉक्टर जगदेश के पास, कभी डॉक्टर काजिम के पास, तो कभी डॉक्टर नासिर अहमद साहब के पास. सो दीज वर द गुरुज जिन्होंने हमें MRI पढ़ना सिखाया, लैब इन्वेस्टिगेशंस पढ़ना सिखाई. सो द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर काजिम रहीम. Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for this honor, for inviting me over here to give my talk. Before that, I want to thank to Dr. Kabinda for making our life easier. More than that, I was able to learn a lot about an MRI of the knee. So always remember sequence that what Dr. Kabinda told us. It's always we started with the bone, cartilage, and then we go on. We should not be going directly on what we think if there is some pathology about it. So today I will try to discuss few of the cases, and my talk will be totally interactive. I will not going to go through the slides because we have learned how to read an MRI, and now we have to try to see what we can find in our arthroscopic finding in this of type of patient. This is the reality of an orthopedic surgeon. So उर्दू की कहावत है अंधे को क्या चाहिए दो आंखें. तो हमारे आंखें जो हैं हमारे एक्सरे हैं और जो हमारे MRI फिल्म हैं जो रिलेटेड टू द पैथोलॉजी ऑफ द नी हमें गाइड करते हैं. एंड वी शुड बी नोइंग दैट sensitivity and specificity goes to 93 to 95%. So always remember the arts of diagnosis, it started from your hand, from how you feel your that joint that you are examining it. So first never go and see an MRI finding. So the first thing is the history that you start with. History के अंदर आप क्या पूछते हैं, कैसे चोट लगा. That's going to give you all of the idea of what's going on. वो कहेगा कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, at the end of the day मेरी ट्विस्टिंग इंजरी हुई. आप पे सवाल पूछता कोई आवाज़ सुनाई दी, आप बोलेगा हाँ मुझे एक पॉपिंग आवाज़ सुनाई दी. सो दैट्स वेयर दिस आवाज़ से आपको क्या पता चला ये किस चीज़ की आवाज़ है. एनीवन ACL एनी लिगामेंट इंजरी, राइट, एम आई राइट. एक बंदा आता है अब अपार्ट फ्रॉम दिस नेचर, एक बंदा आता है डॉक्टर साहब मैं टेनिस खेल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन मुझे जर्क फील हुआ, इसके बाद मैं पाँव ज़मीन पे नहीं रख पा रहा हूँ और मेरे सीवियर एंकल में दर्द हो रहा है. इसका क्या मतलब हुआ, क्या चीज़ गया, क्या चीज़ उसका गया, आवाज़ आई है सीवियर, क्या चीज़. एनीवन, सॉरी, कहाँ का लिगामेंट, एंकल में पेन है, एक्किलिस टेंडन. सो दैट्स, देखें आपका 100% डायग्नोसिस हो गया. सो नाउ यू नो कि घुटने में ट्विस्ट हुआ है. So you want to find what? Any related pathology of the knee joint जिसके अंदर आवाज़ आई है. Isn't so? I should honestly here give whole of the acknowledgement to the radiologist. ना उनको आवाज़ आती है, ना उनको दिखाई देता है, ना सुनाई देता है. सिर्फ और सिर्फ एक आता है पेशेंट MRI कराता चले जाता है, फिल्में आती हैं और वो फिल्मिंग कर रहे थे. That's really make their life very harder. So उनके लिए क्या ज़िंदगी आसान हम कर सकते हैं. When we send the patient एक पेपर पे लिख लें कि उनकी आवाज़ भी सुनाई दी थी और स्वेलिंग भी हुआ था. So that's how they will be able to interpret and more focus on the relevant pathology that we think is over there. हमने हिस्ट्री लिया. अब एक पैथोलॉजी के अंदर वो आता है कि एक पेशेंट है, वो आता है एक हफ्ते के बाद इंजरी हुआ आपके पास, orthopedic surgeon. So that's my this is a gray zone. I'm not sure. My colleagues are sitting over here. उनका क्या thought है. एक पेशेंट आता है, उसको मिसाल 3 दिन पहले सीवियर इंजरी हुआ, ट्विस्टिंग इंजरी हुआ, स्वेलिंग हुई थी, आवाज़ सुनाई दिया. How many of you think we should do an MRI? हमें MRI अभी भी हाथ को करानी चाहिए. नहीं कराना.
मैडम आपका क्या थॉट अबाउट इट? मैं ये अपने लिए मैं आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट. Acute injury within 3 days, patient swelling है. What do you think? What is the sensitivity specificity in these patients where there is a we know there is a pathology but there is a severe swelling? आपके लिए कितना ये misdiagnosis की तरफ ले जा सकते हैं? Swelling is joint edema. Yeah. So it is giving the contrast between, you can see the ligaments and the grade. You can see the ligaments and the grade of injury. So it is, I think, heavily treatment So, planning of you. if we delay for 4 to 6 weeks, what your thought about? It's better for you to further see the pathology. It just changes into the chronicity. Yeah. So the site of the tear may become sclerosed. The joint fusion can be reduced with the help of medicine. But I think नहीं, मेरा मतलब है कोई एक्यूट में है आपके एमआरआई की आपकी इंटरप्रिटेशन ईजियर होगा या कोई क्रॉनिक है तो आपकी एमआरआई की इंटरप्रिटेशन ईजी होगा. Does it make any difference in your pathology or diagnosis? So in acute findings, we have a contrast based imaging. So there is a lot of joint effusion which can make us clear about other ligament and meniscal injury. And by the history, we know that this patient has an acute trauma within 3 days or 4 days or 2 days. So it has a different category of interpretation. But if the patient has a trauma 1 month ago or 1.5 months ago, then the findings will be interpreted in that link. Because we can still see the findings, but they will be healed a lot Sure. than the acute ones. So we can still have the findings, but yes, in chronic, then you cannot grade it that much because they are in healing phase. So some pitfalls are there to interpret if this is still subacute or it has gone into the chronic phases. So my practice, I always delay my patient MRI for 4 to 6 weeks. Why I do that? Because in the acute there is a swelling, there is a pain. I'm not able to do any type of examination. So for me it's very hard to at least to give some differential diagnosis before I do an MRI and just find out, okay, that might be the reason. There might be some bruises, that should not be the acute fracture over there. That might be a sprain, that should not be the grade 3 tears. Even the ligament, extra-articular ligaments has a good healing, like MCL, that have a 40 to 60% healing. So we might delay it and there might the healing over there, that's my grade 2 MCL sprain can be healed at the end of the day. I don't need to do anything with that. That's my thought about it. Dr. Naveen, so what's your practice? I will agree with the radiologist colleague. So, I think that was the old theory, so I don't really care if it's acute or chronic. So whenever patient is coming for patient, they get MRI done. So and I agree with her. I mean, blood take is a contrast, so you may be able to find some hidden thing, especially in shoulder. Yeah. You don't need to do orthogram when you're doing acute setting. So it doesn't really matter. So there's this different school of thoughts. So that's what our orthopedic residents should understand. Okay, why do and don'ts. Why I'm not doing it, I have my own, you can say, reason for that, and why they are doing it, they have the reason. So then in exam, you have to convince the examiner, right? That's how the things work over there. So this is my topic of MRI of orthopedic case-based discussion of the knee. इसके बारे में हमने सब पढ़ लिया है. We know what's the schematic presentation of a knee joint. So every cut section has its own importance. Being as an orthopedic surgeon, and I am a student of knee and hip like pathologies, so I should be able to read my own MRI. देखिए, अगर आप अपने MRI को खुद नहीं पढ़ सकते तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पेशेंट की पैथोलॉजीज़ को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते. और जाहिर बात है बहुत सारे हर एक इंटर ऑब्जर्वर डिफरेंसेस होते हैं फ्रॉम वन रेडियोलॉजिस्ट टू अनदर रेडियोलॉजिस्ट. एक की हो सकता है कि स्पेशलिटी एक
पार्ट का हो, वो उस पार्ट का नहीं हो जो आपकी ज़्यादा थॉट है. सो बीइंग एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन वी शुड बी एबल टू रीड आवर ओन MRI and then see what is over there and then again learn it from it. So I will not going to go through it. About the knee joint, we know about the meniscus, we know about the different cuts. So we started with this thing. So ये आप लोगों ने मुझे गाइड करना है कि what you think and what we might be going to find out of it. 55-year-old male will present in the OPD with case of knee pain after jerk since last 3 months. McMurray sign पॉजिटिव है, लेगमैन टेस्ट नेगेटिव है. सो क्या होगा इसको? meniscus injury. So we know we are all focus should be on meniscus, right? MRI कराया. So MRI में कुछ फाइंडिंग आई है. Anyone tell me what is your finding? Bucket endal tear. Okay. Why you think it is a bucket endal tear? Okay, so let me show you. ये क्या चीज़ है और ये क्या है? ये क्या हुआ है? नहीं, patella tendon. Don't go over there. It is I'm starting with just sagittal section. It's from the medial and going to the lateral. ये क्या चीज़ हुआ है? ये इसको क्या कहेंगे? Complex tear sir. Complex से flip हुआ सर. Like medial meniscus से कुछ ऐसा flip tear हुआ होगा. Isn't so? अब मुझे पता है कि medial meniscus का something like complex flip tear है and that's how it is been looking on my MRI. Arthroscopy किया and that's what I am able to find it out. So this is whole of the meniscus is being flipped posteriorly. So with the help of a hook we brought it anterior and you see it's a complex tear. So complex tear it's always we have to understand कि इसका आउटकम क्या होगा. My repair will going to heal or not? In spite of repairing the meniscus, there is 50 to 20% chances your repair might fail. So ये भी आपके लिए बड़ा important है. You have to understand हर चीज़ को according to the your science you have to focus on that. Next, another patient. Anterior knee pain है while climbing stairs. Clinking sound, occasionally instability while walking. Examination, Lachman test positive है, anterior drop positive है, McMurray positive है. क्या क्या हो सकता है? Medial meniscus. So medial meniscus is very hard to say. McMurray आपका again आप वायर इंटर रोटेटेड हुआ है, वायर एक्सटर्नल रोटेटेड हुआ है, उससे आपको पता चले. So meniscus with ACL, that's what we are trying to find on our MRI. So ये इसके कुछ फिल्म्स हैं. इसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग है आप लोगों की? Anyone? This thing. इसका स्टेयर है. Bone bruise. You can say there is a joint effusion. और ये क्या चीज़ है? PCL है. ये PCL है. इसमें सर मिडिल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न का सर जो है वो क्लियर है. Clear है. सर ACL के फाइबर्स जो है ना वो सर वो इसके PCL पे. अच्छा ओके. सो इट इज़ नॉट अ ट्रू कट ऑनेस्टली. सो अगर आप ये देखें कोरोनल कट्स देखें. सो अगर यहाँ पे देखें ये द एंटी साइन जैसे डॉक्टर साहिबा ने एड्रेस किया है. सो अगेन you will going to find yourself with seeing the patient by examining it. At the end of the day you will going to interpret on your MRI. So this is another thing, ramp lesion. So this is a meniscosynovial junction tear. So that's where you have to see on the basically on the coronal cut of the medial side. So there where you will able to understand about the ramp lesion. So it is 20 to 25% of these patients having this type of tear, and is most of the time it is being ignored or it is not being diagnosed. That's very important, and that's the meniscofemoral junction tear. This ramp lesion will going to later on convert it into the bucket endal tear, because it's again it's our responsibility as an orthopedic surgeon. We always go posteromedial side of the knee and examine it if it is there's any ramp lesion or not. 20-25% is a big number. So you have to understand that's been missed while doing arthroscopy. So इस तरीके से होता है ये जो
Oh, sorry. Let's move further. 16-year-old female with history of fall from Russia, after which she had right knee pain and decreased range of motion. Examined right knee restricted 0 to 15 degree, tenderness positive. Anyone? कोई ऐसा कोई क्लू है इसमें? मेरा नहीं ख्याल. No, मेरा नहीं ख्याल. Any finding? अच्छा, चलें गौर से देखते हैं. टिबियल स्पाइन को अगर आप दोबारा गौर से देखें, इज इट अ टिबियल स्पाइन फ्रैक्चर? मतलब मेरा भी इंप्रेशन ये था, बट स्टिल अगर आप दोबारा गौर से देखें, एसीएल की एवल्जन मैं यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ. एसीएल की एवल्जन आप गौर से देखें कि आपको एसीएल की एवल्जन मतलब बोन इंटैक्ट है या नहीं है. बोन इज इंटैक्ट, राइट? अगर आप ये देखें, ये ये कॉर्डेज टिबियल स्पाइन है, ये कुछ बोन पीस है, ये समथिंग लाइक ओवर हियर. ऑस्टियोचॉन्ड्रल डिफेक्ट, यस यू आर राइट, दैट्स व्हाट्स वाज. सॉरी मैडम. जी, डिटैचमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट. सो अभी देखें क्या नज़र आ रहा है. कोई एनीवन? ऑस्टियोचॉन्ड्रल डिफेक्ट. सो कुछ यहाँ पे कुछ कहीं पे होगा, राइट? और ये अगर आप देखें, समथिंग आर्टिकुलर सरफेस इज ओवर इन द जॉइंट, इजंट सो? सो हमने जब आर्थोस्कोपी किया, दैट्स व्हाट वी फाइंड इट आउट, देयर वाज अ ऑस्टियोचॉन्ड्रल डिफेक्ट. सो आर्थोस्कोपिकली वी फिक्स्ड इट. So that's what able to understand with the examination. Again, on the MRI, your diagnosis should be in your hand while starting with your arthroscopy. So a patient ka, I will not go into after 1 year, she is able to flex her knee and she is now independent walk and she is fine. So this is another patient, 17-year-old male patient with history, came to OPD with history of twisting of left leg while playing football. Lachman positive है, ADT positive है, ADT anterior draw test. So and McMurray negative है, ACL है. So very important ये है कि अगर हम ये सारी फाइंडिंग लिख के अपने जो हम लोग MRI के लिए एडवाइस कर लें, that will going to make the life of our radiologist much easier. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मैडम आप लोगों से भी ये है कि आप लोग बड़े MRI के आते रहते हैं, हमें जो फिल्म दिया जाता है बड़े छोटे छोटे 100 के करीब दिया जाता है, और उसके अंदर हमें जाके वी हैव टू ट्राई टू पिक व्हाट वी वांट. और जितने स्मॉल होता है आपको पता है, इट्स वेरी हार्ड जस्ट टू असेस इट. वी कैन जस्ट कम विद एन सोल्यूशन. समवन कमिंग विद अ स्पोर्ट्स इंजरी और नी इंजरी है, तो हम स्पेसिफिकली जैसे रिगार्ड तो ACL का कट दे दें, PCL का दे दें, मेनिस्कस का स्पेसिफिक कट दे दें. दैट्स मेक आवर लाइफ ऑल्सो ईजियर एट द एंड ऑफ द डे टू डायग्नोस बाय आवर सेल्फ ऑल्सो. सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, काइंडली. So select case में meniscus का देना है, इसमें collateral में दिखाना है, मुश्किल हो जाता है. अगर हिस्ट्री दिया जाए तो हिस्ट्री को प्रॉपर्ली आपको कॉर्स में रिक्वेस्ट हो कि हमने इस चीज़ को फोकस करके काइंडली फिल कर दिया है, बट अगेन जैसे स्लिप के ऊपर ये लिख दिया जाए कि please focus on meniscus, ACL, that will going to make your life easier, right? That's what we can do. जैसे बहुत सारे we can give you CD so that you can install yourself and find out the pathology. That's rather than film में technician को समझाएं कि इसमें ये क्योंकि daily के 200 patients में से अगर सबको I understand it. You're right. We can have the CD at the end of the day. We can. So the film is made when the patient comes and have the scan and goes back. Right. So the film is made at that time. We report on the consoles, so we do not really see what is on the film unless our console is out of order. So it's a two-way thing because we do not get a proper history of the patient from the orthopedics or any other department in the hospital. So we give you a lot of images, so you also keep ढूंढो तो जाने, खुद ही जाके पहचान लो. So they require blind fire from others. Yes. That are two ways. That's how I always say. So this is another 17 years. So we know this is ACL tear and that's it. कोई इसके अंदर किसी का कोई डाउट है कि ACL tear है या नहीं है? Anyone? There's ACL tear, right? There's ACL tear and on the sagittal and the coronal cut. That's always try to find your finding on the coronal cuts also. So आप हमेशा sagittal को ही तलाश कर रहे होते हैं. Coronal के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे फाइंडिंग मिल जाते हैं.
Mind doesn't know, the eye doesn't see. So you have mind should be knowing it, so your eye can see what's going on. So this is what was a ACL related situation, and then we do an arthroscopic ACL reconstruction. So this is another patient. Let's move to the complex one. This is a pain and swelling the left knee. He has a history of road traffic accident. He came to us 2 months later. So अब बताएं क्या क्या इसका गया हुआ है? Anyone? सब चीज़ गया हुआ है. ACL भी गया हुआ है, PCL भी गया हुआ है, MCL भी गया हुआ है, LCL भी गया हुआ है. So the 4 of the ligament has been multi-ligament knee like injuries over there. Type 4, PD type 4. This was the knee X-ray of the knee. So एक हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि कोई भी एक्सरे कराए, बस एक काम करें, अगर पेशेंट कैन वॉक और कैन स्टैंड, स्टैंडिंग एक्सरे कराएं. ये तो हम कर सकते हैं, राइट. मिनिमम थिंग दैट व्हाट वी कैन डू. जब कोई भी एक्सरे आए जहाँ पे पेशेंट चल सकता है, पेशेंट खड़ा हो सकता है, स्टैंडिंग नी के एक्सरे होने चाहिए, लाइंग एक्सरे नहीं होने चाहिए, चाहे वो आर्थराइटिस व्हाटसोएवर. दैट विल गोइंग टू गिव अस अ मच मोर positive information to us. So articular surface is fine. Anyone? You think articular surface is not good? Any positive thing in the X-ray? Sir, there is fracture on the cingulate and there is a femur sigmoid fracture, sir. Media side पे है. Avulsion होगा. Avulsion injury था ये. Right, you are right. 100% you are right. So अब ये देखें क्या क्या है इसके अंदर. क्या क्या है सजाटिल में, क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? ACL, PCL, meniscus look fine, and that's the ACL and PCL both are gone. अब ये देखें इसका coronal cuts हैं. MCL कैसा है, LCL कैसा है, all are gone. So 6 weeks is the minimum time that we give for the spontaneous healing. So 40 to 60% of the patient MCL heals without the surgery, and the tibial portion healing is better as compared to the other type. Intrasubstantial healing is not good. So that's what we try to conservatively manage. That's the nature to heal itself. So we reconstructed all four of the ligaments in one setting. We took the bilateral hamstring tendon, we took the quadriceps tendon, and through that we reconstructed all the 4 ligaments in one setting. So that's what we go through the posterior lateral and posterior medial portal. That will going to help us for the replacement of the PCL jig. We are preparing the PCL jig on the tibial side, where our jig would be placed. And then champagne ridge कहाँ होता है और किस चीज़ के लिए होता है? Anyone? Champagne ridge क्या होता है वो? कौन सा लिगामेंट का इंसर्शन होता है? Anyone? ACL का होता है? ACL में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है? Resident ridge. और champagne ridge PCL का होगा था, बस सिंपल. The PCL or the tibia has been inserted. So this is what we want to be at the champagne ridge. So that's where we're going to put. And now we have passed the tendon. This is for the ACL, and this is we did it by PLC and MCL reconstruction Larsen. And this is whole of the knee joint in the one setting. That's how it looked like. MCL, PCL button. This is for the MCL, this is for the ACL with the head of a quadriceps tendon, and PLC with the Larsen. So another case, patient came to us at that time, he was 20 years old, he is now engineer from the NAD University, knee instability 1 year back. This is all about, इसके क्या क्या गए हुए हैं? Anyone? ACL भी गया हुआ है, PCL भी गया हुआ है, और क्या गया हुआ है? Posterior lateral corner भी गया हुआ. So it is also multi ligament, KD type 3. Okay. So this is a knee joint of the 20-year-old male. So this again, ACL और PCL के क्या हालात हैं? Doesn't look like good. ये हालात हैं. ACL PCL गए हुए हैं दोनों में? Is it so? अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये क्या चीज़ है? ये
अगर आप ये देखें, जब हम अगेन द रूट केस जो डॉक्टर साहबा ने बात की, वी ऑलवेज हैव टू चेक द रूट ऑफ द मेनिस्कस इज इंटैक्ट और नॉट. देयर इज many of the time 10 to 15% there is a root injuries of the meniscus also. So root, if the root meniscus is there, that means the patient physiologically having a total meniscectomy. So bowstring mechanism of the meniscus को intact रहने के लिए root का intact रहना mandatory है. So you have to repair the root. So that's what we are finding over there. So this is what was over there. The root was not intact. So if you see over here, is it so? देख रहे हैं meniscus, it's not attached to the root part. So this is what our finding. ये क्या चीज़ है? Root tear. So देखें अगर ये root यहाँ पे एक insertion होती है. So it was teared arthroscopically. This is what was our finding was. The root was teared. So again, we go inside, we reconstruct all the 2 ACL and PCL and PLC, and root avulsion was also being restored. So this is for the PCL tunnel for the tibia. This is for the ACL tunnel for the tibia. This is for the PLC complex. That's what we repaired, and then avulsion that is being restored with the help of a button. So this is how X-ray look like. Okay, this is the last case. This is also a multi-ligament knee injury patient who having a road traffic accident, 5 year. His PCL and PLC was torn. MRI के अंदर अगर आप देखें तो that's what our finding was. Thank you very much. I have a question. So, please. Come on. Regarding that case which you showed, which has all the tears in a patient and all the tests positive. So, with your school of thought of delaying it for 4 to 6 weeks, would you still delaying these patients for an MRI, or if you think that everything is positive and you have to get an MRI to see the extent of the injury, so what will you do? So that's a very important question. This is a point of contention and controversy in orthopedic. So we have 2 schools of thought: acute versus delay. Delay means wait for 6 weeks. Acute means within a week. I am a delay surgeon. हम हर काम रुक के करते हैं और अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और नेचर को मौका देते हैं. So acute, why in acute the repair is more possible as compared to the delay. If you're going to wait for 6 weeks, there is a less likely chances because of fibrosis you will be able to repair it. When you're going to repair, there is 30 to 40% chance your repair fail. Acute, there is a hematoma that's very hard to get a field over there. Again, these KD type of injuries knee dislocation, that's how we classify KD 1, 2, 3, 4. So these injuries, that ACL and PCL, there is a tear, there is a more chances, there's a literature show 20-25% chances this patient having a spontaneous knee dislocation which has been relocated. So again, there's a chances that vascularity might be compromised. So doing an acute and putting a tourniquet and then waiting for 2 hours, you might having some vascular insert. So what we do, we delay it. We always assess the vascularity of the patient. We will going to show with the help of ultrasound, with the help of CT angio. We always see there is no intimal tear, any type of injuries. So if there is an injury, there is any transaction patient coming on the collateral, that is a relative contraindication for repairing all of the ligaments. So there's always a pros and cons. So there's a lot of controversy. There's a 7-point controversies for doing an acute multi-ligament knee reconstruction as compared to the delay. Timing of the surgery, repair versus reconstruction, there's another 5 more. So my school of thought, with our practice, which have seen delay have been more helpful, and we always reconstruct as compared to the repair. So I think that's how we think about it. Hope I have answered the question. Sir.
Thank you, Dr. Pratham. Thank you. Nice presentation. Thank you very much, I sir. just want to add one thing, that when we order an MRI, we write this MRI with a knee protocol. That's what we That should be understood, and I want to also understand if you radiology guys can do this MRI with knee protocol or you do the simply MRI. मैं यही तो गुजारिश करना चाह रहा था मैडम से, Yeah, हमारी गुजारिश को वो and that means you put the knee in slightly 10 to 15 degree of flexion while getting MRI, because that's the position where ACL is relaxed and you can see the ligaments very well. Most of the time, if you put the knee very straight, and sometimes they do MRI with the technicians and you cannot hardly see ACL in its shape, and that also confuse the finding. But we are using a specific protocol for the joints. So it depends on the technician and the patient as well. So if the patient has a limited motion of the knee joint, he will say that I cannot move the joint. So we have to keep that straight in order to make it comfortable. So in that case, if the joint is not positioned, then it comes with the technician. So he will angle the orientation of the slices he will take according to the joint specification. So the position of the knee, if it is straight, then he will take all the images and take the acquisition in 15-degree tilt. So otherwise, if the patient can make it the position normal, so he will take the ending position where it is the indicator. Okay. Any other question? Thank you very much. Thank you, Dr. Kazim, for such an amazing cases. Now we are moving from lower limb to upper limb. To talk about the shoulder imaging, please welcome Dr. Raima Galimi, who will speak on MRI shoulder, rotator cuff instability, and common pathologies. इसी में Assalamu alaikum everyone. Okay, assalamu alaikum everyone. Thank you Orthopedics department for giving us the opportunity to present here. And while we make any presentation, we learn ourselves as well. So there's a kind of revision of everything. So the shoulder, when I was making the presentation, I was like, I can talk about the shoulder the whole day. So it was like, I was so confused, how can I just sum up all the things in a 20 to 30 minute talk. So I have tried to compile each and every important thing which we think that orthopedic point of view you will gain some knowledge about. So let's just start. So no disclosures, I am a faculty, no conflict of interest, no financial disclosures. So overview, we'll going through the anatomy, MR imaging, sequences, tears, tendon tears, bicep pathologies, miscellaneous, and then ended. So first of all, the anatomy of the shoulder joint. For the anatomy of the shoulder joint, you know the rotator cuff are the main muscles.
So we are looking at, especially when we are talking about the shoulder joint, the subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor that are attached to the proximal humerus. The main function of the rotator cuff is to stabilize and center the humeral head in the glenoid cavity during movements of the arm by compressing the humeral head against the glenoid. The rotator cuff, as the name suggests, also plays a major role in the internal and external rotation of the arm. So this is a diagram which you can see that how the muscles are aligned in a shoulder joint, as you all know this. So the supraspinatus muscle is located in the subscapular folds with insertion of the tendon on the greater tuberosity. The supraspinatus muscle initiates the abduction of the arm, which is continued by the deltoid muscle, which is the greater abductor and extensor of the arm. Then comes the infraspinatus, which is beneath the supraspinatus. So the infraspinatus muscle is located posterior to the scapula, inferior to the scapular spine. The tendon of this infraspinatus muscle attaches on the posterior aspect of the greater tuberosity. The infraspinatus muscle is a strong external rotator and additionally assisting both abduction and adduction. Then comes the subscapularis. The subscapularis is located anterior to the scapula with insertion of the tendon on the lesser tuberosity. So the insertions are very important to keep in your memory. The subscapularis muscle is a powerful internal rotator which also support the arm during abduction and adduction. Dislocation of the long head of bicep will result in rupture of part of the subscapularis tendon that I will cover later on. Teres minor, the teres minor muscle is located inferior to the infraspinatus. The tendon attached on the greater tuberosity. The teres minor muscle function consists primarily of external rotation and adduction of the arm. So here is a look of in-face look of the glenoid. Okay, so the glenohumeral joint has the following supporting structures. As you can see that anteriorly, so here you can see that anteriorly it is supported much more than posteriorly. So all the major structures which you see, that the superior glenohumeral ligament, the subscapularis tendon, the middle glenohumeral ligament and the inferior glenohumeral ligament are in the anterior part of the glenoid. Then comes the one of the tendon of the inferior glenohumeral ligament, which is on the posterior aspect. Then supraspinatus, infraspinatus and teres minor tendon. So this is how the glenoid in face looks like. So this is a small video of the crucial anatomy which we usually talk about. So I know you people, you all know the MR anatomy. So if I pause anywhere, so this is the long head of biceps. Okay, so this is the coracobrachialis and the band of inferior glenohumeral ligament here. This is the subscapularis and posteriorly comes the teres minor and deltoid. Then okay, so at the labrum or at the glenoid, so you can see the middle glenohumeral ligament, the subscapularis, the spinoglenoid notch, the inferior infraspinatus and the deltoid continues. So this is the axial plane, this is the T1, and I will not go in the details of the sequences as Dr. Tabinda has already discussed a lot about them, and in every joint you see similar kind of sequences. So the I will show you in the next slide. So okay. So this is the, which plane is this? Which plane is this? Coronal. So which plane is this? Which is this? This is sagittal. Okay, so sagittal is very important when looking at the tendon pathologies. So you see this supraspinatus, the infraspinatus, the supraspinal ligament. So
one and the other important thing apart from tendon is the bursa. So there are 5 main bursa that are found in the shoulder, that is the subacromial, subdeltoid, subscapularis, subcoracoid, coracoclavicular and supraacromial. So these are the bursas showed in the diagram. Okay, so one of the example. What is this? So this is a sagittal fat suppressed image. So the sterec show. Where is this sterec? What is this structure? This is a subscapularis tendon. Okay, and what is this fluid accumulation here? Which bursa is here? It is written there. So this is subscapularis bursa. Okay, so this is enlarged, this direct one, and this is the subscapularis tendon. Okay, so another example. What is this? This is a fluid collection, enlarged bursa. Which bursa is this? Subdeltoid, because this is the deltoid muscle. Okay, so if it is beneath the deltoid, this is called subdeltoid, and this is the acromioclavicular joint. So acromion is also there, so it can be called as subacromion subdeltoid. So this is a huge subacromion subdeltoid bursa. So my presentation is a bit interactive in between to make you people awake. So keep an eye on that. So okay, this is the MR acquisition. So when we were talking about the positioning of the knee, as sir questioned me that it should be in 15-degree position to get the good acquisition of ACL. So in shoulder, the acquisition is taking straight in the line of the supraspinatus insertion. So whatever the direction is of the supraspinatus, the shoulder cuts are taken in accordance to that. Either they are axial, either they are coronal, either they are sagittal. So plane parallel to supraspinatus, general sequences T1, T2, fat set, as you already know about these sequences in detail now. Axial में specifically we do T1 and fat set, sagittal T2 and fat set. Then the sequences, so T1 you know short TR, short TE, then T2 you know that what are the difference of MR characterization between T1 and T2, you know already. Bone will be high, marrow will be high, fat will be high, all the ligaments and menisci, cartilage will be low. Okay, so these are the main sequences of the shoulder joint. So another thing which causes a lot of problem is the acromioclavicular joint, and there are 4 types of the acromioclavicular joint, which are the one, the flat one, the curved one, the hooked one, and the convex one. So in this diagram you should be MRI images of the 4 types. So this is the hook type, this is the flat type, and which type is associated with impingement? Hook type. Okay, so okay, which type is this? Which type is this? Come on audience, which type is this? Now again see, this is the flat type, this is the curved type, this is the hook type, this is the convex type. Which type is this? Curved type. This is the most common type we get in all the joints. Okay, so I have discussed this small part of osteoarthropathy here because it is related to the impingement as well, so we will cover it again later. So acromioclavicular osteoarthropathy, that is the edema of the joint with joint space narrowing, subchondral cystic changes, and protrusion of the joint fluid and joint degeneration
beneath it so that it causes a compression over the supraspinatus tendon, which is causing the impingement in multiple patients. So impingement syndrome, shoulder impingement is a group of condition characterized by entrapment of the musculoskeletal soft tissues within the shoulder and resultant pain. Subacromial impingement is the most prevalent form of the primary extrinsic impingement syndrome. MRI is the modality of choice. Superior imaging quality, soft tissue contrast, bony abnormalities, hypertrophy and bony spur you can identify clearly in MRI. So okay, this is another case. You see that there is acromyoclavicular osteoarthropathy which is causing significant compression over the supraspinatus. There is supraspinatus tear because of it. So you see the coronal and sagittal fat suppressed proton density images. There is impingement, there is hyperintensity in the supraspinatus humeral attachment. There is degeneration of the acromyoclavicular joint here. Okay, so now comes the most difficult topic of the shoulder, that is the labral tears, which we usually confuse and in which we are very shaky to report and to assess. So the labral anatomy, as you see this labral anatomy, so this is a clock. This is a clock which is anteriorly, if I talk about my shoulder, so anterior border is 12, 3, 6 and the posterior border is 6, 9 and 12. So this is how the labrum is, and because of this clock all the injuries are marked as clockwise. Either they are 10 to 12, either they are 3 to 6, either they are 6 to 9. So because of this clock we usually use the word of 3 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock. So whenever we use any clock, so you should visualize in your mind that which border I am talking about. So is this the anterior border or is this the posterior border? So keep this picture in your mind and then we will go to the other cases. Okay, so as you know, labral tears are very much associated with the dislocations. So anterior dislocation, 95% of anterior dislocation, and posterior dislocation is not very often seen. This is due to electric shock or seizure and can go unnoticed. Inferior is very, very uncommon. So first of all, the SLAP lesions. The term SLAP is an abbreviation of superior labrum, anterior and posterior lesion. So that is a superior labrum. Okay, you go to this picture, superior labrum, anterior, that is 2 o'clock, to posterior, that is 10 o'clock. So name tells you what you are looking at. The lesion can occur owing to a single traumatic event, repetitive stress or labral degeneration. What is the clinical manifestation? Exacerbated with overhead activity and a catching or popping sensation with overhead motion. Although the typical and frequent reported location of the SLAP is 11 o'clock to 1 o'clock, involvement of the labrum elsewhere on the glenoid phase in combination with superior labral involvement is well recognized. So you can have multiple other labral injuries as well with this SLAP. So SLAP classification. What is the SLAP classification? SLAP has a lot of classifications. The SLAP lesion distinguished by 3 factors: the morphology, pattern of the labral abnormality, location or extent of the labral abnormality, the presence or absence of involvement of adjacent structure. So the most common SLAP injury is SLAP 2. Okay, so why we do not take in consideration SLAP 1? Because usually SLAP 1 is due to degenerative disease. So this is overread most of the time. So we do not take into consideration SLAP 1, but the most common after SLAP 1 is the SLAP 2 injury.
So the morphology of labral failure that can be found with slap lesion is highly variable. Labral fraying is generally degenerative in nature, and further it is almost universally present in middle age and elderly persons, dominating in the posterior superior or anterior superior portions of the labrum. Labral detachment may be partial or complete, and labral tears can be described as longitudinal, vertical, horizontal, radial, flap type, bucket handle. As you see that in knee, shoulder or any other joint, the labral tears has the same naming morphologies. So this is the diagram showing you the types of the labral tears. This is just the detachment, and if you have in the internal layer, that is the longitudinal vertical tear, then you have longitudinal vertical tear with bucket handle type, then you have a flap tear with parrot beak type, and the radial tear. So type 1 slap lesion. Type 1 slap lesion refers to fraying without detachment of the labrum involving the 11 o'clock to 1 o'clock positions shown. So this is just the fraying of the superior labrum, and here you can see it seems like this. Okay, so the red arrow. See a small hyperintense signal within the superior labrum, which is just the fraying. Then you have slap 2. Slap 2 indicates a detachment involving the bicep labral complex and is subcategorized into 3 patterns. Either there are 2A lesion, which are anterior superiorly and involves 12 to 3 o'clock. Then there are 2B lesions that are 9 to 12 o'clock, and 2C lesion, which can be from 9 to 3 o'clock. The whole clock is involved. So this is the image. So you can see that there is a detachment of the labrum from 9 o'clock to 3 o'clock. And if you see the in-face MR image, you see this linear hyperintense line in the superior labrum. Which type of slap is this? We just read. Which type of slap is this? Sorry, I can't hear. This is 2C. So the whole clock is involved, 9 to 3. You see, the whole clock is involved. So this is 2C. Okay, then we have type 3 and 4 lesions. What are the type 3 and 4 lesions? They are from the 11 o'clock to 1 o'clock position, defined as bucket handle tear of the superior labrum. They are distinguished between each other as if the bicep tendon is intact, this is 3. If the bicep tendon is involved, that is 4. So this is the differentiation of 3 and 4. So the 3 lesion, you can have a 2 Oreo cookie sign. That is a white column indicate 2 different fluid collection. In this context, the more medial fluid collection is between the labrum and the glenoid, representing a sublabral recess, and a more lateral fluid collection is within the substance of the superior labrum, indicated of a superior labral bucket handle tear, that is a slap 3. So one of the sign is the Cheerio sign, which is the accumulation of fluid within the torn meniscus. So you can see, yeah, this is the slap 3. The bicep tendon is fine. So you see, this is the bicep tendon. Bicep tendons look fine, and there is a bucket handle tear. So you can see in the MR image that the bucket handle tear of slap 3 looks like this. The detached segment is a little bit forward, and then there is edema in the meniscus as well. So another example. So you see, this is called 2 Oreo cookie sign. I think I added cookie myself. That is double Oreo sign. So yes, so this is a double Oreo sign. How will you define it? So the more downward is the labral recess, and the upward is the true labral tear. That is a bucket handle tear. Okay, so you see that this is extending superiorly towards the whole clock. The superior margin of the
glenoid. And what is this? This is cheirosyne, which is the accumulation of fluid in the labrum with a tear, that is cheirosyne. So this is the image of type 4 slap injury. So type 4 is bucket handle tear with involvement of the bicep tendon. So you see superior labrum with additional involvement of the bicep tendon. So this is the bicep tendon. So this is the superior labrum. So there is detachment, there is edema. You can see that the fluid is traversing into the labrum superiorly, and the bicep tendon is also involved with edematous changes and some interstitial tearing. So this is slap 4 injury. So we have now the new classification of slap. It has 10 slap lesions. So this is the new classification of slap. So it was not good for me to cover all the 10 slaps. So 4 slap injuries, which we usually report in our reporting system, we still use 4 slap injury concept. So now they have updated it to the 10 slap injuries, 10 slap injury lesions. So if anybody wants to have a look at it, they can have the picture of this. Alright, so the next is Bankart and variants. So Bankart lesion and variants like Perthes, ellipsa are injuries to the anterior inferior labrum. Okay, now the labral position has been changed. Previously, we were dealing with slap injuries that were from superior border of the labrum. Okay, so now the labral injury has been shifted from 9 to 3 to 3 to 6 o'clock. So these injuries are located from 3 to 6 o'clock. Anterior inferior dislocation is the main cause. So the only exception to this rule is the reverse Bankart, which is along the posterior dislocation of the injury to the inferior posterior labrum. So this is the diagram of Bankart lesions. So this is the true Bankart, which is the avulsion of the labrum from which clock? 3 to 6. Yes. And this is the osseous Bankart, which take the osseous element of the glenoid as well. Then there is a reverse Bankart, which is from 6 to 9, that is totally opposite to the normal Bankart. So this appears same, but the position of the labrum is changed. Then there is Perthes, where there is fraying of the superior glenohumeral ligament. Then there is the ellipsa, which there is dislocation of the labrum, and then there is a clad which takes the cartilage with its tear. So let us see one by one. Bankart lesion. So Bankart lesion has the labral tears without an osseous fragment. MR arthroscopy or arthroscopy are the optimal to diagnose Bankart or Bankart-like lesions. There is detachment of the anterior inferior labrum 3 to 6 o'clock with complete tearing of the anterior scapular periosteum. The arrow points to the disrupted periosteum. So this is a Bankart lesion. There is avulsion, there is separation, and you can see that there is fluid. Whenever there is a tear, there will be a fluid. So you can delineate it very easily. So these are arthrogram images. So the contrast have been given in the shoulder, and that's why you can clearly see these tears. So the osseous Bankart, this is the CT image as well. So you can see that the fragment are common finding in patient with an anterior dislocation and are frequently seen on X-ray or CT. So MR arthrography may be difficult to depict the osseous fragment. CT can easily depict it. So this is the osseous Bankart. So you see there is a fragment of bone has also gone, and we have confirmed that on CT. So here you can see this chip fracture. So reverse Bankart.
So reverse is the reverse of the normal Bankart. This is along the which clock? 6 to 9. So there is a bony chip. This is the posterior glenoid aspect. This is the anterior glenoid. You see that there is a fracture, bony element, and labral tear. Sorry? Kim lesion. Maybe that's the other name, I don't know. Okay, so Perthes lesion. What are the Perthes lesion? That is the labro-ligamentous avulsion, like a Bankart, but with the medially stripped but intact periosteum. Okay, so there is a little difference between all these labral tears. So on imaging of the shoulder with the arm in a neutral position, the torn labrum may be held in its normal anatomical position by the intact scapular periosteum, which thereby prevents contrast media from entering the tear. This means the MRI arthrography with the arm in the neutral position may fail to detect the labral tear. So in Perthes lesion, if you put the arm in a neutral position and you perform the arthrography, then there is a chance that you will miss this tear. So what position will you do then for MRI arthrography? Upper view. So upper position, what is upper position? Upper position is the external rotation and abduction. So you can see the tear clearly. So this is the example of an upper view. So what does this demonstrate? So there is a labral tear, there is a stripped periosteum, but the periosteum is still intact. And here you can see that there is a labral tear. Here you can see the labral tear is showing a linear fluid-like intensity which is going through and through with stripped periosteum. Ellipsa. So what is this? Anterior labral periosteal sleeve avulsion. So here you can see that the labrum has been displaced posteriorly and medially with labro-ligamentous complex. So this is the normal position of the labrum. Here you can see the normal position of the labrum, which should be a bit anterior with the glenoid. So here it has been displaced medially and posteriorly, and the periosteum is intact. So what is GLAD lesion? GLAD is a glenolabral articular disruption. It represents a partial tear of the anterior inferior labrum with adjacent cartilage damage. So now the GLAD has the same injury, but it takes the cartilage of the joint as well. So here you can see that the fraction of the cartilage has gone with the labral tear. So you see the cartilage has been torn with the labral tear. So this is the image. Hegel humeral avulsion of the inferior glenohumeral ligament. So one of the ligament which is stabilizing inferiorly is the inferior glenohumeral ligament, and the avulsion fracture of inferior glenohumeral ligament is called Hegel humeral avulsion of the inferior glenohumeral ligament. And you can see that there is a lot of fluid in the inferior pouch of the shoulder. So labral variants, what are the labral variants? Labral variants are located 11 to 3 o'clock position. So they usually mimic as slap tears. What are the labral variants? Labral foramen, which is a linear fluid collection beneath the foramen. Labral recess, which is superiorly located beneath the labrum. There is no detachment. The Buffet complex, which is the congenital absence of the labrum from 1 to 3 o'clock position, and they mimic slap lesions because slap lesions are usually 9 to 3 o'clock. So there is this labral recess, which is a variant, which is not a tear. So this is the slap tear. So what is the difference between these two? The margins are smooth,
you can see a tiny recess-like structure going beneath the labrum, but in the tear the margins will be fussy and irregular, and the fluid tracking, as well as there is edema of the labrum as well. So this is another example of sublabral foramen. This is the example of Buffett complex. How many have you really seen Buffett complex in normal life? Have you ever seen a Buffett complex? They do exist. Okay, so the Hill-Stack lesion. What is the Hill-Stack lesion? Hill-Stack is a posterior lateral depression of the humeral head. It is above or at the level of the coracoid in the first 18 mm of the proximal humeral head. 75 to 100% of patients with anterior instability have this Hill-Stack lesion. So this is a Hill-Stack. So you see this coracoid. Do not scroll all the way down and see that, oh, there is a irregularity. No, this is a normal groove. Okay, so this is beneath the coracoid. So you cannot consider this. This should be at the level of the coracoid. So if you are seeing an axial section, this should be at the level of the coracoid, at the level or above. Couldn't be below. Okay, below is the normal groove. Okay, so another example of a Hill-Stack with inferior glenohumeral thickening as well. Okay, so now tendon tears and tendinosis. The partial thickness rotator cuff tear is estimated to be twice as common as full thickness tear. Partial thickness tear of the rotator cuff are frequently symptomatic and may increase in size or progress to full thickness tear if left untreated. Partial thickness tear can be more difficult to detect than full thickness tears with MRI, but careful analysis of the imaging finding of an understanding of cuff anatomy allow a precise description of partial thickness tear. Accurate reporting of such tear is important in the choice of operative and non-operative therapy of these patients. The articular surface of the rotator cuff tendon is relatively hypovascular. Arterioles are large and more prevalent on the bursal surface, branching and decreasing in size between layer 2 and 3, a critical zone of hypovascularity, and has been described just proximal to the cuff insertion. So this is how the supraspinatus tendon looks like. Okay, so it has an insertion site, the articular surface, and it has a bursal side. As you already seen the image of subdeltoid subacromial bursa, which was hanging from here to here. So that's why this is called a bursal side, and this is called the articular side. So the articular side where it attaches the tuberosity is called footprint. Okay, so in our reporting, when we report a tendinopathy or we report a tear, we usually write the word of footprint or articular surface or musculotendinous junction or the bursal surface. So these are the frequent words used in the reporting. So mechanism of injury, you all know, so we don't go into details. So MRI of the tear. So normal rotator cuff tendon is of low signal intensity on T1, T2. Partial thickness rotator cuff tear most commonly appear as interruption of a normal cuff contour resulting in a cuff defect filled with fluid. The multiplanar capability afforded by MRI allows assessment of the articular bursal intratendinous component. So this is the schematic diagram. You can see that this is the normal tendon. So this is the normal anatomy. You see all the fibers attached to the articular surface, which is called the footprint. Then there is a partial thickness tear that is at the which side? Articular side. And then there is a tear on which side? Bursal side. Bursal side. And what is this tear? Okay, intrasubstance. So these are three types. Either they can be at the articular surface, either they can be at the bursal surface, or they can be intrasubstance. So what is the checklist? Articular surface, hai nahi hai, bursal sided, or it is intrasubstance. What is the depth?
if you are sure, you can even give a measurement of the depth of the tear. So bursal sided tear, so see, this is the bursal side, there is a rent, there is fluid collection. Alright, so what is the caveat of this lesion? You can see the bursal sided tears on MRI, but you cannot see the bursal sided tears on arthrogram, because you are giving contrast in the joint, and that doesn't goes to the bursal side unless there is a full thickness tear. Okay, so do not attempt to do any MR arthrogram in these patients. So okay, the articular sided partial thickness tears, see how this is hyperintensity within the tendon, there is some subchondral changes as well in the humeral head, and then what is this? In the elderly population, we used to get degenerative tears, which are mostly articular surface. Okay, so bursal are not common in degenerative age. The articular surface tears are more common. And why is that so? Why articular surface tears are more common? So we read before 2 slides that the third and fourth layer of the tendon is quite hypovascular. So there is no good blood supply to this layer of the tendon. So that's why it is more prone to get degenerative tendon tears. Okay. So intratendinous. So you can see both the fibers intact of the supraspinatus muscle, and then you see fluid tracking between the fibers. So this is intratendinous tear. So again, there is a bursal surface tear. Okay, case to wake you up. Findings. Come on, guys. So can you see supraspinatus? So there is a fluid collection in space of the supraspinatus tendon, that is the supraspinatus tear with the type 2 acromion here. Okay, so small subacromion bursa, which is not shown here, so linear streak of fluid as well. Okay, what is magic angle phenomena? It is normal. Basically, it is caused by the sequence reveal mild bright signal hyperintense within the substance of supraspinatus. It is seen without tendon enlargement. It is indicative of the artifact called magic angle phenomena. Is said to be due to orientation of the collagen fibers. So there are collagen fibers in the third and fourth layer of the supraspinatus tendon, and most of the time what happened that due to the hydrogen anatomy, there is a hyperintensity within the tendon, which is nothing just magic angle artifact. So you cannot see anywhere. So you have, whenever you see these type of things, you correlate with other sequences. So it's not just one sequence which we see in report. If we get anything in one sequence, we always correlate it on the other sequence. That's how you also do. So what are the pastel lesion? Partial articular sided supraspinatus tendon avulsion. Lesion is a subset of partial thickness rotator cuff tear. Overhead athletes, the younger population and smokers are most commonly affected. The pain is present mainly on the arc of motion ranging between 60 to 120 degrees. So I told you before as well that I have a lot longer presentation and I cannot sum up shoulder in just 30 minutes. So this is the pastel lesion. So there is avulsion and the partial thickness tear. So you can see this image. Okay.
So what are the avulsion fractures? So this is the avulsion fracture, avulsion of the greater tuberosity with avulsion of the suppressed meninges. There is a lot of bone bruise, there is fluid, there is edema in the bone, and you see the bony chip as well. Okay, so this is also a case. Let's not go into details. Okay, so bicep tendon anatomy. I'm sorry, because bicep tendon anatomy itself is of half an hour, I think. So should I go for that or not? No. So alright, let us skip the bicep tendon anatomy because it is too much for you people. So other pathologies. Okay, the Asan pathologies. What is that? That's the capsulitis. You see in every second patient. So what is this? Increased signal intensity, inferior glenohumeral ligament. Okay, coracohumeral ligament thickening, subcoracoid triangle sign. So you see that the inferior glenohumeral ligament thickening in this image. Then you see here subcoracoid triangle sign, fat is infiltrated, there is no fat. So this is adhesive capsulitis. So what is myositis? That is the myopathy, inflammation, and you see a good image on post-contrast images. So here are the post-contrast images. Which muscle is this? Infrased meninges. So there is significant inflammation, edema, and enhancement of the infrased meninges, that is myositis. So tuberculous arthropathy, you all know there are collections, there is joint destruction, there is a lot of enhancement, and you have the history as well. So metastasis is also one of the common thing in the bones. So you have the joint destruction, you have a lot of soft tissue, you can have necrotic component that enhances on post-contrast images, and you have a history of patient as well. Soft tissue myxomas, they are benign variety of lesion. We usually see them T1 hypointense, T2 hyperintense, variable enhancement. So here you see this is a soft tissue myxoma with heterogeneous enhancement. So thank you. These are my references. Thank you, Dr. Raima, for such an amazing talk on MRI shoulder. And now we are honored to have Professor Mehboob Sahab with us today. And now we are moving toward the case-based discussion. For this, I would like to invite Dr. Naveed Juman. Please, sir, come on stage. जब तक आई थिंक लगाएं. So there is a question from the attorney. So why actually you want to order MRI? क्यों करवाते हैं? जरूरत क्या है? कोई भी जवाब दे दे. Document as a surgeon, I mean, what you want to document? उसको क्या है? साफ इंजरी आ गई तो क्या करेंगे? So for me, only indication is just to decide about surgery. You are surgeon. सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है पेशेंट को. सो जो शुरू से हम पढ़ते आते हैं ना, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन. सो जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट सीक्वेंस. क्लिनिक्स में आपका पेशेंट आते हैं, अभी भी आते ही आपके पास रिपोर्ट रखेंगे बगैर बात किए. दिस इज़ माई MRI. सो आई यूजली स्टॉप देम देयर. इसको रोकें यहीं पे, बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है. टेक द हिस्ट्री, डू द एग्जामिनेशन, मेक योर डिफरेंशियल एंड देन गो फॉर MRI. एंड डॉक्टर कादिर ने इस तरह कहा था कि बाकी सब ने भी कि एज सर्जन यू मस्ट नो बेसिक्स ऑफ MRI, योर एनाटॉमी. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, T1, T2 एंड फेट सेपरेशन क्या होता है, बट यू मस्ट नो दी स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल. सो व्हाट माय सीक्वेंस इज, इफ माय फाइंडिंग्स आर कोरिलेटिंग विद द रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, देन आई मेक अ सर्जिकल इंडिकेशन. इफ देयर इज अ कंट्रोवर्सी, then I don't go for surgery. If my finding is showing a meniscus tear but the MRI radiologist reported normal, so probably they are more experts, so I may say, okay, let's try a conservative, let's see for a few weeks, so just probably something.
If I am strongly suspecting some pathology and radiologist has reported normal, then I may ask for a re-report, a review, especially इस तरह होता है ना कि आपने मेंशन ही नहीं किया, radiologist ने उसको देखा ही नहीं. So make your suspicion, try to write one-liner. You are suspecting middle meniscus problem, you are suspecting ACL problem, or in shoulder you are suspecting cuff tear, partial tear, impingement. कोई ना कोई एक लाइनर ज़रूर लिख दिया करें कि radiologist उस पर फोकस करे. So let's just start with few of the cases. Most common shoulder pathology तो काफ़ी discuss हो गई, but commonly we see cuff tears, impingement and dislocations. Dislocation में history से ही clear पता चल जाता है. It's not very difficult. And apart from complete pathologies, complete cuff tears and dislocations and maybe adhesive capsulitis, and other terms shoulder joint is relatively difficult than the knee joint because it's a deep joint, superficial joint नहीं है, उसमें meniscus भी नहीं है, obvious cartilage lesions भी कम ही होते हैं, arthritis is also less common, and usually you want to see the cuff tears or you want to see the indication for dislocation and some other problems, most common problems. So quickly कुछ cases पे चलते हैं and I would like कि आप लोग को बता दीजिए. 36 female, left shoulder pain from few months, painful range of motion, night pain is positive, power is fairly preserved. So अब ज़रा इसके MRI पे कुछ findings बताएं, क्या नज़र आ रहा है. So do you see any discontinuity on the articular side? Questionable. इसको वो जो मैजिक एंगल वाली बात भी कर सकते हैं कि it might be reported as a partial tear, it might be reported as a tendinosis, but कोई retraction नहीं है tendon में, there is no obvious discontinuity. So अच्छा, when knee में you are more focusing on sagittal images because आप ज़्यादातर आपके meniscus tears and ligament उसी में देखते हैं जो major ligaments हैं, ACL, PCL. And here for cuff you are focusing on the coronals and sagittal as well, वो अभी आप बाद में आगे देखेंगे क्यों. And for instability you are focusing on your axial, ताकि आप उसमें size भी देख सकें आपकी glenoid का and the L6 lesion का. So again your subscape and posterior muscles are fine, कोई सा tear नज़र नहीं आ रहा, maybe little fluid over the biceps tendon, otherwise it's okay. So इसमें क्या देखना चाहते हैं? Why I said कि cuff में sagittal is also important. क्या नज़र आ रहा है sagittal में for the cuff? Muscle belly नज़र आ रही है, muscle belly नज़र आ रही है. You have a supraspinatus, infraspinatus and subscape. You know the most common tears are supraspinatus tears, and with chronic tears they degenerate, the muscle converts into the fat. So there is a grading for that. Godley grading सुना हुआ है ना आप लोगों ने, grading सबने पढ़ा होगा. So when you have a more than 50% fatty degeneration in the belly of supraspinatus, so your surgical outcome gets poor. उसकी correlation surgical outcome से when you are deciding for surgery in a patient with supraspinatus tear. And if there is more fatty degeneration, then the muscle, obviously your outcome will be poor. You may have difficulty in bringing that muscle back into its footprint. And less than 25% muscle बचे तो then obviously surgical indication फिर खत्म ही हो जाती है. Okay, so obviously, for this patient, isolated MRI finding is not important. But when I correlate with history, the symptoms are from there for 6 months. There is adequate physiotherapy has been done. Patient has also received injection and symptoms are not improving, including night pain. Then these findings are significant. Then I may correlate it may be a partial tear which is not responding to the conservative management, and patient may need surgical intervention. So another case, 63 male. अब आगे 2-3 में इसी तरह की हिस्ट्री आप you just presume the same history है. So 63, right shoulder pain from 6 months, restricted active abduction, passive range of motion is fairly preserved. Power reduced. What you are suspecting? Suspicion क्या है इसमें? कोई trauma की हिस्ट्री खास नहीं है.
So with the history and examination, you are suspecting some rotator cuff pathology. ठीक है, अब ये दिसंबर में उसका MRI हुआ है. अभी पिछले प्रेजेंटेशन से आपको याद आ गया होगा क्या दिखा रहा है. सुप्रास्पिनेटस टीयर, सिग्निफिकेंट टेंडन रिट्रैक्शन. अब इसमें हम साइज मेजर करते हैं कि इट्स अ स्मॉल, मीडियम और लार्ज टीयर. इट सीम्स अ फेयरली लार्ज टीयर और लार्ज, मीडियम टू लार्ज के लें, मोर देन 3 सेंटीमीटर रिट्रैक्शन. सो अच्छा, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम. सब स्केप इज फाइन, पोस्टीरियर मसल्स आर ओके, कोई ग्लिनाइड पैथोलॉजी अदरवाइज नहीं है. मे बी लेस देन 50% एट्रोफी. So is this patient candidate for surgical intervention or not? सर्जरी करेंगे नहीं करेंगे इसमें? You will go for surgery. 6 months के symptoms हैं, acute symptoms हैं. Despite the degenerative tear, there is no trauma, but symptoms are relatively acute, and there is quite preserved muscle mass. So you will offer patient for surgical intervention. Okay. So patient underwent surgery. And this is the MRI 3 months after surgery. A double row repair was done. So now what you see? Can you appreciate continuity in the tendon? ठीक है, and then we are still waiting for healing in just 3 months time. And just anchor दिखाने के लिए, okay. And even within 3 months you can see little bit improvement in the atrophy. So अगर इसको 3 महीने इस तरह छोड़ देते तो further deterioration होती जाती. We repaired it, now we are seeing some recovery into the muscle fiber as well. Now 17-year-old patient and history same रखें उसकी आप. 6 months से पेन है, almost similar findings हैं. You are suspecting cuff tear. He is 71. And patients आपसे पूछता है कि okay, you are suspecting cuff tear, तो आप क्या करेंगे उसे? आप कहते हैं कि you may need surgery. Patient कहता है कि नहीं, सर्जरी तो मुझे नहीं करवानी. So what you will do? विल यू ऑर्डर MRI, करवाएंगे नहीं करवाएंगे? पहले इंडिकेशन हमने क्या बताया कि यू वांट टू सी कि सर्जिकल इंडिकेशन है कि नहीं है. अगर पेशेंट आउटराइट ही कहता है कि सर्जरी करवानी नहीं है तो देन मे बी डोंट गो फॉर MRI. अब बता दें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर पहले आप ट्राई करें फिजियोथेरेपी, देन विल सी व्हेन यू मेक अप योर माइंड फॉर सर्जरी, फिर MRI करवा लेंगे. ओके, चलें, पेशेंट वॉज रेडी फॉर सर्जरी, MRI की तरफ हम चले गए. फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों सीक्वेंस में. यू हैव अ टेंडन रिट्रैक्शन, कफ टीयर. इधर क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? मे बी पार्शियल टीयर ऑफ द सब स्केप, बट यू डोंट सी बाइसेप्स टेंडन इन दिस ग्रूव. सो इट मे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्रूव और मे हैव बीन टॉर्न, एंड इन आर्थोस्कोपी इट वाज ऑलरेडी टॉर्न. डिजेनरेटिव टीयर था, बाइसेप्स ऑलरेडी टूट चुका था, एंड सम फैटी डिजेनरेशन बट फेयरली प्रिजर्व्ड मसल बेली. So we went for repair again in this patient. 58 female, right shoulder pain for 6 months after minor trauma. Again similar. इसमें क्या नज़र आ रहा है? Significant retraction of the tendon. दूसरा जो ये चीज़ आपको एक्सरे में नज़र आएगी, for cuff tear patient you may suspect from the X-ray superior migration of the humeral head. नज़र आ रहा है इसमें क्लियरली, ये एक्सरे में नज़र आ जाएगा. When you see superior migration of the humeral head, you strongly suspect it's a cuff tear. स्पाज़म की वजह से हो सकता है, बट यू विल स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट कफ टीयर कोलेड विद योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. दूसरा, ये एक्सिलरी पाउच में फ्लूइड है, इट्स नॉट अ टीयर, लिगामेंट इज नॉट टॉर्न, फ्लूइड एक्सट्रावर्सेट नहीं हुआ इसका जो नॉर्मल इफ्यूजन है. ये आगे लास्ट केस के लिए आई विल जस्ट कंपेयर इट. तो ये ध्यान में रखें कि हाउ लार्ज द एक्सिलरी पाउच इज इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस. मे बी 50% लेस देन 50% एट्रोफी. Bicep tendon is visible, little fluid, other tendons are fine. She is 58, so will be offered surgery because history is acute. Minor trauma भी हुआ था, but the atrophy is showing it might be degenerative already. Okay, so आपने repair offer किस patient को. Now the age group has changed. पहले हम क्या देख रहे थे? 50 plus था, 55, 71, 65. Now you have very young patients. Recurrent dislocation. हिस्ट्री से वेरी ऑब्वियस होता है. डिसलोकेशन में डिसीजन आपको मुश्किल तब होती है व्हेन दे हैव मल्टी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी और कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम. डिसलोकेट किसी ने देखा नहीं, कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है डिसलोकेशन का, एंड यू डोंट नो इट इज अ सबलक्सेशन डिसलोकेशन, उसमें डिफिकल्टी होती है. अदरवाइज वेरी ऑब्वियस हिस्ट्री, डिसलोकेट हुआ था, रिड्यूस हुआ, आपको शायद एक्सरे भी दिखा देगा डिसलोकेशन के,
and you just want to see the MRI and what is this, कुछ इसमें कोई पैथोलॉजी है, प्रॉब्लम है इन दो सीक्वेंस में? जो नज़र आ रहा है बता दें. So I will say they have normal cuff intake है and आपकी मसल की मास भी फाइन ठीक है. So you are not really in young patient, you don't expect कि इधर कोई प्रॉब्लम होगा, and all you are interested in this sequence कि आपने एंटीरियर ग्लिनोइड पे इंजरी देखने की कोशिश करनी है, आपने हिलसेक्स भी देखना है, एंड मे बी सबस्केप को देखें, बाइसेप्स को देखें. And slab tears are really difficult to identify in a plain MRI. We usually go for the arthrogram, जो कि आजकल बहुत कम होता है. So that's why it's maybe important to do the MRI in acute setting for shoulder. So again 24 recurrent dislocation. ये images मैंने दोबारा से रखे हैं. You may not find, then इसमें भी superior migration है, but the cuff is intact, so the spasm may also give rise to this kind of picture. Again, something wrong with the anterior labrum, something wrong with the posterior humeral head. So these findings will just confirm your clinical finding that patient has recurrent anterior shoulder dislocation and it may need intervention. बाकी इसमें आप obviously this is the view you may need to measure your glenoid length and Hill-Sachs and the size of Hill-Sachs lesion and then do your measurements. इस व्यू की इम्पोर्टेंस हमें इसलिए होती है कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू सी शोल्डर डिस्लोकेशन में आप क्लिनिकल फाइंडिंग के पे ही डिसाइड करते हैं. MRI या CT स्कैन करवाते हैं आप जस्ट टू मेयर योर, जस्ट टू टेक द डिसीजन. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जो इतनी सारी जो एनाटॉमी जो बताई गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैबरल टीयर्स एंड यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड. व्हाट यू वांट टू सी ग्लिनोइड बोन लॉस एंड द Hill-Sachs lesion size to decide whether patient needs arthroscopic intervention or patient needs open reconstruction. So वो एक एल्गोरिथम है, 25% बोन लॉस है, उससे ज़्यादा है, Hill-Sachs lesion कितना है, ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक है, वो सारी आप you just need this sequence to determine bone loss and the on track off track lesion to help in decision. And again muscle mass is fine, it's some orientation जिस तरह बता रहे थे, you may see changes in the anterior side and the sagittal as well, but you really focus on the axial images. Again 34 recurrent dislocation, तीनों सीक्वेंस मैंने इकट्ठे लगाए हुए हैं. This is fine. Some changes at the upper side might be a slab lesion and some changes on the posterior side of the humerus which correlate with the Hill-Sachs lesion. There is something wrong with the anterior labrum here as well. So all these findings are correlating with the patient history of recurrent shoulder dislocation. 36 male, again right shoulder, little bit more acute setting में. acute setting में करने का फ़ायदा ये कि you see more enhancement जो बात की गई थी, and anterior injury again नज़र आ रही है इसमें. maybe some problem with the subscapularis anteriorly as well and fairly large पाउच फ्लूइड भी इसमें अंदर मौजूद है. ओके अच्छा, ये मैंने कहा था कि ये चीज़ ध्यान में रखें कि हाउ यू सी एक्सियल पाउच इन इन्फ्लेम्ड सेटिंग जब फ्लूइड होता है उसमें. नाउ द एज ग्रुप इज अगेन चेंज, ओल्डर देन द यंगर, नाउ द मिडिल एज, एंड ड्यूरेशन भी बढ़ गई 1 year. व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन एग्जामिनेशन? रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन. व्हाट यू आर सस्पेक्टिंग हियर? middle age, restricted range of motion, chronic symptoms, frozen shoulder, and you really don't need MRI for diagnosis. भी patient करवा के आते हैं, अपनी मर्जी से करवा के आते हैं. And what you want to see? You want to see normal muscle mass, कोई tear नहीं है. You want to see कोई lateral injury वगैरह के अलावा नज़र नहीं आ रही. And sagittal में भी आपको corner में भी आप देखना चाहते हैं कि tears are, I mean the tendons are intact, no evidence of partial tear. अगर पार्शियल टीयर इसमें नज़र भी आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा? विल यू एडवाइज समथिंग? नियर कंप्लीट टीयर भी है तो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन. पहले से एडिसी कैप्सुलाइट को फोकस करेंगे आप. सो जब तक शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रही, पेशेंट डोंट हैव सिम्टम्स ऑफ कफ टीयर. ये सिम्टम्स जो भी आए हैं आपके पास एडिसी कैप्सुलाइट की वजह से आया है. सो डोंट रियली गो फॉर
अच्छा, इसमें आप एक्सिलेटरी पाउच पे फोकस करें, हाउ स्मॉल एंड ऑब्लिटेटेड इज। तो ये हमेशा लिखा होता है कि ऑब्लिटेटेड और एक्सिलेटरी पाउच, जिससे कंफर्म आप करते हैं कि इट्स कैप्सुलाइटिस। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, जो दिखाया था आपने ये एक्सिलेटरी पाउच वर्सेस दिस वन। So these are the most common pathologies you see: cuff tears, partial or complete, and the dislocation and occasional adhesive cuff cut। इसमें MRI की ज़रूरत नहीं होती, but patient do come with the MRI, and वो तभी आते हैं जब उसमें रिपोर्ट होता है partial tears, something they are more worried about tears as compared to their primary problem. So thank you. So any questions? Okay, thank you very much. So one more comment जो नीड के बारे में हो रहा था कि सीक्वेंस आप क्या लिखेंगे। So usually a protocol. So I think हम we don't write actually knee protocol। अगर हमें ACL लिखना है तो we write ACL protocol। So आप MRI की फिल्म जब आती है उसमें स्कॉट में देखा करेंगे whether the lines are oriented vertically or little bit oblique, because ACL is oblique ligament। So आपकी अगर orientation MRI के बीम्स की वर्टिकल है तो यू मे मिस द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ACL। उसमें फिर शायद टीयर नज़र आए आपको कि डिस्कंटिन्यू नज़र आएगी ACL में। PCL इज़ अ मोर वर्टिकल ओरिएंटेड लिगामेंट। मैंने इसका भी आपके ठीक ही हैं। सो फॉर ऑल अदर्स, फॉर रूटीन सीक्वेंस सिंपल हॉरिजॉन्टल यू मे सी एवरीथिंग, बट फॉर ACL यू मे नीड 10 to 15 डिग्री टिल्ट इन योर बीम। तो यूजुअली आई थिंक इट्स नाउ नॉर्मली अंडरस्टूड, एंड दोनों तरह के सीक्वेंस MRI मौजूद होते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Nabi. It is always a pleasure having you. Now, अगर आप सबकी इजाज़त दो तो we will take a short 10 minutes break. There is tea outside with some snacks. Thank you very much. We'll be back in 10 minutes. Lunch break. इसलिए पूछा है। पहले मना किया था उसने। हाँ, बस उनकी कॉपी कर ली क्योंकि मैं जा रही हूँ, मुझे भी नहीं वो लानी है। मैं भी कॉपी कर सेम है तो मैं कॉपी नहीं, सेम नहीं, उन्होंने कहा मैंने चेंज कॉपी करनी या ओपन करनी काफ़ी कर लिया निकाल दो। मैडम बस एक मिनट थोड़ा ये माउस यूज़ कर तो यहाँ से क्लिक करने जाना है, यहाँ से नहीं आप प्रेजेंटर रूम में जाएँ उसको बस क्या ये ऑटो पे है क्या, खुद ही चलेगा? नहीं आप क्लिक करेंगे फिर चलेगा। जी क्लिक करेंगे फिर चलेगा। और जो जिस चीज़ को मेंशन किया इसी से करें, इसी से करना ना या नहीं सॉरी मार्कर लगाना है। हाँ वो कैसे बताना है कि मैं क्या चीज़ बता रही हूँ? ये देखिए नीचे ये आपका माउस वैसे कर्सर नज़र आ रहा है वहाँ पे।
यही जो माउस का कर्सर है ना, ट्रायंगल जो बना होता है, ये आप पे नज़र, अगर आपने कुछ मार्क करना है ना, नहीं मार्क नहीं करना, तो फिर ये बटन है, ठीक है बस मार्क नहीं मार्क नहीं, करना, आपने सिर्फ पॉइंट करना है। हाँ बस हाँ, तो ये शो हो रहा है उसमें, यही जो एग्जैक्ट जो आपको नज़र आ रहा है वो अच्छा, वहाँ बस मैं यहाँ पे जी जी ये यहाँ पे करूँगी वो वहाँ पे आ जाएगा ना। क्लिक करेंगे तो आगे चला जाएगा, ठीक क्लिक है, करेंगे तो आगे सही चला है। अभी पहले मैडम करेंगे उसके बाद आप रोल भी कर सकते हैं, डाउन एरो से भी कर सकते हैं, और रोल करते हैं तो ज़्यादा आगे चला जाता है, इसलिए बटन। आपने कॉपी करनी है या वैसे प्ले करना चाहते हैं? तो बस आपने सिर्फ ये कनेक्ट करना है और चल जाएगा। आपने हमको डिवाइस दिया था ना, पहले आपका चेक किया था? नहीं मैंने लगा दूँ इसके बाद मेरी। अच्छा पहले आप कह रहे हो, ओके सही, कर देते हैं। मुझे मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये उस टाइम पे यही रहेगी, दोबारा करनी पड़ेगी। जी आगे हमें बता दो। दोबारा करनी पड़ेगी जो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। मैं खुद ही आ जाऊँगा। ठीक है। सोच रही थी अब मैं उनको जल्दी बताऊँगी। यार मेरे खुदा, अब मुझे वो जल्दी करनी मैंने तो छोटी बनाई है भाई। मैडम मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूँ, शायद टाइम लगेगा। तो मैं तो कुछ चीज़ें डाली हैं, क्या पूरा थोड़ी पढ़ा सकते हैं वीडियो। मैं उनको जल्दी गो थ्रू करूँगी। MRI स्पाइन प्रेजेंटेशन जी जी। मैं पता नहीं क्या वो इतनी कम करने की कोशिश की। हाँ यही सोच रही हूँ कि मैं भगाऊँ बस अब ना, एक दफ़ा खोल। ये लोग अच्छे लोग हैं, नहीं भी खोल के देखो। भाई 100 जी, मतलब 96 करा दिया। पता नहीं, लेकिन मैं आपको खुद ही चला के दूँगा, वो ठीक है, मसला नहीं है। आपने कुछ चेक करना है तो कर लें। बस सही है, बाकी तो व्यूज़ भी दे दीजिएगा। इस तरफ से इसके ऊपर रखूँ, क्या करूँ? लैपटॉप बंद कर दो, इसके ऊपर ही रख दो। नहीं बंद कर दी तो स्टैंड बाय पे चला जाएगा। अच्छा सही है, नहीं USB सॉरी, इसको इधर से कनेक्ट करा। हल्का क्या चेंज कर? नहीं मैं USB इजेक्ट कर रहा हूँ। नहीं सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए। कैप तो नहीं था इसमें? माउस का ज़रा निकाल लो। माउस यूज़ करना है आपने? तो सेट में, लेकिन ये भी ए टाइप है आपके इसमें है, सॉकेट ए टाइप का लैपटॉप में। बस आपने लगाया तो है, वो कुछ और है, माउस मेरा आता ही नहीं, वायरलेस माउस का है। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे ना तो आपका डेस्कटॉप शो नहीं होगा। इसको एक्सटेंड कर दूँगी तो यार आप वैसे डायरेक्ट चला लें, अभी कोई ये भी नहीं मिल सही है। नहीं वो बटन मुझे नहीं मिल रहा। पक्की बात है। उन्होंने खोली चला ही दिया विंडोज़ भी सही कह रहे थे आप। एक्सटेंड पे करेंगे तो अगर आपका डेस्कटॉप भी खुला होगा ना तो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। नहीं डेस्कटॉप वरना डुप्लीकेट केसेस भी है ना मेरे, फिर डुप्लीकेट भी रहेगा। हाँ क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें खोली, ये खोलना होगा और एक ये आपका तो सब खुलता है, उस पर नहीं छोड़, उस पर नहीं छोड़ता तो कर डुप्लीकेट इज सेफ। एक दफ़ा ट्राई कर लेना। अब जैसे एक्सटेंड पे होगा ना, हाँ तो सिर्फ आपका बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। देखिए जैसे बैकग्राउंड नज़र आप प्रेजेंटेशन ओपन करें जब, लेकिन आपको प्रोजेक्टर व्यू पे जाना, इस पे जाएंगे तब जाके तो आ जाएगी। 1 मिनट, अब मुझे ये फिर आपका वो भी आ गया, प्रेजेंटर नोट्स भी आ गए, आपने भी कुछ मार्क करना है। 1 मिनट क्या हुआ? नहीं ये नहीं आ रहा ना। अब 1 मिनट, अब मैंने ये एक खोलना है। एक्सटेंड पे नहीं होगी, डुप्लीकेट में होगी बस। हाँ तो बस मैं डुप्लीकेट पे रखूँ।
मैम की वीडियोस होंगी या कोई होगा तो डिस्प्ले पहले पिक्चर डिस्प्ले क्या होता है नहीं मुझे ये लेकिन सही है लगाना पड़ेगा वालेकुम सलाम। अच्छा हमारे बेटे ने कर लिया ना अभी कर लिया लेकिन उन्होंने 40,000 बताए थे और 23 दे रहे हैं 23 वो अच्छे खासे 40 माह मिल जाते वो भी गए तो गलत है, ऐसे क्यों बताया, पागल है क्या? अभी वो जब 4 में गुजर गए अब कल बता रहे हैं उसको कि 23 में रखे हैं चलें अभी पहले 30 दे रहे थे JPMC वाले अभी 40 में रखा है वहाँ भी जाके बताओ ना तुम उसको। वो मैं सारी को ही बोला था सारी कह रहे हैं आप लोग को HR वाले कहेंगे तो ये 4 घंटे के लिए रखा है। अच्छा फुल टाइम में ज़्यादा पैसे हैं ना। हाँ फुल टाइम में कोई वैकेंसी खाली हो तो उसमें डाल देंगे मैं देख लूँगी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। छोड़ के जाते हैं ना मैडम फिर एक्सटेंड पे एक्सटेंड पे चला गया जस्ट एक्सटेंड पे चला गया पता नहीं क्यों खुद क्यों चला गया चेस्ट किया था ये क्या था नहीं मैं यही देख रही हूँ कि ये जो केस है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रहा ये क्या हुआ भाई सुनो ये इस पे क्यों नहीं नज़र आ रहा वो कह रहा हूँ ना एक्सटेंड पे चला गया खुद से उसको डुप्लीकेट पे करना है कैसे डुप्लीकेट होता है क्या दबाते हैं विंडोज़ पे हाँ विंडोज़ ये विंडोज़ बनी हुई है पी दबा प्रोजेक्टर चेंज खुद से क्यों हुआ मैं तो चेंज किया पता नहीं क्यों खुद से या मैंने क्लिक नहीं किया मैंने तो ये सुना था यहाँ पे टेबल लगाऊंगा और बस वो होगा स्प्लिटर भी पड़ा हुआ है मेरे बैग में सेव कार्ड में यार रात को 9 बजे लेंगे के साथ हाँ ये चेक पे सिर्फ फ्लाइट चली रेडियो तो शुरू करवा दे सबको बुला ले सर वो अंदर अलाउ नहीं करते अंदर चाहे अलाउ नहीं करते हाँ सर क्या करूं फुल स्क्रीन करूं यानी खुद ही स्विच कर रहे हैं पता है प्रेजेंटर व्यू आया है रूम तो नहीं प्रेजेंटर व्यू है शुक्र है प्रेजेंटर व्यू ऑन किया है ना उसको आपको चाहिए प्रेजेंटर व्यू या नहीं चाहिए मुझे साइड पे आपके नोट्स लिखे आते हैं मेरा ख्याल से ये प्रेजेंटर व्यू का बटन प्रेजेंटर व्यू में आप नहीं चाहिए ऑप्शन इधर ही है लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें वो फिर भी आ रहा है इसमें आ रहा है प्रेजेंटर व्यू स्लाइड शो सही है
क्या करना है? आने दो ना। और क्या मैंने क्या करना है? अच्छा एक मिनट अभी अब slide देखो कैसे ये खुद ही एक्सटेंड पे चला गया। मैम सेटिंग में ही कुछ होगा वो लैपटॉप का, वो डुप्लीकेट का हमसे ज़्यादा एडवांस है, बस अब चल रहे हैं इसमें से। लायर मशीन के साथ वहाँ पे भी आई डोंट थिंक अब स्विच होगा, फिर भी आई एम हियर। ये ऐसे ही आएगा नीचे, ये प्रेजेंट रिव्यू वहाँ आ रहा है। हाँ नहीं एक्सटेंड पे फिर वो टेप नहीं आएगा ना, सिर्फ डुप्लीकेट पे जाएगा। आपको दूसरा क्या चलाना था? ये चलाना है ना, ये चलाना है और ये केसेस 2 में बात नहीं यार देखो डुप्लीकेट पे ही आएगा ना, डुप्लीकेट पे आएगा, लेकिन डुप्लीकेट पे आ रहा है तो उसको हमें प्रेजेंट रिव्यू ऑफ करना जी, पड़ेगा। पहले प्रेजेंट रिव्यू ऑफ कर दें, उसके बाद डुप्लीकेट कर दें, वो चल जाएगा। ये रहा हो गया सही। अब क्या पुलिस रिपोर्ट हाइट लिखा तो हुआ था। वो चला गया, वो मैम अब चला के टिकट हो रहा था ना, ये करेंगे। और आपने स्विच करना है। अब मुझे स्विच करना है तो नहीं देखो कैसे कर, मैं इधर से ना एस्केप ना करूँ। स्किप भी कर सकते हैं और वो बार बार प्रेजेंट रिव्यू पे हो रहा है ना, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ अगर आपको इजी लगे। ठीक है, कैप्स लॉक अल्टर एंड टैब, अल्टरनेट टैब। ठीक है। और कोई टैब तो नहीं खोलना ना इसमें से आपको, सिर्फ बैक होम खोलना है, तो फिर इसको आप ऐसे दो करेंगे, दो चेंज सही होगा, वो स्विच नहीं करेगा बार बार। अल्टरनेट टैब आ गया, अल्टर टैप करेंगे, फिर जो आपको टैप खोलना है ना, अच्छा टच स्क्रीन है इसमें, अल्टर मैंने दबाया हुआ है और टैब को दबाया तो ये सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, जो जो खोलना है मैंने मैं इस इसको पे आया। करूँ तो ये आ गया हाँ टच से भी हो रहा है, अल्टर और टैप दबा के रखें, इसको दबा के रखूँ और ये छोड़ दूँ, फिर इसको दबाऊँ, यानी अगर इसको पहले मिनिमाइज करूँ, अब जब चाहिए तो अल्टर टैप दबा, टच हो रहा है ना, तो परफेक्ट है, सही है, इजी है। मिनिमाइज कर, ये आपके सारे टैब्स ओपन हैं, ठीक है, इजी है। दोबारा आपको चेक वरना फिर बंद करके कर दिएगा, मसला नहीं है, उसमें बार बार वो एक्सटेंड पे जा रहा है। अल्टर टैब से सही चलेगा ना? हाँ, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा जब ओपन कर रहे हैं तो वो उसमें और अगर हम अल्टर और टैब से दबाया अल्टर टैब का, ठीक है ये आ गया, फिर इसमें प्लेस वो करना है, ड्रैग करना है, बंद नहीं कीजिएगा, मिनिमाइज कीजिए, नहीं ड्रैग करना है, इधर से ड्रैग करना है, ठीक है और आ गया, ठीक है। टच नहीं भी करना चाहिए ना, जो छोड़ेंगी तो वो वाला सेलेक्ट हो जाएगा। बुला दिया, हाँ Welcome back everyone. Now I would like to invite Professor Shaista Shaukat, HOD Radiology Department for presenting her talk on MRI ankle joint, ligament, tendon and cartilage pathologies. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to start my presentation with this short Quranic verse. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah also planned, and Allah is the best of the planners. The topic which I am going to present today is about ankle joint, a systematic approach. So we will talk about MRI, anatomy first, then few cases, and then later on in the end departmental cases. So why MRI of the ankle? What is the advantage? Why do we ask for MRI of the ankle?
As it is the most complex joint in sports medicine, so ligamentous injury is clearly seen with the help of MRI ankle. It gives you excellent soft tissue assessment, as you all already know about it. Ligaments, tendons, cartilage, marrow, and occult fractures are more clearly visible on MRI as compared to other modalities. And there is chronic ankle pain. There is also indication of MRI ankle joint. So the learning objectives of my presentation are to understand ankle anatomy on MRI, to identify normal ligaments and tendons, MRI protocol, use a systematic reporting approach, identify common pathologies. So this is just to show you what MRI protocols will be used in our department. So the standard MRI protocols include T1 sagittal images, T2 fat side axial images, T2 fat side sagittal images, PD axial images, PD coronal, and T2 fat side oblique images. Now talking about normal anatomy of MRI, I'll show you the normal anatomy in one of the departmental cases having normal ankle joint. So starting the anatomy, we will start with the sagittal T2 image. First of all, as you all are aware about the normal bones which form ankle joint. So this is MRI sagittal T2 image. We will start from proximal, we will go from proximal to distal bones. First of all, I'll talk about bones. So this is tibia over here, big sized bone in distal aspect of the ankle. Fibula, when we scroll towards the lateral side, we can see easily fibula with its lateral malleolus, tibia with its medial malleolus. This articulates with talus, talar joint. You can see talar dome nicely over here. This is tibio-talar joint. We can see a gray area in between this black line and this tibia, that's cartilage. Talus has three parts. It has dome, neck, and its head. The head articulates with the navicular bone with the help of forming talo-navicular joint. Then coming to subtalar joint, inferiorly talus articulates with calcaneum. We have three joints of subtalar region. Posterior facet of calcaneus produces posterior talocalcaneal joint. Middle part, sustentaculum talus, produces mid-tarsal joint. However, the anterior articular facet articulates with its head and produces anterior talar joint. So this is subtalar joint, which we can see how nicely it is seen on MRI sequences. This is the area of sinus tarsi. Okay, now calcaneum in turn it articulates with cuboid bone. Cuboid in turn articulates with fifth metatarsal and fourth metatarsal. Navicular bone articulates with lateral, intermediate, and medial cuneiform bones, which in turn will articulate with basis of the metatarsal accordingly. So this was all about bones of ankle joint. Now coming to the important structures which are ligaments. So for ligaments, as we all know that we have lateral compartment and then medial compartment. So the ligaments which are very important are on the lateral side. We have three important ligaments in the ankle joint. The first is the, first of all, let me tell you about distal syndesmosis. Here also we have two ligaments. So this is tibia, this is fibula, this is axial images. So how we see the anterior tibiofibular ligament, we just scroll down. This black thing, this is intact anterior, distal anterior tibiofibular ligament. However, posteriorly, this black structure is posterior tibiofibular ligament. As we scroll down more on axial images, now we cannot see tibia anymore. Now this is teres. Okay.
head lichen body. What we can see here, this is the lateral aspect because we can see fibula over here. So the ligaments on over the lateral aspect, which are very important, are anterior talofibular ligament. This is anterior talofibular ligament, which is a very black thin band going from talus to fibula. Okay, can you see that easily? This thing. Posteriorly, however, we can see these are a few fibers, thick fibers. We can see grey structure. These thick fibers, these are posterior talofibular ligament. It is attaching on the posterior aspect of the talus and going to the fibula. This is very important to visualize because this is the most common ligament which is injured while we step on stairs or we put pressure on it. The third ligament along the lateral aspect is calcaneofibular ligament. Now we come more downside. Now this we can see calcaneum. So the ligament will start from calcaneum and it will head towards fibula. You can see the lateral aspect of the calcaneum over here, the black line. Another black structure is seen coming out of the calcaneum, which lies medial to peroneus brevis and longus muscles. This is calcaneofibular ligament. If you will scroll more, what we can see, now this is fibula, what we can see, this black structure is going to insert on this lateral levels of fibula. So this is the third ligament, which is called calcaneofibular ligament. So total there are three ligaments: anterior talofibular, this thick band, posterior talofibular, this black thick band, and calcaneofibular ligament. Okay. Now coming to the medial aspect where deltoid ligament is attached. Deltoid ligament has many components, but I'll discuss about the more important components. So switching to the coronal images. Here what we can see, again we can see, I can show you posterior talofibular on coronal images as a thick black band, then anterior talofibular ligament, and then calcaneofibular ligament. Okay, on the medial aspect, how can we trace the deltoid ligament? The deltoid ligament has two parts. It has a deep segment and a superficial component also. So the deep component has very important anterior tibiotalar ligament. So this black thing which is fanning out and inserting on the talus is anterior tibiotalar ligament. As we go backward, because we are going towards the calcaneum, as we go backward we can also see posterior tibiotalar ligament. Now anterior and posterior tibiotalar ligament is a continuous band actually. So we cannot divide it radiologically. So it is seen as a continuous band extending from talus posteriorly to medial malleolus of the tibia. Now another important ligament is tibiocalcaneal ligament. Now this black band, this black line is tibiocalcaneal ligament, which is also a component of, it will become spring ligament when we head proximally. So these are the tendons: tibialis posterior tendon, flexor digitorum longus tendon. Medial to these tendons we can see this ligamentous structure coming out from sestenticulum tela and inserting onto the medial malleolus of the tibia. So this is called tibiocalcaneal ligament. Now something about spring ligament. Where does spring ligament lie? So when we see on axial images, what we can see here that there are tendons of tibialis posterior and digitorum longus muscles. This is the ligament which I showed you on coronal images, tibiocalcaneal ligament. Now this tibiocalcaneal ligament, when it goes forward, it will become thickened. It gets thicker, and this will insert along superior medial aspect of the navicular bone here.
forming important part of spring ligament. Spring ligament has two more components when we go more inferior. Those two components, they insert on its central aspect and its medial aspect. So basically spring ligament has three components. So this was all about the important ligaments of ankle joint. Now coming to the tendons, anatomy of tendons. So we normally divide ankle joint into four compartments. Extensor compartment, this is lateral compartment, this is flexor or medial compartment, this is posterior compartment. Starting from the medial compartment, what we can see here, this big tendon, black tendon, is tibialis posterior. This one is flexor digitorum longus. Here is the neurovascular bundle, where lies artery, vein and tibial nerve. And this black tendon is flexor hallucis longus. So the mnemonic which we use, Tom, Dick and Harry. So the tibialis posterior lie here. This is normally double the size of flexor digitorum longus, normally. This is flexor digitorum longus and this is hallucis longus. Coming to the lateral aspect, on the lateral aspect, we can see, I think we can see clearly now. Now it is visualized more clearly. Now there are two tendons of the lateral aspect. One is pronis brevis, another one is pronis longus. The brevis is close to the bone and the longus lies lateral to the brevis. So we can scroll and see the insertion point of both of these. The brevis, it goes along the inferior aspect, goes to the lateral aspect, and it inserts on the fifth metatarsal base. And the longus, if you will trace it, it's difficult to trace it, but if you trace it, it goes to the inferior aspect of the medial cuneiform because it helps in the eversion of the foot. So from here, it goes to the medial cuneiform. So when we pull it, the eversion of the foot, it happens this way. Now coming to the posterior aspect, posterior compartment. This big tendon is Achilles tendon. When we go more up, this is Achilles tendon, okay? When we go down, we can see that this inserts along the posterior tuberosity of the calcaneum here. This is very important to see because Achilles tendons here are very common. And this should appear black on all sequences. And it also gives you concave appearance. When it becomes thickened, it becomes convex. I'll show you the case later on, in which we can see there will be tendinopathy of Achilles tendon. Okay, so this is in continuity. This is intact Achilles tendon. Medial to this, there is small plantaris tendon. So this was all about tendons, ligaments, bones. Now what is this area? This is sinus tarsi. Here also few ligaments they are present. Cervical ligament, interosseous ligament, and some amount of fat is interspersed between these contents of sinus tarsi, which appears normally hyper-intense, like white on decorated images, hyper-intense on decorated images, and it shows fat suppression on fat side images. Sinus tarsi is over here. So this was all about the normal anatomy of ankle joint. Okay, one more thing that I should tell you is about the plantar aponeurosis. This is also a very important structure which we should look. This appears normally hypo-intense on all sequences. And if we look on classical right side images, this is foremoster. Okay. So can you see this black line underneath? This is plantar aponeurosis. It starts from here alongside of the inferior aspect of the calcaneum and goes forward. So normally this is a thin band. If it becomes thickened, we can call it plantar fasciitis. Sometimes there is edematous into this,
Sometimes this is also associated with a small spur along the calcaneal aspect, giving it friction and causes its irritation and inflammation. So plantar fasciitis can also be easily diagnosed with the help of this. So the most important sequence which we look for in MSK imaging is fat side image. So as stir sequence gives you a little bit inhomogeneity of the field and it doesn't suppress the fat homogeneously, so sometimes we get artifacts in stir sequence. So better to see on PD fat side images, proton density fat side images, in which we can see the marrow appears suppressed, but the fluid, wherever there is inflammation, it stands out against the background of the suppressed fat. I will show you this, for example, if there is a fluid over here, it will appear hyperintense or anywhere. Now coming to few common pathologies of ankle joint. These are the cases which I have taken from internet, and after that I will show you few my departmental cases. This is a case of avulsion injury of posterior syndesmosis. What you can see here is marrow edema involving distal tibia. You can see that this sequence is, which sequence is this? Can anyone tell me? Sorry? Fat side sequence, because the marrow is hypo-intense, it is all black, and wherever the edema may be, it will stand out against this black background. So this white area is marrow edema, which is involving posterior aspect of the tibia. Moreover, in this axial image, what we can see, there is disruption of posterior syndesmosis, which I showed you. There is posterior tibiofibular ligament, it's not intact. There is hyperintensity, so this is a case of avulsion injury of this posterior syndesmosis. Another case of avulsion injury, what we can see here, marrow edema involving medial malleolus over here because of the avulsion injury. Because what happens in avulsion injury? The foot everts to this side. So the pressure is all over here. So the bones, they collide with each other and marrow edema can be seen. Marrow edema can also be seen along this adjacent aspect of the talar dome. So this is about avulsion injury. This is inversion injury. In inversion injury, what is happening? Again, marrow edema. But we can see that the lateral ligament, lateral fibular ligament, talofibular and calcaneofibular ligament is disrupted because it is hyperintense, swollen, and it is showing high signal intensity area. MRI is also very good for stress fracture. How? Because its stress fracture is not seen on plain X-rays, and we go for MRI. What happens that we can see marrow edema at the place where the stress fracture is. So for that, it is very important to look at the fracture line. So sometimes what happens, if we switch to T1 or T2 imaging of the same patient, we can see a small black line of the stress fracture on those two sequences. And this sequence will show you hyperintensity marrow edema. So stress fracture can also be easily diagnosed with the help of MRI. Another example of stress fracture of fibula. What we can see here, only marrow edema and subtle cortical periosteal thickening. Here also we can see subtle periosteal thickening with this edema. So stress fracture of fibula, distal fibula. Another case of stress fracture showing marrow edema of navicular bone. You can see the fracture line even on this sequence. Okay, this is a case of osteochondral defect. What we can see here, the stages of osteochondral defect. First of all, there is only marrow edema. Then there is subchondral cyst formation. Then finally, there is defect in the cartilage, in the bone, and all around this bony fragment. And the fluid, it encircles it. This is unstable osteochondral defect. This is just to show you the normal anatomy of the talus, to discuss about os trigona. Now normally it has a medial tubercle, lateral process and lateral tubercle. Os trigona, it lies here. So how we look, os trigona is actually unfused lateral tubercle. Okay.
So this is commonly seen in multiple patients having this causing posterior impingement syndrome because of this osteogonal. Stator process, sometimes it is prominent and we call it as stator process. This is normal. So this is osteogonal with secondary posterior impingement. What we can see here, this is the bony ossicle, which is osteogonal. And on fat side, which is what we can see, there is hyper intensity, so much edema over here because of the friction which is caused by this osteogonal, resulting in secondary posterior impingement. This is another case in which we can see calcaneal fibular ligament injury. Now this is the ligament which is coming from calcaneum and going to the fibula. This is talofibular ligament fibers. So when this is disrupted, we can see a little bit of haziness and edema over here. This is grade 1 injury. And when this is totally disrupted, this is grade 2 to 3 injury. This is grade 2 injury of posterior talofibular ligament. So we can see here the fan-shaped fibers of the ligament. These are disrupted and edematous here. This is a case of deltoid ligament injury. This is normal deltoid ligament, and here we can see there is loss of this sharp definition of these fibers. There is edema of deltoid ligament, and on fat side images you can see hyperintensity. This is a case of plantar fasciitis. This is normal plantar fascia which I showed you in the normal patient. Now this we can see that it's a little bit thickened as compared to this one. Okay, little bit edema is over here. This is a case of a small spur of calcaneum along with this causing plantar fasciitis. Another case of posterior tibialis posterior tendon tenosynovitis and tendinopathy. So this is the big tendon along the medial aspect of the ankle joint is tibialis posterior, and if we get fluid around its synovial joint, we call it tenosynovitis. Sometimes we also get altered signal of this black area, and we call it as only tendinopathy, and if it is associated with fluid, we call it as tenosynovitis. Even the fluid is also seen around flexor digital locus muscle. This is Achilles tendinopathy. What we can see here, normal smiling face of Achilles tendon when we see on the X-ray images. When this smiling face is gone, what we see is thickening of Achilles tendon. So this is Achilles tendinopathy, very commonly seen in runners, jumpers. Another case of bursitis, Achilles tendinopathy, and Haglund exostosis. Now what happens here, we can see, this is Kager's fat. There is a bursa which prevents the friction of the tendon with the bone. So when there is inflammation, fluid accumulates in this bursa, and we call it as bursitis, Kager's bursitis. And there is exostosis over here. So this is Haglund exostosis, and there is also tendinopathy of Achilles tendon. It has become thicker, and some abnormal signal is also seen within it. So altogether, these findings are called Haglund's syndrome. Okay, sometimes we do see accessory muscles in the ankle, especially this is accessory soleus muscle over here. This is normal. So normally, in front of the Achilles tendon, there is no muscle, but sometimes there is accessory muscle over here. So this is accessory soleus muscle. We should know about its anatomy so that we cannot confuse it with any pathology. Okay. Now coming to only few departmental cases. So this is the one of the cases of our department.
sagittal T1 post-contrast image. So I'm just looking for sagittal T2. This is sagittal stir. This is a case of anyone want to comment? Patient has difficulty in walking. Okay, anything normal which cannot be seen over here. G. Okay, found this sagittal. So any abnormality? Sorry? Tarsal collision है कहाँ पर है? Calcaneament? Sorry, Dr. Sir. Calcaneament? And also talus. Because the subtalar joint is not seen clearly over here. So it is lost, so this is a case of collision. Because there is bony bridging. Okay. This is another case. Okay, this is T2 sagittal image. Any abnormality which you can see here. Very simple case. Sorry? Very good. Yes, Achilles tendon, discontinuity and tear of Achilles tendon. This is another case. Okay. So this is sagittal stir image. Many findings. Anyone if can tell me? Anyone from orthopedic surgeons, please? Sorry? Pain, difficulty in walking, fever. If you there happen that signals showing the fluid on at the level of the calcaneum joint. Okay. So this is fluid here. Yes. Fluid here posteriorly. So there is joint diffusion. Some cortical irregularity of the bones, joint space narrowing. Also edema over here. The case of septic arthritis. Fluid is also over here in the subtalar joint. This was all about ankle MRI anatomy and few pathologies. These are the references, yes. Then you please tell me how to differentiate on the MRI difference between the osteotomy of talus and fracture of talus. Osteotomy of talus and fracture. How to differentiate on the MRI? How to know this is the ostrigonum. Okay, ostrigonum has a well-defined margin. It has own cortex ostrigonum. Okay. However, the fracture line, in fracture line, what we can see, there will be a line over there that will be very sharp. It will not have any cortex, black cortex all around it. So accessory bone will always have a cortex all around it.
However, the fracture will not show you the cortex on the side where the fracture is happening. So that you won't be able to see the cortex at the fracture site. Everywhere in the body, like wherever there are accessory bones, this is the same rule which follows. And even on square image or in T1 image or T2 image, the Achilles tendon seen through the black line, madam, in both images. Yes, Achilles tendon is the black line, the black thick. In both images, madam. Both, what do you mean both? T1 image and T2 image. Yes, So yes, see it will both be, images, you see the black line, madam. yes, yes, it will be black. See, this is black here, this is black here. It is black everywhere. This is black here. This is also black here, but it is not seen in this image. See, how nice and black it is. Can you see this? Yes, ma'am. Achilles tendon is very easy to diagnose. It's rupture, it's tendinopathy. Common to madam, that's Yes, it is very common. Okay, that's it. Any other questions? Thank you. Thank you. Everyone please welcome Executive Director JPMC Professor Khalid Sheikh and Joint Director Dr. Sulaiman for joining us today. Now I would like to invite Professor Khalid Sheikh on stage for shield distribution. Dr. Sulaiman, Professor Mehboob, Professor Shaista Shaukat, Dr. Jagdish Kumar, please sir come on stage to present shield to the presenter. Dr. Tabilda, please come on the stage. Dr. Mohammed Kazim Bey, please. Dr. Raima Khalidi, please. Dr. Nabi Jumal. Yes, sir. Sir. Dr. Gurbano, please. Come on the stage. Dr. Nasir Ahmed, sir. Dr. Kavita. Professor Shaista Shaukat.
Sada Placid, Dr. Farida, Professor Adhikar Siddiqui, please come on the stage. Professor Badruddin Satosa. Dr. Sharji, please come on the stage. Professor Jagesa. Now I request Dr. Khalid Sheikh to present Dr. Jagdish Kumar. Dr. Ravel, please receive a sheet for Dr. Kabira who has not been able to come. Now I would like to request Dr. Nadeem, please come on the stage and receive sheet. Professor Adil Ahmed Siddiqui, please come on stage and receive certificate and shield. Dr. Razamfar Ali Shah, please come on stage. Dr. Syed Salman Adil. Dr. Ishtiaq, please come on the stage and receive shield. Now I would like to request Dr. Jagdish Kumar to present shield to our Executive Director, Professor Khalid Sheikh. Professor Mehboob Saab. Now I request Dr. Jagdish Kumar to present shield to Professor Shaista Shaukat. Now Dr. Jagdish Kumar will present shield to our Professor Mehboob Saab. Now Dr. Jagdish Kumar will present shield to Joint Director Dr. Suleiman.
Now I would like to invite Dr. Gul Banu for presenting her presentation on MRI hip, avascular necrosis, labral tear and periarticular pathologies. Please ma'am, come on stage. जी मैंने कॉपी प्रेजेंटेशन का इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है इससे करेंगे पॉइंट आप माउस यूज़ करेंगे उसको प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। Assalamu alaikum. I am Dr. Gul Banu. Today the topic of my presentation is MRI of hip joint, in which I will tell important cases about alien, lateral tears and periarticular pathology. First of all, this is the axial view for the anatomy of hip joint. This one is you can see some important anatomy here on axial images. This is femoral head. These are the important some muscles. This one is articular cartilage. This one is the area for the ligamentum teres. And some important muscles which include this one is gluteus minimus muscle. This one is gluteus medius muscle, and this one is the gluteus maximus muscle. This one is psoas muscle. Superiorly, this is the acetabulum, and there is acetabular labrum. Adjacent superior to it, there is a sartorius muscle. This one is rectus femoris muscle, and this is tensor fasciatum. This one is iliofemoral ligament. In second image, we can see the fluid is outlining the joint, synovial fluid, and this one is iliofemoral ligament. This one is greater trochanter. These are the important standard sequences for MRI hip joint, which include coronal star sequence and coronal T1 sequence, coronal T2 fat set images, sagittal fat set images, and axial oblique fat set images. Indications for MRI of hip joint include when there are the tears of acetabular labrum, avascular necrosis, inflammatory arthritis, traumatic fracture, pathological fractures, stress fractures, when there is osteoarthritis, myositis, tendinitis. Some important contraindications for MRI hip are any activated implants like cardiac pacemakers and cochlear implants, hearing aids, aneurysmal clips, pregnancy, ferromagnetic surgical clips, and any metallic foreign body. Some very important topic for is the avascular necrosis of hip, and hip is the most common site for osteonecrosis when there is interrupted blood supply to head of femur, that is predominantly via medial femoral circumflex artery, or when there is a high loading over femoral head, then it results in osteonecrosis. In children, osteonecrosis is referred as Perthes disease. That is a very separate entity. Today we will discuss only about adult osteonecrosis of femoral head. Some important causes for alien of hip include traumatic causes and non-traumatic causes. In non-traumatic causes like steroid therapy, alcohol use,
sickle cell disease, smoking, SLE, hyperlipidemias, HIV, Gaucher's disease, chronic renal failure, diabetes, pregnancy-related and pancreatitis. This is here is shown the mechanism for avascular necrosis. Mainly the blood supply to femoral head is via medial femoral circumflex artery. When there is interruption in blood flow, it will result in loss of perfusion and kills the osteocytes, which are the bone cells, and marrow. These are some important stages of MRI hip. Basically, there are 4 stages from stage 1 up to stage 4. In stage 1, mostly it is not radiologically detectable. Stage 1 is mainly the reduced blood supply to femoral head. In second stage, there is small areas of bone death, and in third stage, there is some collapse which starts, and in fourth stage, there is a severe collapse. It is an irreversible stage, advanced stage, which results in severe osteoarthritis. In MRI, we use Mitchell's classification for staging of AVN, and for simplicity, there are 4 stages which we refer Fred signal blood. In stage 1, when the signals on T1 and T1 are bright and T2 intermediate, then these are the Fred signals. And in stage B, when T1, T2 bright signals, then these are typical signals of blood. And stage C, when there are T1 intermediate, T2 bright, these are the fluid or edematous signals. And stage 4, that is the advanced osteonecrosis, in which there will be dot signals on T1 and T2, which eventually become fibrotic signals. This is first look for AVN, X-ray of hip joint, in which in first image we have shown first unilateral AVN, and second image there is a bilateral AVN. In first image, you can see there is increased density of femoral head with articular surface irregularities, and in second stage there is a complete remodeling of femoral heads, and there is a partial collapse showing sclerosis and irregularity, and there is a marked joint space narrowing. This is the MRI presentation of bilateral AVN. We have used important sequences like coronal T1, coronal T2, and coronal PD images. This is bilateral AVN. In left hip, there is a typical double line sign that is characteristic of AVN. This double line sign is characterized as there is a hypointense line adjacent to a hyperintense line. This shows double line sign or concentric sign. And in the right hip, there is advanced osteonecrosis, in which we can see on coronal T1 and coronal T2 images, it appears low. So it's a stage 4 disease on right side, and stage 3 disease in double line sign on left side. This is the example of unilateral AVN on left side. First image is T2, in which there is a high signal on left femoral head, decreased joint space, and flattening of the upper articular surface. These are the axial and coronal images, and last one is coronal T2 fat set images, in which there is a femoral head deformity. This is the long-standing nature of AVN, and in this stage there are severe osteoarthritic changes, marginal osteophytes, and minimal joint diffusion. Second important topic is acetabular labral tears. Basically, acetabular labral tears are visible only on contrast studies. So, MRI, native MRI is not only the imaging modality of choice for labral tears, because it is only 36% sensitive. However, when direct MRI arthrography with contrast is used, it is 91% sensitive. This MRI arthrography is less invasive than arthroscopy. In MR arthrography, we give contrast of 0.0025% with joint distension fluid of 10 to 20 ml, and in this sequence we can see labral tears on T1 fat set sequences, and to difference between labral tears and intrasubstance tears. This is the arthrogram anatomy of hip joint. Basically, this one triangular structure, black lined structure is shown, that is the labrum, and this one is the zona orbicularis, and this is the proximal zone of peripheral compartment, and this one is the distal zone of peripheral compartment. In this image,
First image is showing a normal triangular appearance of acetabular labrum that is indicated by red arrow, and in the second image, when contrast is given after MR arthrogram study, then this tear is visible on both sides. There is a fluid, and in central line there is the tear indicated. Acetabular labral tears are basically important associated with femoroacetabular impingement syndrome, developmental dysplasia of hip, capsular laxity, cartilage damage, and labral tears. This image is showing femoroacetabular impingement syndrome, in which we can see anterior-superior, on the anterior-superior head-neck junction there is a bump which is showing with typical lateral extension of the epiphyseal line. When there is a continuously femoroacetabular impingement, then it results in labral tears. This example is of labral tears. In first image, you can see a small undersurface tear of posterior superior acetabular labrum at the labrocartilaginous junction, and in second image, in MR arthrography coronal fat set image, a small longitudinal tear of acetabular labrum and irregularities of chondral surface at anterior superior joint space. In periarticular hip pathologies, basically main topics are the greater trochanteric pain syndrome and iliopsoas impingement syndrome and bursitis. Greater trochanteric pain syndrome may be due to many causes, but important causes are when there is a gluteus medius or minimus insertional tendinopathy or tears, trochanteric bursitis or iliotibial bend syndrome, and iliopsoas impingement syndrome, also known as snapping tendon syndrome or snapping hip syndrome. It's known as iliopsoas tendinopathy. This one is a greater trochanteric pain syndrome. Mostly patient present with lateral hip pain, and we can see on right side there is abnormal mild peritrochanteric high signals and partly disruption of right gluteus minimus insertion. This is the partial thickness tear and results in greater trochanteric pain syndrome or trochanteric bursitis. This one is the axial image, in which we can see this is the gluteus minimus muscle and surrounding higher intensity signal that is indicating its bursitis. This one is another example of greater trochanteric pain syndrome, in which on left side there is increased signal on the left side of greater trochanter. This is showing greater trochanteric bursitis. In this image on right side there is a distended bursa on right side with the fluid content of low, that is a fluid within this bursa results in its distension, and there is a massive enhancement around this joint, this tendon, resulting in its bursitis, and surrounding inflammatory changes are also seen in muscles. This one is iliopsoas tendinopathy. It is also clinically known as snapping tendon. In this first image, we can see there is a complete distal retracted fibers of iliopsoas tendon with edema and surrounding hemorrhage, and the torn and thickened end of the tendon. In the second image, there are the higher intensity signals are seen surrounding the tendon that is showing its tendinopathy. And in third image, you can see at the level of lesser trochanter, there is also edematous signals shown, and in the this can be compared with the right side. That one is the normal tendon, and this is the edematous tendon, resulting in its iliopsoas tendinopathy. This is some important topic. There is a transient osteoporosis of the hip. It is a clinical temporary etiology. Particularly, patients are become normal after 6 to 8 months after pain treatment and protective weight bearing. In this image, we can see on left side there is increased signal bone marrow edema. This syndrome is also known as bone marrow edema syndrome within the left femoral head, neck, and proximal metaphysis. There is also minimal joint effusion, and this is the transient osteoporosis of the hip joint. When patients are not properly treated, then it can become migratory and known as migratory regional osteoporosis. It can occur in any part of the body.
Osteoarthritis of hip, it is also a chronic degenerative disorder characterized by progressive loss of articular cartilage, subchondral bone remodeling, synovial inflammation and functional impairment of the hip joint. This one is the X-ray of osteoarthritis of hip joint. This includes first there is a joint space narrowing on the anterior superior aspect, marginal osteophytes formation, subchondral sclerosis, and in later stages there will be sclerosis and collapse of the femoral head. This is the MRI presentation of osteoarthritis of right hip. These findings are similar as compared to X-rays, but MRI are done to see for joint effusion, bone marrow edema, and to see the cartilage status, either it is eroded or not. Insufficiency fractures of the hip, these are the stress fracture, which are the normal stresses on the abnormal bone. On X-ray, this is the bilateral insufficiency fractures of femoral head. Linear lucencies in bilateral femoral head with cortical discontinuity. This is the MRI of insufficiency fracture. In first image, on coronal T2 fat set images, we can see the linear hypo-intensities on bilateral femoral head and neck region, and in second image in axial T2 fat set, there is a surrounding bone marrow edema is also seen. Thank you, Dr. Gulbanu, for such an amazing talk. Now I would like to invite Dr. Nasir Ahmed for interactive case-based discussion on hip cases. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। याद रहे लोग हैं, सलाम का जवाब आ गया। I think this MRI सेशन जो अरेंज कराया है जगदीश ने, माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है, बिकॉज एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा MRI को रीड नहीं कर रहे होते, एंड इन द क्विक सेटिंग आप जल्दी से एक हैबिट है कि आप रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। तो आई थिंक कि हमें खुद से अपनी जो प्रैक्टिसिंग सर्जन है वो जब तक खुद देखेगा नहीं पैथोलॉजी, ही वोंट बी एबल टू ट्रीट इट। तो इट वाज अ वेरी वेल जी सपोर्ट नहीं कर रहा ये पुराना होगा आपका वर्जन नहीं होगा रहने दो। तो एग्जाम्स जो है ना वो करीब हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग हियर आर दोज हु आर एग्जामिनेशन कैंडिडेट। ऐसे ही है ना, अभी कितने लोग हैं जो एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैं? माशाल्लाह, so more than 50% people who are here are examination candidates. That's good. So yesterday we were sitting and a few of the candidates were with me and we were discussing that how we can go through our long case and short cases successfully. So I think this is a very important thing. So I'm not going to go into multiple cases. I will try to take one case and we will discuss as a case and how you have to present the sequence with which you should be presenting it at the time of your long case, right? So, in your clinic, just imagine you are in the clinic and a 25 years old male, he presented to you in your clinic with pain in both groin for the last 6 months, right? So, with this presenting complaint, some differential diagnosis should come into your mind. Now, he is 25, he is young. He is having both groin pain, so most probably the pain must be coming from where, right? And the duration is 6 months, right? And he is having no history of trauma and fever, so it means that we are excluding
some diseases, right? We are excluding septic pathology. We are excluding traumatic pathology. Now there is another clue over here that the patient actually is an asthmatic patient and had been admitted in the hospital for multiple attack of asthma in the past. So what does come into your mind? Excellent, right? So we have to relate our thinking है. जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो तो दिमाग आपका चलना चाहिए. Okay. So we have done that. So what will be our differentials, right? So one will be AVN, both hip AVN. Secondary to steroids, right? Can other things also cause AVN? Common diseases? Blood disorders. Which one is the most common? Sickle cell disease, right? Alcoholic, don't underestimate. Take history for alcohol. This should not be a taboo to ask whether have you ever taken. तो पूछे जरूर उससे, right? What other diseases can come with groin pain? In a 25 years old male with a short duration of history. Impingement, right? Very underdiagnosed. Very underdiagnosed, right? So what is the important clinical sign which will tell you that this patient is having an impingement? Excellent, right? So the pain will worsen on flexion and internal rotation. What else? Stress fracture. Patient might be having osteomalacia, he might be having malabsorption syndrome, and because of that he might be developing stress fracture. He might be a soldier, because of that he might be having this problem. Okay. और क्या diagnosis होती है? Bilateral hip pain, young patient. Inflammatory arthropathy, right? So what is most common in 25 years old male? Ankylosing, right? So ankylosing might present in the hip before spine. This can happen. Other inflammatory diseases which can present apart from ankylosing spondylitis, क्या सोचना चाहिए आपको? Spondyloarthropathy, right? Seronegative spondyloarthropathy, they can also present like that. Any other thing? Psoriatic भी हो सकता है. और differentials में apart from inflammatory arthropathy और क्या differentials हो सकते हैं? अब now think of something which is away from the hip joint, maybe from the back. Referred from the back, radiculopathy, right? So that is also important, right? So think about that as well. बिल्कुल tunnel vision नहीं है, आप पहले localize देखेंगे and then you will go beyond. And in Pakistan, I would say do think of tuberculosis always. जैसे हम कहते हैं, हमने अपने बड़ों से सुना भी है और उनसे सीखा है कि भाई पाकिस्तान में टीबी किसी भी शख्स को जिस्म के किसी भी हिस्से की कभी भी हो सकती है. So we are a malnourished nation. So TB, always think TB, but obviously it should not be our first differential. It must be in the last of our list. Okay. So history of presenting illness, now you have these differences in your mind and the patient is there. Now what questions are you going to ask? अब आपको AVN exclude करना है, आपको spondyloarthropathy exclude करना है, आपको infection TB exclude करना है. What you are going to ask? Fever की history, weight loss की history, steroid use की history, night pain की history, right? Exactly. So inflammatory arthropathy को exclude करेंगे, right? So one by one. तो जब आप history ले रहे हैं, you are going to exclude one by one with your questions, and the examiner is listening कि आप क्या पूछ रहे हैं. So he will understand कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपके differential उसको नहीं पता कि आपने क्या सोचे हैं, वो आपके question से ये पता लगाएगा कि आपने क्या differential सोचे हैं. अगर वो क्वेश्चन आप प्लस या माइनस में पूछते चले जा रहे हैं तो आप एक्चुअली एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यू नो व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट? सो विल गो ऑल दैट, ये सारा हम करेंगे. एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट? एग्जामिनेशन. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस यंग पेशेंट, 25 years old, 6 month की हिस्ट्री ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अगर आप सब देखना चाहेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट साइंस को देखना चाहेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में? टाइम शॉर्ट होता है एग्जाम में, जो टू डू क्विक में. कभी कभी एग्जाम में हम कह भी देते हैं ऐसे कि आप जनरल फिजिकल बाद में कर लो, पहले ऐसे टाइम में कर लो. तो जनरल फिजिकल में अगर ये सिस्टमैटिक है तो क्या होगा?
तो चेस्ट की फाइंडिंग्स होगी, मे बी उसको क्लबिंग की हो, अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लेकिन एसेसरी मसल्स आप देखेंगे, सुपर क्लेविकुलर, ये चीज़ें आपको देखनी है। और इसके अलावा अगर अल्कोहलिक है तो अपार्ट फ्रॉम दैट उसको जॉन्डिस हो सकता है, अगर मेल नरिशिंग माइट बी हैविंग एनीमिया, तो ये सारी चीज़ें। एंड जैसे मैंने बताया आई में रेडनेस देखेंगे अगर हम इन्फ्लेमेटरी ऑर्थोपैथी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। चेस्ट ऑस्कल्टेशन ज़रूर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें हिस्ट्री दे दी है। लोकल हिप एग्जामिनेशन में the important sign, if bilateral hip pain, would you like to see what is the first thing you would like to see in a patient? Temperature, redness, तो सबसे पहले आप पेशेंट को चलाएंगे। गेट विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग, कि बैटलिंग हो रही है, एंटैल्जिक गेट है, शॉर्ट स्टेप गेट है, तो आप गेट देखेंगे सबसे पहले। पेशेंट इज either the patient is able to squat or not, क्या क्रॉस लेग कर सकता है नहीं, what is the significance, it will tell you the contractions in the hip. And then obviously this is not an examination class, then you will go along the examination and do not forget muscle wasting, right? तो आप एक examination so you will make up a mind कि मुझे ये करना है। But next आपने examination complete कर लिया, आप क्या चाहिए? What investigation? X-ray. What X-ray? हाँ, बायोलैटरल है ना, तो जब एग्जामिनर पूछता है कि क्या चाहिए तो आप कैसे एक्सरे नहीं, वो एक्सरे चेस्ट लगा देगा, तो यू टेल देम आई नीड एक्सरे पेल्विस एबी एंड बोथ हिप लैटरल, तो यू टेल देम क्लियरली व्हाट यू वांट टू सी, राइट? चलो ये एक्सरे एबी हम देख लेते हैं इसका। अब एक्सरे लगा दिया एग्जामिनर ने, सो व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? डॉक्टर साहब पॉजिटिव फाइंडिंग बताते हैं। Positive findings are, I can see that the sclerosis is present on the bilateral femoral height, and and on the right side there is decreased joint space. जॉइंट स्पेस तो नैरो नहीं है इसमें, एक्चुअली काफी क्लियर है। सो इन बोथ द हिप्स, जैसे अभी डॉक्टर गुलबानो ने और डिटेल में बताया कि क्या फाइंडिंग हमें बोलनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या अल्फाज हमारे मुंह से निकलने चाहिए इस एक्सरे को देख के भी। स्क्लेरोसिस का वर्ड निकलना चाहिए, कोलैप्स का वर्ड निकलना चाहिए, ठीक है ना? क्या इसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल साइन है या नहीं है, जॉइंट स्पेस कैसी है, एसिटेबुलम कैसा है, तो ये लफ्ज़ हमें बोलने हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जब हम बोलेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के को पता है कि क्या देखना है, राइट? तो दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी इन आवर माइंड। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर रेडी टू पास, एग्जामिनर इज देयर टू पास, राइट? बट यू नीड टू स्पीक आउट द राइट वर्ड, ठीक है ना? आप चीनी लेने गएंगे, बोलेंगे नमक तो नमक देगा ना, चीनी तो नहीं देगा, राइट? तो राइट टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो देयर इज स्क्लेरोसिस एंड वेयर इज द स्क्लेरोसिस, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन एक आपको ये देखना है कि जो नेक्रोसिस का एरिया है दैट इज ऑल्सो, इज इट सेंट्रल, it is medial, it is lateral, right? So इसमें हम anterior तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास lateral view नहीं है, right? So the area is more maybe central in the right side and more lateral on the left side, ठीक है? तो इसमें हम medial lateral पे कमेंट कर सकते हैं इस एक्सरे पे, लेकिन एंट्रोपोस्टीरियर पे कमेंट हम ओनली lateral view में करेंगे, वो हमारे पास नहीं है। चलें, let's say ये avian है and now we need to classify a bit स्टेज इट इज, तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? What do you want now? You want an MRI, right? चलो, so this is the MRI. This is, which view is this? That's a coronal view. Right. So what do you see in it? So it's a superior region of the femoral head of both sides. There is what type of area is this? Hypotenuse area on the bilateral femur. Very good. Right. तो ये आपको, but you have to tell me hypotenuse area है। चल, एवियन आपने डायग्नोज कर लिया, अब क्या करना है? Stage it. And next is stage it. So what classification you will commonly use? P-card, जैसे डॉक्टर गुलबानो ने ये बताया। So there are a lot of classifications which have their different significances. We commonly use P-card, but there are other classifications which also add to our knowledge and understanding. अभी हम P-card पे बात कर रहे थे, डॉक्टर गुलबानो ने ऑलरेडी बता दिया। Let's say कि
I would like to say कि जो third में crescent sign है, what is crescent sign and how does it appear? Subcondylar. तो crescent sign अगर आप देखें तो it's because of the subcondylar fracture, but the cartilage is intact. And there is a sliver of subchondral bone which actually is attached to the cartilage. And जब आप एक्सरे करते हैं तो then it gives you a shadow or of a crescent, जैसे पहली का चांद होता है, ऐसे छोटा सा आपको अलग से एक शेडो नजर आ रहा होता है जो कि एक्सरे में अगर आप गौर करें तो नजर आ रहा है, तो इसको क्रेसेंट साइन कहते हैं। क्या हमारे पेशेंट में क्रेसेंट साइन है? Left side to maybe. So how will you now stage the disease? Now you've seen the MRI, you've seen the X-ray. How you will stage? Right side पे कौन सी stage है? Right is A और left में 2B है। 3 है सर, left में 3 है और right में जो है वो 2 है सर। तो 2 and 3, ठीक है। और भी कोई क्लासिफिकेशन होती है जिससे आपको कुछ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू का पता चल जाए कि गुड। तो स्टेनमेंट क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज़ है जो आपको बताती है कि ये हेड के एवियन के चांसेस या कोलैप्स होने के चांसेस आगे ज़्यादा होंगे? इट इज़ द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, राइट? सो प्रोग्नोसिस, टू चेक द प्रोग्नोसिस वी हैव टू चेक द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट. सो व्हाट इज one of the most reliable way by which we can check the area, how much area is involved? Curveball classification, right? So what is curveball? Modified curveball classification, it takes into account the AB and the lateral view, and then you calculate the angle and you add on to that, right? So if it is less than 190, so it's mild and the chances are good, and this in particular area there are more chances that the head might be safe. And it is 190 to 250, it is moderate, and more than 240 is severe. Very good. अब क्या करना है? आपने कर्वल क्लासिफिकेशन कर ली, and probably according to this maybe के right side पे आपके it is less than 190, and on the left side it is about 240. So patient is there, 25 years old, male, 6 month history of bilateral hip pain, otherwise fit and healthy, asthmatic. क्या करें? Core decompression. बाइक क्या चलाता है? बाइक क्या चलाता है? तो उसका रोजी रोटी जो है ना वो बाइक के साथ है। अब बताओ क्या करोगे? तो सेम सेटिंग में करना चाहेंगे, एक साथ करेंगे। कितना टाइम देंगे बीच में? सर माजरत मैं से सवाल कर रहा हूँ सर, हमारे बड़े बैठे तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश करें, सर की मौजूदगी में। तो इसमें मैं कहता हूँ कि कैन वी डू कोर डिकम्प्रेशन इन वन सेटिंग एंड देन वी डू टोटली later on it collapses. So important thing is that how much symptoms is there, right? So definitely अगर एग्जाम में आप ऑप्शन कहेंगे कि सर आई विल डू राइट साइड decompression and left side total replacement because it is already collapsed, right? So they might accept it, right? What are the indication for a total hip replacement in an AVN? Pain. Number one, pain. Because of? Why will the patient will have pain in AVN? Secondary to osteoarthritis. Does it has osteoarthritis? Or is the acetabular cartilage? Very good. Let's say the patient is not having pain. Can we do bilateral core decompression? Yes. At this stage? Okay, check. So, according to our side, I think patient is having moderate disease on both sides, and with core decompression, he might have 40 to 50% of chances of survival of the femoral head on both sides. So let's do core decompression. So this is what we did, core decompression, and then
this is the follow-up after 6 months. After 6 months, the head is still surviving and it has not collapsed. The left side is slightly collapsed, but the joint space is normal. The patient pain has gone, and patient is now back on bike, right? So what are the other options? Core decompression के अलावा अच्छा, इसमें एग्जाम में one more question is आप core decompression कैसे करेंगे? अब सब क्रिटिकल करेंगे आप कितने mm की ड्रिल इस्तेमाल करेंगे? So there are two ways, either you do one central core with a large drill or you do a multiple cores with a small drill. So we do multiple core with small drill. Okay. What are the other options? Other options are fibular grafting, vascularized, non-vascularized. What you can do in literature, it has shown that there is slightly better result with vascular graft because it supplies vascularity. But somebody has seen, कभी किसी ने देखा है इस हॉल में वेस्कुलर फिबुला ग्राफ्ट? सर आपने देखा है सर वेस्कुलर फिबुला? तो वेस्कुलर फिबुला हमने कभी कोर डिकम्प्रेशन नहीं देखा है। हाँ, अलबत्ता एक दफ़ा मैंने किया था because that patient had 20 years old female came with aneurysmal bone cyst with a fracture of neck of femur. So I did in only one case. Otherwise, I have never seen for AVN doing vascular bone graft. And people who do that, they say that it's very cumbersome procedure and we never know whether the graft really is working or not. Because कि आपको ग्राफ्ट का जो वेसल होता है तो बहुत बड़ा सुराख करना पड़ता है, फिबुला को वहाँ से डालना पड़ता है, and then उसी सुराख से आपकी वेसल बाहर आती है, and then you anastomose it. So it's a very long procedure, chances of infection, and we never know whether it's working or not. इसलिए people are not doing vascular, they are doing non-vascular fibular graft, right? What are the other options? चलिए फिबुला हो गई, then अब collapse हो गया. Now the patient has developed a collapse which involves less than 30%, but the patient has come with the pain. Acetabular side is normal, the rest of the femur head is normal. Any other option? एक आदमी बोले, हाँ? Any derotation osteotomy का सुना है? So we can do derotation osteotomy, intertrochanteric derotation osteotomy. इसका concept क्या है कि we can actually, आपका usual collapse superior होता है, you convert the anterior part, superior part anteriorly and bring the posterior part superiorly so that the cartilage is there and the patient can be very many patients, right? So it does have its implications. And तो जब आप लैटरल व्यू से करते हैं तो आपका ट्रोकेंटर क्योंकि एपी में लंबा होता है, जब आप इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो एक्चुअली आपकी जो बोन होती है वो इस तरह से ट्रांसवर्स हो जाती है रादर देन लॉन्गिट्यूडनली, एंड देन यू कैन फिक्स इट विद DHS. ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज resurfacing is rather contraindicated in AVN, right? So this is one contraindication of resurfacing. So let's do for last option is totally when the patient is stage 4, you do totally replacement. So my question is, which approach do you use? हाँ, तो क्वेश्चन होगा आप किससे करेंगे? आप किससे करेंगे? हार्डिंग से. आप किससे करेंगे? So जो अप्रोच आप कर रहे हैं वो बताएंगे एग्जामिनर, ठीक है ना? ये नहीं कि कोई यंग पेशेंट है तो मैं वैसे तो लैटरल से करता हूँ लेकिन इसमें मैं एंटीरियर से करूँगा, ये नहीं बोलना है. जो आप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस है जिससे रिजल्ट्स आप अच्छे दे सकते हैं वो अप्रोच आप देखें. What fixation method will you prefer for your boot limb in this young patient? So you will do unsymmetric, right? So this is okay. Next question: what bearing surfaces will you choose and why? So, don't say poly, say highly cross-linked poly, because there is a lot of difference. सारे गेम इसमें पॉली का है, राइट? तो से either ceramic on highly cross-linked poly or metal on highly cross-linked poly. So what is the safe zone of leveling? How you are going to put your components? Acetabulum की anti-version कितनी होगी? Inclination कितनी होगी? ठीक है, good. एक और बात, leveling का safe zone is sometimes said is not to be a safe zone anymore. There is a lot of literature.
लेकिन but still for exam purposes it is one of the question and you should know the right answer to it, right? What is combined anteversion? Combined anteversion, femoral anesthesia, so you must know that. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वेयर जो है ना, दिस आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि इसमें वेयर इज, अगर आप अल्ट्रा मॉलिक्यूलर जो कन्वेंशनल पॉली करते हैं तो जो वेयर है एनुअल जो इसका वो 0.1 से 0.2 मिलीमीटर पर ईयर है, लेकिन अगर आप क्रॉस लिंक पॉली यूज़ करते हैं तो 10 टाइम्स लेस वेयर है इसके अंदर. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से आई एम ओनली गोइंग टू यूज एंड आस्क द कंपनी वेदर जो आप इम्प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ हाईली क्रॉस लिंक और नॉट. कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन आउटकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. Okay, this is the unique safe zone, and now this is the way this is cemented fixation, and this is the uncemented fixation. So I will summarize that if you want to pass your exam or in your practice, take a history like a detective and examine the patient like an archaeologist, right? And do only relevant investigation and so that the patient does not have to spend money. So be a मेमन, I would say. जब आप इन्वेस्टिगेशन लिखने जाएं तो सोचें कि पेशेंट को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़े. And then deliver your and then defend your diagnosis like Pakistan Air Force, right? And then deliver your skills like an artist. And if you want to pass your exam, present your case in the exam humbly but authoritatively, like a consultant. ठीक है? Thank you very much. Thank you, Nasir bhai, for a wonderful talk. Your common hobby. So I have a question in general from everybody. Are orthopedic implants the contraindication for MRI? Very important and a very common problem. We often send patients for an MRI and they are saying that the MRI cannot be done because there is an implant inside. This is a problem for everybody. So I want to ask this. One is titanium, one is stainless steel, and third is chrome cobalt. तो टाइटेनियम भी मैग्नेट एंड रिस्पॉन्ड नहीं करता है. सिमिलरली क्रोम कोबाल्ट भी मैग्नेट नहीं करता है. वैसे स्टेनलेस स्टील आइडियली मैग्नेट रिस्पॉन्ड नहीं करता है. आप लोगों की अपनी कन्वेंशनल टीचिंग क्या है? हमारा दूसरा ये इशू होता है कि जैसे लोकल एमआरआई अब जो करंट है वी कैन डू द एमआरआई टाइटेनियम ऑन दैट. द ओनली थिंग इज द फ्लेयरिंग अराउंड बिकॉज ऑफ द मेटल. तो फ्लेयर जो होता है उससे नजर नहीं आता है. बट आई थिंक सर करंटली ऐसे एमआरआई अवेलेबल है जिनमें वो फ्लेयरिंग को कम कर देते हैं. डू यू हैव दैट एमआरआई? और टू सी द सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में उसके अंदर हमारी ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज अवर टेक्नीशियंस आर नॉट ट्रेन्ड टू डू सो. ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर हो तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं. यस. Ma'am, I'll wait for answer to that after we have discussed it. Yes, I will let Dr. Shasta know and she will get back to you. The other thing for everyone, see, it is the patient which is to be treated, not the MRI. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. कई बार it's a common practice for everybody that people used to send their MRI films and their reports. Okay, tell us what to do next. Sir, you would agree with that. So it is the patient which is to be treated, not the MRI. At times, like in MRI spine, you find lot of herniations and other findings, but the patient is not with the problem. So we need to understand that. And
very careful before intervention. Thank you. Thank you. सर मेरा सवाल है कि एक पेशेंट ये भी तो सेम सिनारियो है 25 ईयर एज है ग्रेड 4 इंडियन है सीवियर पेन है लेकिन पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन करेंगे? इसमें आपको पहले एक साल भी हम बैठे हुए थे कि क्वेश्चन आया ठीक है आपको पहले डिसाइड करना है व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट जैसे आप कहते हैं THR इज द बेस्ट ऑप्शन देन वी विल अरेंज THR फॉर दैट affordability should not be a problem to change the mode of treatment and offer the patient an inferior हमारा जिला हॉस्पिटल है हमारे पास there are lot of things जो भी कर रहे हैं तो affordability तो there is no problem सर हमने तो शेयर कार्ड पे देते हैं शेयर कार्ड पे नहीं होता और सर ये भी इसको मैं वहाँ पे ट्रस्ट पे भी मैंने किसी को नहीं देखा है कि आप उसका हो जाए मरीज को कराची लिया और यहाँ पे हो जाए कराची जो है ना सब गरीबों की माँ है सारे काम हो जाते हैं थैंक यू सर आपको एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे करोगे यू हैव टू अरेंज इट समहाउ और दूसरा मैं भाषण नहीं किया है मैं एक चीज़ कहता हूँ मैं यू आर टेकिंग हिस्ट्री टेक एज ए स्टार्ट when you are presenting you will present ये दो चीज़ें याद रखें अगर आप हिस्ट्री कैसे करेंगे थर्ड ईयर के स्टूडेंट को है एक ही चीज़ पूछता है लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो चीज़ें ग्रहण करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और दूसरा कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं somebody has to bear this cost अब वो क्लियर अगर इमेज ना आ रहा है तो नो पॉइंट इन गेटिंग MRI आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है अगर ऑलरेडी ग्रेड 3 आपको पता है टोटल करना है फिर MRI क्या हुआ अगर ग्रे एरिया है then you go for the some otherwise don't do the unnecessary Sir, एक बात समझें कि nobody should suffer because he or she cannot afford. ये अदीब साहब अक्सर ये बात कहते हैं nobody should suffer because उसके पास पैसे नहीं ये आप और ज़हन में भी आप ये ना कहते हो गरीब है तो ये गरीब है आप ये बाकी चीज़ें देखें मैं ऑर्थोपेडिक करूँगा या ऑर्थोप्लास्टिक करूँगा ताकि वो आगे जाके अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकेगा या नहीं कर सकेगा लेकिन सर्जरी आप इस बेस में डिसाइड करें Thank you, Dr. Nasir, and everyone for such informative talk. Now, I would like to invite Dr. Kavita for presenting her talk on MRI anatomy of elbow. Assalamualaikum to everyone. My name is Dr. Kavita. I am consultant radiologist at JPMC since 2017. First of all, I am thankful to Orthopedic department who gave me the opportunity for presenting a little bit topic of which I am going to present is the MR elbow. These are the subheadings of my presentation: introduction, common presentations, scan plans, scanning protocols, anatomy and variants, elbow mechanics and various pathologies. Introduction: elbow abnormalities are increasing as the number of individuals participating in weightlifting and throwing and racket sports increases. The elbow is the second most cumbrous joint in the body after knee. The understanding of elbow pathology is becoming more sophisticated with the advent of improved imaging techniques and the evolution of surface coils. Thank you. MRI offers MRI offers superior depiction of muscles, ligaments and tendons and the ability to visualize directly bone marrow, articular cartilage and neurovascular structures.
These are the common presentations for which the imaging of elbow is required, including pain, swelling, stiffness, deformity, instability, paresthesia, and neuropathic manifestations. Scan planes. Imaging planes should be correctly scanned in a standardized way. Use the axis of the epicondyles on the axial localizer to plane the coronal plane. The sagittal images are scanned perpendicular to the coronal plane. Imaging sequences. In the MR protocols of joints, we do T1 and T2 fat set in all three imaging planes. Sometimes STER is used. T1, in every joint that is studied, you should have at least one T1 sequence, not only to look for at the anatomy, but also as a backup for the looking at the marrow. T2 fat set images will show marrow abnormalities, but T1 can be helpful in telling us what is really going on. T1 is certainly used in MR arthrography. Second is the T2 fat set imaging. T2 fat set will show most of the pathology, whether it is in the bone marrow, ligaments, or muscles, because of the high water content. It can also be used to image cartilage. Third one is the gradient echo. With gradient echo, we can use 3D thin sections to image the cartilage, ligaments, and loose bodies. This is the MR protocol. On coronal imaging, T1, T2 fat set and gradient echo sequences, and axial images in T1 and T2 fat set images, and sagittal is on T1 and STER images. Now the anatomy. When we study the anatomy of the any joint, it is good to use the inside-out approach. First study the bones and then continue with the ligaments and tendons and then the surrounding structures. Structures to evaluate in different planes. In axial plane, we can see tendons, annular ligament, bones, neurovascular structures, and muscles. In sagittal plane, we can see anterior and posterior muscle masses, that is biceps and triceps, tendons longitudinally. In coronal planes, we can see ligaments like medial and lateral collateral ligaments, medial and lateral muscle masses, bones, especially medial and lateral epicondyles, and extensor supinator and flexor pronator conjoint tendons longitudinally. Remember, muscles give intermediate signals on T1 weighted images. Ligaments, tendons, nerves, joint capsule, and synovial give hypointense signals on all pulse sequences. Bone marrow gives hyperintense signals on T1 and T2 and suppressed on fat set images. These are the tendon and ligamentous attachments at the elbow. Common flexor tendon attachment on the medial epicondyle, and just below it there is attachment of the ulnar collateral ligament which runs down and attached to the sublime tubercle on the coronoid process of the ulna. And common extensor tendon which takes origin from the lateral epicondyle. Below this there is attachment of lateral collateral and lateral ulnar collateral ligament. Lateral ulnar collateral ligament is somewhat confusing term for a tendon that also originates underneath the common extensor tendon. It swings down behind the radial head and attaches on the area of the ulna, that is called the supinator crest on the lateral view. This is the attachment site of lateral ulnar collateral ligament. Biceps tendon attached on the biceptal tuberosity of the radius, and brachialis tendon attaches on the coronoid process of the ulna. Anatomical variants. First one is the pseudo defect of the capitellum. This is a finding that you frequently see on coronal images. It looks like an osteochondral lesion, this one. But if you look at the sagittal image, you will notice that coronal image runs through the posterior non-articular portion of the capitellum. We will compare it on sagittal image. So when the elbow is fully extended, a portion of the radial head is actually behind the articular surface of the capitellum.
On a coronal view, we will be looking at the radial head, which is covered with cartilage, and opposite to it, non-cartilage covered part of the capitulum, which is frequently show somewhat irregularity. This is somewhat irregular. This is not a true defect. Pseudo loose body. Another common finding is a small piece of fat that you will see on the sagittal image that looks like a small loose body or cartilage defect. This is a normal fat in between the two cartilages of the ulna. Typically, the olecranon has two pieces of cartilage with a small area in between that fills with fat. This can be suppressed on fat set imaging. Third one is the plica. This structure on the lateral side of the joint is sometimes seen. It can be prominent and almost almost look like a meniscus. It is a normal structure, but sometimes it is thickened or irregular, and it may be the cause of symptoms. Now the elbow mechanics. The elbow serves as a hinge joint. When we look at the humeroulnar and radiocapitellar joints, the other joint is the proximal radioulnar joint with rotation allowing pronation and supination. Many acute and chronic injuries occur as a result of throwing. During the throwing motion, in the phase of late cocking to acceleration, there is tremendous valgus forces that are pulling the elbow. This is the window from late cocking to acceleration where tremendous valgus forces occur. The valgus overload results in enormous tension on the medial side trying to pull the things apart, this part, while the lateral side will be under compression. On posterior side, it causes shear forces along the head of the olecranon. Valgus overload syndrome. All these forces make up what is called the valgus overload syndrome, with very characteristic injuries to the elbow over time. The tension on the medial side causes a tear of the ulnar collateral ligament. This is the ulnar collateral ligament, which is attached on the subline tubercle of the conoid process and showing the hyperintense signals. Second one is the compression of the lateral side causes osteochondral lesion. This is the osteochondral lesion secondary to compression effect. And third one is the shear forces on the posterior side causes arthrosis. This is the site of arthrosis where a false joint can take place. Posterolateral rotatory instability. There are three stages of posterolateral rotatory instability. Stage 1, posterolateral subluxation of ulna with tearing of lateral ulnar collateral ligament. In stage 2, there is incomplete dislocation with conoid perching on the trochlea, along with lateral ulnar collateral ligament and anterior and posterior capsule tearing. In stage 3, there is complete dislocation and conoid displays posterior to the humerus with or without anterior bundle of ulnar collateral ligament tear. Now the elbow dislocation. Here is a lateral view of the elbow of a patient who fell on the outstretched arm. The radiograph shows the joint effusion and conoid fracture. This is the conoid fracture. Fat pad sign. Normally anterior fat pad is visualized on lateral radiograph and displays with presence of joint effusion. While posterior fat pad is normally not visible as it is buried into the olecranon fossa, its visualization is more reliable sign of joint effusion. Elbow dislocation on MR. On coronal imaging, there is lateral collateral ligament is completely stripped and radial head is subluxed. Marrow edema along the conoid process of the ulna due to fracture, and on sagittal images, the radial head is little bit subluxed posteriorly with moderate joint effusion and capsular disruption, along with contusion along posterior aspect of the capitulum, which is appearing as low signals on T1. All these signs are the result of posterior dislocation. Now the osteochondral lesions. Osteochondral lesion, previously called osteochondritis dissecans or OCD. The chronic valgus overload can cause an osteochondral lesion on the lateral side of the elbow. It is the result of repetitive impaction and shear forces.
The radiograph of a 15-year-old baseball player with a 4-year history of elbow pain and a recent episode of locking. There is focal lucency in the capitellum and some fragmentation on the plain film, which is marked by yellow arrow, typical for osteochondral lesion of the capitellum, and the locking is probably the result of loose bodies. These are the MR images of osteochondral lesion. MR arthrogram confirms the osteochondral lesion. There is gadolinium seen in between the humerus and the osteochondral lesion. This is the gadolinium, which indicates that it is unstable. If you don't have gadolinium, look for the joint fluid undercutting the fragment. There is a loose body in the posterior recess of the radiocapitellar joint. This one is the loose body. Osteochondral lesion of the capitellum is typically seen in throwers and gymnasts in the age groups between 11 to 15 years who get a lot of wrist and elbow problems due to weight bearing. Here in other case of 20-year-old gymnast, again there is a lucency on the radiograph and marrow edema on the T2 fat set images, coronal T2 fat set images. Sagittal T1 image shows subchondral bone abnormality but not much of fragment. There is just defect. There is some cartilage thinning but not a defect. This is obviously a stable fragment and there were no loose bodies. These are the images of a young baseball player who presented with elbow pain at the age of 14. T2-weighted fat set images show marrow edema and was suggested keep throwing. This is the bone marrow edema. He came back 3 years later at the age of 17 and you can see what can happen when they push too hard. अब उनको बोला गया आप खेल सकते हैं, throwing कर सकते हैं. अब after the age of 3 years इनका ये subchondral defect में convert हो गया. On T1 weighted images, fragmentation with a loose body seen. This is the fragment and this is a loose body. On T2 weighted images, the fragment is unstable because there is high signal between the fragment and the humerus. This is a subtle high signal in between the fragment and the bone. Osteochondral lesion of the trochlea. These are the images of a patient with anterior elbow pain. There was no recent injury. The clinical diagnosis was biceps tendinitis or biceptal bursitis. The findings on coronal MR images are quite uncommon. There is a defect with small cystic changes. These are the small cystic changes which are appearing hyperintense and called the osteochondral lesion of the capitellum. There is small cartilage defect seen as well. This one is the small defect. An osteochondral lesion of the trochlea is usually seen in younger patients who have an immature skeleton. It is seen in the lateral trochlea, like in this case, due to repetitive hyperextension in an area of tenous blood supply. These are evident as small cystic changes appearing as hyperintense. On T2, ulnar collateral ligament. The ulnar collateral ligament is situated on the medial side and it has 3 components. The anterior bundle is the strongest component and is primarily restrained against the valgus forces. On MR, this is the most important structure. The posterior bundle attaches distally in a fan shape on the olecranon. The transverse bundle runs from the olecranon to the olecranon, so it doesn't do much so. Ulnar collateral ligament originates on the undersurface of the medial epicondyle just beneath the origin of the common flexor tendon. It attaches on the small process on the medial side of the coronoid, which is called the sublime tubercle. When you see the ulnar collateral ligament tear, always use the axial images. If you look at the medial epicondyle, you will notice the posterior bundle is a thin structure. This is the posterior bundle. The ulnar nerve is sitting in the cubital tunnel alongside. A retinaculum covers the cubital tunnel. The anterior bundle is much thicker. This is the anterior bundle. Distally, they merge together to attach to the sublime tubercle of the coronoid.
Remember that ulnar collateral ligament should attach very tightly on the sublime tubercle. Ulnar collateral ligament tear on T2 coronal fat set images show complete tear of the ulnar collateral ligament with some marrow edema in the adjacent bone. The mechanism of injury to the ulnar collateral ligament is usually chronic tensile forces which create micro tears. This is seen in pictures and other overhead throwing athletes. Most commonly there is a complete tear, but sometimes there is a partial tear which can be very hard to see. That's why in these athletes MR arthrogram is usually performed. These are the images of 18-year-old baseball pitcher with medial elbow pain. A partial tear is seen as T sign. The fluid is continuing with the joint fluid. Lateral collateral ligament. Here is an illustration of the lateral collateral ligament complex. It consists of radial collateral ligament, lateral ulnar collateral ligament, and annular ligament. When you look for the radial collateral ligament, first try to identify the common extensor tendon, because right underneath it you will find the radial collateral ligament. This is the common extensor tendon, and below it there is the radial collateral ligament as attachment. As you go more posteriorly, you will see the lateral ulnar collateral ligament which sweeps behind the radial head, this one, and finally attaches on the supinator crest of the ulna. Annular ligament is usually difficult to differentiate from radial collateral ligament, but sometimes it can be identified on sagittal MR arthrogram. This is the annular ligament. These are the sequential images of radial collateral ligament, which we can see below the common extensor tendon, and it sweeps posterior to the radial head and attaches on the ulna. Common extensor tendon. The common extensor tendon originates at the lateral epicondyle. On T1 images, the tendon should have a low signal intensity. Lateral epicondylitis. Lateral epicondylitis is also known as the tennis elbow, although in 95% of cases it is seen in non-tennis players. This occurs due to chronic stress to the common extensor tendon, which results in partial tearing and tendinosis. Typically, the extensor carpi radialis brevis is the component that is involved. In more severe cases, there is tearing of the lateral collateral ligament, which gives a poor response to conservative treatment. Here is a typical case. There is thickening and abnormal signal on both T1 and T2 fat set images. This is the extensor carpi radialis brevis, which shows intermediate signals on T1 and hyperintense signals on T2 fat set images. Common flexor tendon. The common flexor tendon originates at the medial epicondyle. Similarly, it also gives the low signals on T1. Medial epicondylitis. This is the counterpart of the lateral epicondylitis and also known as the golfer's elbow. Here is the common flexor tendon involved. Coronal and sagittal images show partial tearing of the common flexor tendon, which show the thickened common flexor tendon with hyperintense signals on T2 fat set images. Little Leaguer's elbow. These are the images of a patient with pain on the medial side. The findings are very subtle. The medial epicondyle is somewhat osteopenic compared with contralateral side. The diagnosis of little Leaguer's elbow, which results from chronic stress injury. The lucency on radiograph, which looks like a widened physis, is due to cartilage ingrowth in the metaphysis. These are the MR images of little Leaguer's elbow. There is marrow edema seen along the medial epicondyle. This could also be called a Salter-Harris type 1 fracture if it was an acute traumatic event. Notice that the normal ulnar collateral ligament. In children, the weak link in the valgus stress is not the ulnar collateral ligament but is the physis. Biceps tendon. These are the sequential axial images of the biceps tendon in front of elbow. This is the muscular tendinous part of the elbow. It runs downward, encoding the elbow. This is the bisectal aponeurosis and attaching on the radial tuberosity.
The pathology of the distal biceps tendon is much like that of Achilles tendon, and there can be tendinosis, partial tear, incomplete tear with or without retraction. These are the ultrasound images of 73-year-old male who experienced a sudden pain and a tearing sensation when lifting a box. There was pain with pronation and supination and tenderness anteriorly proximal to the elbow joint. No ecchymosis or palpable mass. On sagittal images, the tendon is thickened. This is the tendon which is thickened, but distally the tendon is lost. Hair is absent. MR examination was performed. MR examination shows hyperintense signals within the biceps tendon, and there is non-visualization of tendon at the attachment site and completely replaced by fluid, and it is called the complete tear. When the aponeurosis is also torn, then the tendon retracts and you get an obvious swelling in the arm caused by the contracted biceps muscle. The distal biceps tendon tear is an uncommon injury. It is seen in about 5% of biceps injuries. It is the result of sudden extension forces to the arm when the elbow is flexed. A proximal biceps tendon tear is more common. Usually it is the long head of the biceps that is completely torn. Biceptal bursitis. Sagittal and axial images of a patient who was referred to an orthopedic surgeon for a mass near the elbow. There is a partial tear of the biceps tendon and inflamed radiobiceptal bursitis. This is the biceps tendon which shows hyperintense signals, and this is the inflamed bursa which is showing internal T2 hyperintense signals. Differential diagnosis of internal hyperintense signals include synovial chondromatosis, PBNS, and rice bodies. It is turned out to be rice bodies. In synovial joint, line joint or bursa, these are rice bodies can be found by the result of chronic inflammation with synovial hypertrophy. Here is another case, the white arrow in the left sided image pointing the bursa. This is the radiobiceptal bursa, this is the biceps tendon which appears normal, and this is the introitious bursa. Brachialis tendon. The brachialis originates from the lower half of the front of the humerus near the insertion of the deltoid muscle. It lies deeper to the biceps brachii and is a synergist that assists the biceps in flexing the elbow. The thicker tendon inserts on the anterior surface of the conoid process of the ulna. On sagittal MR images, when you compare the brachialis tendon with the biceps tendon, the brachialis is almost all the muscle with a very short tendon. This is the brachialis muscle with a small tendon, while this is the biceps tendon. Chronic avulsion. This image of 68-year-old woman who injured her arm approximately 10 years previously and now presents with increasing pain in that arm. Radiograph reveals cortical irregularity of ulna, and patient was worried about underlying bone abnormality like tumor. On MR sequences, biceps tendon demonstrates tendinosis and partial tear. This one is the biceps tendon. However, we look at the insertion of brachialis tendon on the coronoid process. There is tearing of the tendon with lot of marrow edema. This is the biceps muscle with edema in the coronoid process of the ulna. Joint capsule and bursae. The joint capsule encloses the elbow joint and it is strong and fibrous, providing stability while allowing motion. It is thickened medially and laterally to form collateral ligaments which stabilize the joint during flexion and extension. A bursa is a sac-like structure containing a small amount of fluid, of synovial fluid. It functions to decrease friction between tendons, bone and skin during movement. Several bursae are associated with the elbow. Intratendinous olecranon bursa located within the triceps brachii tendon. Subtendinous olecranon bursa lies between the olecranon and triceps tendon. Subtendinous bursa lies between the olecranon and overlying skin. Bursitis can develop secondary to many causes like excessive use, trauma, infection and inflammation.
These are the images of olecranon bursitis. This is a fluid-filled structure which is seen within the distal tendon, within the tendon of the triceps muscle, and this is the subcutaneous olecranon bursitis. These are the images of the nerves of the elbow joint. Radial nerve, superficial and deep parts, lies medial to the brachioradialis muscle, and median nerve is seen between the two hairs of the pronator teres muscle, and ulnar nerve, which is seen in the cubital tunnel. Ulnar nerve. The ulnar nerve originates from the medial cord of the brachial plexus with the root values of C8 to T1 in the axilla. It descends the upper arm medially, pierces the medial intermuscular septum to enter the posterior compartment and rests directly behind the elbow, medial epicondyle, before continuing down to the forearm. It passes through the space between the medial epicondyle of the humerus and the olecranon. It then enters the forearm by passing under the two hairs of the flexor carpi ulnaris muscle. Here we see the ulnar nerve within the cubital tunnel. Its floor is formed by the roof is formed by the retinaculum, and floor is formed by the posterior part of the ulnar collateral ligament. This patient had ulnar nerve neuropathy. Cubital tunnel syndrome is a common peripheral neuropathy. It arises from compression of the ulnar nerve within the cubital tunnel, where the nerve passes beneath the cubital tunnel retinaculum. These are the multiple causes. Here is the accessory anconeus muscle. This is the normal anconeus, and this is the accessory anconeus muscle, which is compressing the ulnar nerve. Radial nerve. The radial nerve originates from the posterior cord of the brachial plexus with the root values of C5 to T1. It travels through the axilla, winds around the humerus in the spiral groove, and enters the anterior forearm to divide into deep motor and superficial sensory branches. The radial nerve can best identified at the level of the radial head, where you can see superficial and deep branches in the radial tunnel. This is the these are lying medial to the brachioradialis muscle. This is a very consistent place to find the radial nerve. The deep radial branches form the posterior interosseous nerve, which penetrates the supinator muscle at the arcade of Frost, also known as supinator arch, a fibrous tendinous arch at the proximal edge of the head of the supinator muscle. This is the supinator muscle. On the upper left T1 image, there is high signal seen within the extensor muscles with loss of muscle bulk, which indicates fatty atrophy. The axial image on the upper right shows a mass more proximally in the supinator muscle, which appears as hyperintense. On sagittal images, confirm that this is the lipoma. This is the T1 image where it it is hyperintense and suppressed on fat set images. And this lipoma is compressing the radial nerve. Median nerve. The median nerve originates in the axilla from the lateral and medial cords of the brachial plexus with the root values of C6 to T1 nerve roots. It courses straight down the arm to the cubital fossa. Notably, it does not give off any branches to the median to the arm. The median nerve goes down behind the laceratus fibrosus, which is the aponeurosis of the biceps, and penetrates the pronator teres muscle. This is pronator muscle. Here it is penetrating the two heads of the pronator. Nerve pathology. Denervation. Nerve pathology can present as thickening of the nerve when there is neuritis or as a result of compression of the nerve. A secondary sign of nerve pathology is denervation with edema and or atrophy of the muscle. In this case, there is chronic atrophy of the high signal on T1, which is irreversible. This one is the chronic. In early or subacute denervation, the prominent sign is edema with high signal on T2, and that is reversible. This is a 48-year-old male with Marfan syndrome who had a sudden onset of right hand weakness. This is an example of subacute denervation. Notice that on T1 image there is no atrophy. Only edema seen on T2-weighted images, and this was due to proximal radial neuropathy. Soft tissue masses.
Around the elbow joint, all kind of soft tissue masses can occur, which are also seen in other places. If you cannot make a specific diagnosis, just call the mass indeterminate and do a biopsy, because in many cases you cannot tell the diagnosis. Only make a diagnosis when you are sure of a specific diagnosis like bursitis, AVM, lipoma, PVNS, or cyst, hematoma. Here is a 37-year-old male who presented to the emergency department with pain, swelling and the mass at the left elbow that had been increasing over the last 3 weeks. On MR, a mass was seen just above the medial epicondyle where the epitrochlear lymph nodes live. The mass is very heterogeneous as the enhancement is heterogeneous. Based on MR findings, still to call this mass is indeterminate. The final diagnosis was case straight disease based on high Bartonella-Henry titers. 26-year-old female who came with the mass in the peritrochlear region. It looks like homogeneous and cystic on T1 and STER images. This is the T1 which and appearing is low on T1 and hyperintense on STER. The post-gate image notice inhomogeneous enhancement. This is the inhomogeneous enhancement on post-contrast images, and on ultrasound it shows vascularity, and the final diagnosis was lymphoma. This is the image of an oval lesion which looks like a schwannoma because it is elongated and it looks like if it follows the nerve, but it turned out to be synovial sarcoma in an 11-year-old boy. Thank you. Thank you, Dr. Kavita. Now I would like to invite Dr. Sadat Nasir to present her talk on MRI spine, degenerative, infectious and cord pathologies. Spine. Assalamu alaikum. I am Dr. Sadat Nasir. Today I will present spine, MRI spine to you. Why we do MRI spine? There is a list of indications. There are degenerative diseases, spinal trauma, tumors, inflammatory autoimmune conditions, infections, and there are vascular malformations, infarction, syringohydromelia, or there could be complications of spinal surgery. So I will go by MRI planes of spine, MRI sequences, anatomy, and common pathologies. Why spine MRI are universally performed? We use 3 standard orthogonal scanning plans: sagittal, axial, and coronal. The breakdown how the spine is evaluated: sagittal plane, it is a side view. It divides the body vertically, providing a side profile. Why it is used? Ideal for looking at the entire curvature of the spine. It evaluates vertebral body heights. It assesses the spinal cord and observes the alignment of the discs and vertebrae. It is a sagittal image. Then here comes the axial plane. It is top down. It is like you are looking at the patient from its feet, and it divides the body horizontally, providing cross section. Its primary use is for pinpointing nerve root compression, identify the exact direction of disc bulge or herniation, and measure the diameter of spinal cord in case of spinal stenosis. And this is the axial image. Then coronal plane, what it shows, it divides the body from front to back, as if you are facing the patient. Its primary use is to evaluate for lateral side-to-side curvature like scoliosis. So this is the axial image. You can see in the graphic, it demonstrates the cross-sectional anatomy. You can see the spinal cord, the vertebral body. Here there are denticulate ligaments. You can see the nerve root sleeve contiguous with the dura mater.
Here is the MRI image. It is from the cervical spine MRI. It is axial image, and you can see the denticulate ligaments, and you can see the cord. Then comes the sagittal. In the graphic image, you can see the dura, extradural compartment, arachnoid and subarachnoid space, and pia mater. This is the full length spine. T2 is on the left side and T1 on the right. Then comes the coronal. In coronal sections, you can see these demonstrate the relationship between the dura and nerve roots, and you can see the root or sleeve exit spinal canal just under the pedicle of the same numbered level. So which sequences we are using in MRI protocol in spine in our department? There are T1 weighted sequences. What it shows, it shows excellent anatomical detail, highlights fat brightly, making it to go-to sequence for examining the bone marrow inside the vertebra. How to spot it? CSF surrounding the spinal cord will be black. Okay, I have just mismanaged the images. This is the sagittal image of MRI T1, and this is the T1 axial. Its clinical use is to evaluate bone structures, fatty replacement, or marrow disorders. Then comes the T2 weighted sequence. This is a fluid-rich tissue. It is highly useful for diagnosing pathology, as inflammation and edema show up as very bright on T2 weighted images. How you spot it? You have to spot it by using the fluid and CSF surrounding the spinal cord. Clinical use, it is the workhorse sequence for spotting disc herniation, spinal stenosis, and spinal cord compression. Then we used stir sequences in some cases. It suppresses the bright signal of fat. You can see here you can see the fat, while in this image you cannot see the subcutaneous fat, and only if there is any edema or any pathology it will stand out. Then comes the post-contrast sequences. Usually T1 sequence is used for an intravenous contrast dye. Gadolinium is administered. How to spot it? The areas with increased blood flow will light up brightly. You can see what its clinical use. You cannot see pathology in this plain T1 image, but on the T1 post-contrast image, the abnormalities stand out. This is normal cervical spine MRI. Sagittal sections, you can see the alignment normal with preservation of the body heights, and you can see this is T1, T2, and star images. You can see CSF is black on this, and CSF is white on this, and on this image, the subcutaneous fat is suppressed. In this, we will see the alignment, if there is any fracture, if there are posterior disc bulges, or some other pathologies. This is also T1 image of the cervical spine, and this is MRI image of the cervical spine. Here you can see some disc bulges which are causing compression effect over the adjacent spine. Normal thoracic spine will appear like this on sagittal sections. You can see all the sequences T1, T2, and star images. There is no pathology in these images. And on MRI, you can also see the prevertebral tissues, soft tissues. You also have to pay attention to them. You can see a small hemangioma, intraosseous hemangioma here on this stir sequence. Sometimes they are present at multiple levels. This is normal lumbar spine, how it appears. These are the axial images, and these are sagittal images. We usually work on these two. So this is my spine introduction. Spine is a complex structure, as you all know. It supports and protects the spinal cord, and it is a hematopoietic apparatus. You have to understand the radiological anatomy of spine and spinal cord to aid the diagnosis and management of various neurological and orthopedic conditions. Image-guided interventional procedures also play an increasing role for the management. So we will go to the anatomy. There are spine regions. You know, vertebral column consists of 33 vertebrae. The red ones are cervical vertebrae. The turquoise one are thoracic one. And then yellow is the lumbar spine. And down there is pink. This is the sacrum. So our typical vertebral body consists of, this is the vertebral body. Then comes the lateral mass. There are pedicles, there are transverse processes, and the spinous process.
CT gives you more anatomical detail of the bony structures, but on MRI too, you can easily delineate all the anatomy. And here you can see this is the spinal canal, and you can see the cauda equina here. Intervertebral discs, they are present between each vertebral body except C1 and C2. They act as a shock absorption and enables movement between adjacent vertebra. They are composed of annulus fibrosus and central nucleus pulposus, which is a fluid. This height decreases with increasing age. This is an annotated sagittal MRI of the cervical spine with the major midline ligamentous structures outlined. So you can see these ligaments. This is the posterior longitudinal ligament. Blue one is the anterior longitudinal ligament, and this peach one is the posterior longitudinal ligament. This green one is supraspinatus ligament, and here you can see this is the posterior atlantoaxial membrane, and down here this is ligamentum flavum. A lumbar spine MRI evaluates the vertebral bones, discs and nerve roots using T1 weighted, T2 weighted sequences in sagittal and axial planes. We have already learned that. So core lumbar anatomy, there are vertebral bodies T1 to L1 to L5. Then intervertebral discs are there, and spinal canal, which houses the spinal cord. Neural foramina, the small bony openings on the right and left sides of each disc level. We have to go to parasagittal planes on the right and left side to see the neural foramina. On a sagittal plane, I will show them to you. Ligaments and joints, ligamentum flavum supports the spine, while facet joints connect the vertebrae. This is the lumbar spinal ligaments. The anterior longitudinal ligament is orange, the posterior one is blue. There is supraspinatus ligament, which is green. Then is intraspinous ligament, which is pink, and the yellow one is ligamentum flavum. And you can see ligamentum flavum on this transverse section also. This is yellow here. This sometimes causes spinal canal stenosis. So this is an anatomy check. You have to pay attention to a prevertebral tissue also, like this is IVC. These are the psoas muscles. These are posterior spinal muscles. And this way you have to learn your anatomy before you are going to spot out the pathology. Spinal canal and intervertebral foramen. Here you can see intervertebral foramen, and you can see the spinal nerves going out through these. These spinal nerves have a fat sleeve around them, so they can pass through them easily. But in case of spinal canal stenosis or disc dehydration diseases or prolapses, these are compromised. The fat behind them obliterates, and they have impingement or compression effect over them. This is the volume rendering image, and this is the MRI image. So we will learn about degenerative spine diseases. There is disc dehydration. There are 5 stages. You can see all of them. This is normal. This is slightly normal. Here you can see the signal has lost, and here some height is also lost. It is grade 4 advanced. Inhomogeneous dark gray signals merging the annular nucleus and annuluses. You cannot differentiate between the two of them. Then comes the grade 7 collapsed disc space with a black signal. Degenerative spinal disease or spinal stenosis, why it happens? Disc herniation could be a cause, disc extrusion, sequestration, foraminal stenosis, osteoarthritis, spondylolisthesis, trauma or injury, or structural abnormalities. Any could be the cause of a spinal stenosis. So what terminology we are looking at? We are looking at spondylosis, a general term for age-related wear and tear affecting spinal discs, joints and bones. Degenerative disease, conditions where the discs lose water content and cause them to shrink, darker or MRI or bulge. Then there are osteophytes, which are bone spurs. Stenosis is there, narrowing of the spinal canal, disc bulges are there. Spinal canal stenosis, this is the normal canal. You can see it is well lineated, and here you can see there is ligamentum flavum. This is the ligamentum flavum. Here, this is normal here, but here it is hypertrophic, causing compression effect over the spinal canal, resulting in its narrowing, and there is crowding of the cauda equina. There could be a facet joint arthrosis, or a synovial cyst can be there, which is causing compression effect on it. Then there are 4 levels of nerve compression. These levels are disc level. The nerve can be compressed at disc level. Lateral recess, below the disc where the nerve runs more laterally. Here in lateral recess, mostly the stenosis is caused by facet joint arthrosis or ligamentum flavum hypertrophy or lateral bulges of the disc. Then there is foraminal level.
where the nerve leaves the spinal canal, which I showed you on parasitital images. And this also happens in facet joint arthrosis, spondylolisthesis, or foraminal disc herniation. Then there is extraforaminal. These are lateral to the foramen. So how you will spot these things? You have to study first sagittal T1. You will see the prevertebral tissue, bone marrow end plates, and 4 levels of compression. Then correlate it with T2 weighted images. This is at the disc level. You can see the disc bulge. It is causing compression effect over anterior thecal sac and resulting in mild narrowing. Then this is lateral recess. Here you can see the lateral recess is compromised. Here you can see it is compromised at the foraminal level, and here it is compromised at the extraforaminal level. Now disc herniation, there are contained herniation if the displaced portion is covered by outer annulus fibers, and sometimes these shows protrusion. Here you can see this is the normal disc bulge. It is kidney shaped bulge here, but when there is a diffuse disc bulge, you can see on these graphic images also. And here it is shown the left lateral bulge, but here it is showing a diffuse bulge which is causing compression effect over anterior thecal sac. Then the findings at different levels are at the level of the disc, narrowing of the disc, minimal spinal canal narrowing, then a bulging disc and facet joint arthrosis. Facet joint arthrosis can be learned by there is a tiny sleeve of fluid within the normal facet joint, but when this obliterates, this is facet joint arthrosis on MRI. An annular tear through which the disc herniates here, and then at the level of lateral recess, focal herniation of disc material compressing the L5 nerve, extrusion. Now comes the concept of disc extrusion and protrusion. What is protrusion? Protrusion is when the distance between the edges of the disc herniation is less than the distance between the edges of the base. This is disc herniation. So edge is taken to be from here till here. It is narrower than the wider it is. While in extrusion, this distance is less and this distance is more. Disc protrusion, here you can see a wide base disc protrusion here. On the sagittal images, it will look like this. And on axial images, you will come to know in this, you cannot tell that it is right-sided or left-sided or central. But on the axial images, you can say that it is right paracentral bulge. Then comes the disc extrusion, it is here. I could not find a good image, so you can, check it out. And this is the disc extrusion. Then there is a concept of disc sequestration. Sequestered disc is free disc fragment correspond to extruded disc material that has no continuity with the parent disc and displaced away from the site of extrusion. You can see it is not continuous with the parent disc. It is lying freely in the spinal canal, causing compression effect over adjacent nerve roots. Then there are annular tear. For annular tear too, you have to see the sagittal image and then you have to collaborate it with the axial images. You can see a very tiny, thin, hyper-intense focus here, and you will see that it also comes on this. Then you can label it that it is an annular tear. Otherwise, sometimes there is a vessel going on which can show a hyper-intense signal, but it is not confirmed on the axial images. Then comes the cervical spine degenerative disease. I have told you about the lumbar one, and in cervical canal, disc bulges, there are usually disc osteophyte complexes which causes compression effect over the adjacent spinal cord, and sometimes it results in myelopathy. And on the axial images, they look like this. They will obliterate the lateral recess and cause compression effect over the traversing cord. This is foraminal stenosis. You can see I have shown you on the parasitital images, this is the fat surrounding this, and this way the nerve is compressed by any of the above mentioned or priorly mentioned causes. So here is a disc herniation with upward migration. Okay, here is a disc with upward migration. This is an extrusion and it is causing a compression effect on the extraforaminal part. This is an extraforaminal protrusion also. Facet joint arthrosis and ligamentum flavum hypertrophy, even though I have already told you, let's see it once again. This is a facet joint arthrosis and this is a ligamentum flavum hypertrophy. Here you cannot see any ligamentum hypertrophy. The ligament is a
fibrous structure, so they appear black on all MRI sequences. Here is a patient with severe facet arthrosis on the right side at the level 4, and it is causing significant compression effect over the traversing nerve roots and resulting in radiculopathy. There is another cause, fractures, which can cause stenosis of the spinal canal, especially when there is displacement of the bony structure. Here you can see the normal body, but this body is totally collapsed. This is a burst fracture, and its posterior part is causing compression effect over the adjacent spinal canal. Here there are osseous metastases. Metastases also cause compression effect over the cord and result in spinal stenosis. There are modic changes, modic type 1 changes. They appear dark on T1 as water appear dark on T1 and hyper on T2. Here you can see this is dark on T1, hyper on T2 and hyper on stir. These are modic type 1 changes. Then modic type 2 changes, these appear hyper on T1 and T2 both. Here you can see these are modic type 2 changes. Then comes the modic type 3 changes, these are fibrous changes, so it will come low on both the sequences. These are dark on both T1 and T2 images. Then comes the spondylolisthesis. Spondylolisthesis is the forward displacement of one vertebra over the one below it, and it occurs in pars interarticularis of the neural arch. On the X-ray you can see the forward movement of vertebra on its underlying vertebra, and on MRI it will appear like this. And this is corrected case, and this is this also has grades. You must be familiar with those. This is also spondylolisthesis resulting in nerve compression. This is the severity of spondylolisthesis. It is graded from 1 to 5, and this is the normal one, and this is the grade 4 spondylolisthesis. Then comes the trauma. There is subtle trauma. You can see mild hyper T2 hyperintense signals within it. Within the vertebral bodies, this could represent stress fractures, and here you can see these are osteoporotic collapses. This is showing bone edema. Here there is bone cementing done from an older collapse, and here there are fibrous changes. There are vertebral fractures with retropulsion of the fragment, which we have already talked about. The posterior corner is retropulsed into the spinal canal, causing significant compression effect over the spinal cord. The most common cause of myelopathy is cord compression, as seen in trauma, metastatic disease, and epidural hemorrhages. Here you can see MRI demonstrate rupture of the flaval ligament, interspinous and supraspinatus ligaments. So in this way MRI can help you to see the trauma cases. There are infections. There are spinal infections which can affect any part of the vertebral column, vertebrae, intervertebral discs, and surrounding soft tissues. And these infections are vertebral spondylodiscitis, aseptic arthritis, or epidural abscesses. MRI is the most sensitive and specific modality, allowing visualization of the purulent collections, bone marrow edema, and involvement of the adjacent structures. So this is the sign of infection on non-contrast. How you will appreciate this, that you will see the hypointensity in the vertebral body on T1 and T2, it appears hyperintense. On T1 it appears hypointense, and on stir images it is also showing hyperintensity. So you will come to know that there is some problem with the vertebral body, and you have to do or order a contrast enhanced spinal MRI. Here there is epidural fragment with multiple epidural abscesses. Here you can see this is all high signals in the muscles in the perivertebral region, posterior spinal muscles, and in the psoas muscle. This is the psoas muscle, and these are the posterior spinal muscles. So we have hyperintense signals on all of them, and we can see there are epidural abscesses because this is the spinal canal, and we can see contrast is enhancing collections in the spinal canal. So this is associated with small paraspinal musculature abscesses, and it is diagnosed as septic arthritis of the right L3-4 facet joint. Then comes a tuberculous spondylitis. We are all familiar with this, and it is very common in our country. And this is another case of tuberculous spondylitis with psoas abscesses, and there are other pelvic abscesses they are continuous through into the posterior spinal ligaments also.
Okay. And we can see there are multiple abscesses, and we can see here the disc is narrowed. You can see the remaining discs, they are normal in size, but here this disc between L5 and S1, this space is destroyed, and it is filled with peripherally enhancing fluid that is communicating with presacral and pre-spinal collections. This is spondylodiscitis. Here you can see there is abnormal signals based on the L4-5 intervertebral disc along with the vertebral bodies. This is an inflammatory process involving the vertebrae and plates with associated destruction of vertebral end plates. Marginal osteophyte with enhancement in post-contrast images and extension of enhancement to the paraspinal region. Here you can see this is the post-contrast image. Here we can not see the pathology clearly, but after the contrast it stands out, and same is the case with the T1 sagittal and T1 post-contrast sagittal images. These are the spinal epidural abscess. You can see there is an abscess at this level causing significant compression effect over the adjacent spinal canal. Then there are vertebral tumors and tumor-like lesions. These are not of your interest, but still they are demyelinating, or there could be some tumors, vascular, inflammatory, or infections. We have to do a systemic approach. There could be short segment or long segment. If there is short segment, we will think about multiple sclerosis and transverse myelitis, or long segment, we will think about ischemia, transverse myelitis, and all these cases. This is the transverse involvement of the cord showing different pathologies. And here we can see intraspinal tumors. Here there is a tumor. This is an astrocytoma, which is diffusely infiltrating tumor. So we cannot just figure out one lesion. The cord is diffusely swollen and showing hyperintense signals. This is syringomyelia. The spinal canal, central canal is filled with fluid resulting in obstruction, and it is showing dilatation. And when we give the contrast, it is enhancing and showing the tumor. And these are other tumors. These are not very stand out on T2 weighted images, but after contrast they are appearing more conspicuous, and these are ependymomas. Then comes the vertebral metastasis. These are the metastatic lesions which affect the vertebral bodies, as well as they can cause significant compression effect over the adjacent canal. These are also metastatic deposits. Metastatic deposits also appear hypointense on T1 and hypointense on T2 weighted images, and after contrast we will come to know if they are enhancing that these are metastatic deposit. Then comes the multiple myeloma. In this you can see all the vertebral bodies have very dark signals, even though when you see the normal vertebral bodies, they have to be like this, but in this they have lost all the fat. This is multiple myeloma because it is a tumor based on the hemopoietic apparatus, so it has involved like this. And in this case, the diffusion restriction will help us. This is a diffusion restriction sequence which is showing enhancement, or which is showing diffusionally restricted area. Then arterial infarctions are there. This is arterial infection shown. It will come on the transverse like this, eyes of owl appearance. And then the patient has visual disturbances. Here the cord was these are multiple sclerosis lesions. And then comes the ADAM, and this is ADAM. In this there is no single lesion, just 3-4. This is diffusely swollen, and then this is a typical case of transverse myelitis in which long segment involvement of the spinal cord is done. These are some vertebral tumors which are of your interest. There is a chordoma here. It is involving the tip of the sacrum and coccyx. And they are vertebral venous malformation. This is the hemangioma, intraosseous hemangioma we have already talked about. There are interventional procedures in which you can do the MRI to see the post-surgical complications. So this is a post-surgical complication, dural leak in a patient with post-operative headache, and then they come to know first initially it was small, and then with time it progressed into this lesion. And this is also a post-surgical case in which you can see there is a complication over it. There is arachnoiditis. You cannot see any of the chorda equina. They are all plastered posteriorly.
So take home message is that T1 weighted is the core sequence. It is best for anatomy and bone marrow, while the T2 weighted image sequences are best for pathology. You have to learn your anatomical landmarks, learn where conus medullaris ends and nerve root naming, and clarify the disc nomenclature. Thank you very much. Now for the case-based discussion on spine, I would like to invite Dr. Abel. Please come on stage. क्या बात है वैसे अगर आप यूज़ करना चाहें इसको प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Abel Akbar. I'm assistant professor in neurosurgery, and I had prepared multiple cases, but since we're short on time, we'll just discuss the most common. So this is the first case, and this is an interactive session. I will encourage everyone to, especially the orthopedic residents who are preparing for the exam, to interact and actively participate in the session. So this is a 35 years old male who presented to us with complaint of a lower backache which radiated to the left leg for 6 weeks. The pain exacerbated on prolonged sitting, and the pain gets a little better in activity. So what are the further questions that you would like to ask this patient? If this patient comes to you in your clinic, what are the different differentials that are going through your minds, and what are the different questions that you will ask this patient to make sure that you get a proper differential? So what are the differentials that you mostly think of when a patient comes to you with a low backache? So the patient has a radiculopathy. What are the main causes of radiculopathy in a patient who has a low backache and a left leg radiation? Differentials. Can be disc herniation and can be spondylolisthesis. So first would be a disc herniation. Fourth or fifth would be spondylolisthesis, and in between muscle spasm. So the first thing that I would like to do is I would like to make sure if this patient actually has a nerve compression or it is something which is mimicking a nerve compression. So whether it is a true radiculopathy or it is something which looks like a radiculopathy which is not a radiculopathy. So what are the different questions that I would like to ask this patient to rule this thing out? I'll ask the patient. So let's first focus on the pain, right? So what are the different questions in different scenarios and in different cases, and how does this pain changes according to those? So what my top differentials would be in this case would be a lumbar disc herniation. It can be a muscle spasm which is extending into the leg as well. And it can also be a lumbar stenosis. The patient can also have facet joint issues. The patient can also have SI joint issues. And what are the different questions that I would like to ask this patient to rule this thing out? So when we're talking about pain, I usually still follow the Socrates thing that we follow from, right? So site, onset, correct, all of these are very important. If a patient has a low backache, and the onset, if it is acute and if it is chronic, the differentials would change according to this. So let's say this patient has left leg pain for 6 weeks, but if the same patient comes to you with an acute pain for the past 2 days, will the differentials change based on that? Yes. What will be the top differential? Disc prolapse. Can be disc prolapse, or it can be trauma and cardiac myopathy, okay, or muscle spasm. But these are the same things that you just told me. So what is the difference? These are the first differentials that we have before as well. It can be an abscess, it can be a fracture because we have not ruled out trauma yet. So it can be a traumatic cause.
But still, if there's radiculopathy, then we have to make sure, we have to keep, even in acute setting, we have to keep disc herniation on top. So let's say this patient has pain with a chronic insidious onset starting 6 weeks prior, it is progressive, and at this moment in time, it is increasing progressively. The pain is increasing, right? So the radiation is to the leg, but the next question would be where it is radiating, and that will eliminate most of the differentials. So this patient told me that the pain is radiating to the calf or maybe to the side of the foot, which differentials are now eliminated in this case. Usually with SI joint pathologies or facet pathologies, the pain radiates to the back of the thigh and not below it, usually, most of the times. So in this case, I can somewhat, because in SI joint pathology and facet arthropathies, nerve roots are not being compressed. It is a joint pain and the muscle spasm which is causing the pain. So in these pathologies, the pain usually either radiates to the buttock area or to the posterior thigh. It does not go below the knee. If this patient is telling me the pain is radiating to one side of the foot, on the left leg only, then I will keep disc herniation on top. Why am I not keeping stenosis on top in this case? Why is lumbar stenosis my second differential, not the first? What are the symptoms of lumbar stenosis? Sorry? In lumbar stenosis, pain can be unilateral or bilateral, but mostly it is bilateral. But what is the main symptom that a patient presents to me with? Neurogenic claudication. What is neurogenic claudication? When the patient is moving and walking, the pain gets worse. In this case, the patient's pain is getting better on activity and not worse. So in a patient who has lumbar stenosis and neurogenic claudication, the patient will tell me that when I'm walking, the pain gets worse. But when I come back and sit down, after a certain amount of time, the pain does not relieve, but it gets a bit better. And this is important because when we're differentiating from vascular claudication, the vascular claudication pain does get better immediately, right? So it is like within 5 to 10 minutes when the patient sits down, the pain gets better. But in the neurogenic claudication, the pain persists, it decreases in intensity, but it does not get completely better. So, and the pain relieves when the patient is sitting and bending forward. In this case, the patient's pain is exacerbating on prolonged sitting. Then I have to ask about other exaggerating factors as well, right? So in the lumbar disc herniation, in which nerve roots are being compressed, the pain will get worse on Valsalva maneuver. What is Valsalva maneuver? If the patient is straining, coughing, lifting heavy weights, the pain gets worse, right? So I have to ask about that as well. In the lumbar stenosis, it can get worse, might not get worse. So it's like plus minus. But in the patient who has disc herniation, the pain usually exacerbates when the patient is coughing or straining. What are further questions? Because this is important. In your history, you have to rule out red flags. What are the red flags of a spinal pathology? So weight loss, night pain. Why is night pain important? So night pain usually occurs when the patient has a tumor, usually an intradural tumor. Fever, night waves. Let's get back to night pain. So night pain gets worse. It usually occurs in patients who have a spinal tumor, specifically an intradural spinal tumor. And the reason for that is because of that tumor, there is, when the patient lies down at night, there is engorgement of the venous plexus surrounding the dura. And the tumor, since it is intradural, the dura impinges between that engorged venous plexus and the tumor itself. So the patient comes with you night pain. A patient with radiculopathy does not have night pain. A patient with tumor fractures can have pain because obviously it is mechanical, right? So when the patient moves, if the patient lies down, if there's pressure on that particular area, the patient will have tenderness, will have pain. But night pain is completely different from that. The patient will tell you that he wakes up multiple times at night. So we have to rule out night pain, we have to rule out weight loss, history of fever, chills, as well as TB contact history. Any other thing? Somebody said cardiac minor. So we have to ask about the bladder, bowel symptoms as well as anesthesia from this patient. So any patient who comes to you with a radiculopathy, you have to ask if the patient is experiencing any type of numbness in the legs, in the saddle area, or if the patient is experiencing any kind of bowel or bladder dysfunction. A lot of these patients initially come to us with constipation, right? So this is the earliest symptom. But in the patient who has a lumbar disc herniation, which is only compressing one nerve root and not the cardiac minor, as a whole, the patient will not have any of these symptoms. Nevertheless, you have to ask and inquire about it.
What about the examination? So what are the different things that will help me differentiate these different pathologies on my examination? So I will not go into the whole detail of it, because we know we have to go for the whole motor examination, the whole sensory examination. But what are different things which differentiate these pathologies from each other? Okay, so this patient, so how are we going to, if the patient is telling me that the pain is radiating to the left foot, what are specific dermatomes and myotomes that you will look for in that region? Okay, and L4, L5, L5S1, right? So how do you differentiate between L4, L5 and L5S1 on examination? I have a quick question. So if a patient has an L5S1 disc herniation, which nerve is being involved? And if a patient has L4, L5 disc herniation, which nerve is being involved? Okay, so what is L5 at L4, L5 level? Is it a traversing nerve root or is it an exiting nerve root? So most of the traversing nerve roots, they get affected. And the reason for that is because at the level of the disc, it is the traversing nerve root that is crossing the disc space and not the exiting nerve root. Okay, so exiting nerve root will only get affected if the patient has a foraminal disc. So in this case, this patient is telling me the pain is radiating to the left foot, to the lateral aspect of the foot. So which dermatome is this? S1 dermatome. So what are different things that I will do in my examination? Just name 2 or 3 because we short on time. So what are 2 or 3 things that I will do in this patient on examination? If this was a short case and I only have 1 minute left, what are 3 things that I will do to support my diagnosis? Ankle jerk, which will be diminished in the case of an L5S1 disc. What else? SLR. So what is SLR? Okay. Right. And in which disc herniations does an SLR occur? Not all disc herniations have a positive SLR. Which lumbar disc herniation? Not all lumbar disc herniations have a positive SLR. So usually the lower ones, right? So L4, L5 and L5S1. But if the patient does not have a restricted SLR, it does not rule out a disc herniation because the patient can also have a central disc. And in a central disc, the SLR usually is not restricted, right? So you will still keep it in your differential. If it was an L4, L5 disc, is there one test on examination that I will do to confirm this is an L4, L5 disc? Just one test. Sorry? Something else? I only have like 30 seconds and the examiner is saying just do one test. Which one will I do? I will check for toe dorsiflexion. Right? So in an L4, L5 disc herniation, the patient will have altered or diminished or weak or absent toe dorsiflexion. So on the examination, this patient had a straight leg raise restricted in left leg to 30 degrees. On the right side was completely fine. The patient was the power was 5/5 in both level limbs. However, the ankle reflex was diminished and the sensations were intact. So what is the next step now in this patient? We have done the history, we have done the examination. How will you investigate this patient? Okay, so usually we don't go for an X-ray, and even if in an exam setting, we don't say an X-ray first. We will go for the gold standard in this case. Because an X-ray is not really going to help me much. The patient is young. So I will go for an MRI lumbosacral. If this patient was old age, if it was like 50 plus, then I would also get an X-ray to see the state of the bone. But in a young patient who is only 30 years old and no other previous comorbidities, no history of trauma, I was to go directly for an MRI lumbosacral spine, right? So we have already, in the previous presentation, the MRI lumbosacral spine was very properly discussed, so I will not go into much detail. However, I want to see what surgically we look for in these patients to make our management plan, right? So do we go for surgery in this patient? Do we manage this patient conservatively? Can anybody describe this MRI? Which one it is? What is the image that we're seeing? This is the T2 weighted image, and this is which sagittal T2 weighted image of the lumbosacral spine, right? So what is the pathology that you see? So in an exam, when this case comes, usually what I do to describe this case would be this is an MRI lumbosacral spine T2 weighted image of patient XYZ showing this is L2, showing cuts from L2 to the sacrum, up to the sacrum. And in this we have to, so we have to address the elephant in the room, but we also have to comment on things which are normal.
right? So over here we can see that these vertebral bodies are completely normal in height. They don't have any abnormal signals, and these discs are properly well hydrated. You can see the surrounding annulus fibrosus and nucleus pulposus is well hydrated. However, on L5S1 level, you can see that this disc is dehydrated. It has different signals, right? So it has different signals from the rest of the disc. These rest of the discs are in alignment because they are within the intervertebral space. This person does not have any osteophytes, which is correlating with the age of the patient. So he does not have an anterior posterior osteophytes. The disc is hydrated, the heights are maintained. At this level, however, the disc is desiccated and the heights are low. And there's disc herniation, right? So on protrusion, usually we try it because there's only one slice, right? So we cannot say if it is extrusion, protrusion, or anything else. We need more films, and we need the axial cut of this image to further comment on it. However, at this point, there's a disc herniation at the L5S1 level, and this disc herniation, it is causing anterior thecal indentation. So you can see the nerve roots going from here, right? So these are the nerve roots of the patient, and this is the thecal sac. And the CSF signal within the thecal sac is maintained at all levels. This is not a stenosis. Why is this not a stenosis? So what are the signs of stenosis on an MRI? Usually stenosis, okay, so disc herniation we differentiated from stenosis. In disc herniation, there's only disc herniation. In a stenosis, there are multiple factors happening inside the disc space in that level of the spine, which actually narrow the canal, the diameter of that particular spinal canal, right, at the particular level. So the patient will have disc herniation, might have disc herniation, the patient might have facet joint arthropathies, the patient might have ligamentum flavum hypertrophies, the patient might have other pathologies. Sometimes the patient has a large amount of lipomas or fat inside the spinal canal which contributes to stenosis. Stenosis is better identified on an axial image. However, in this case, I can easily say there is no stenosis. Why? Because the theca is indented, it is not compressed. So this ample space, the CSF signal at this level is not lost. Posteriorly, this is the ligamentum flavum. The small triangle that you see here, this is the ligamentum flavum, right? And it is not hypertrophied at this level. So we can easily say that at this stage there is no stenosis, but we will correlate it with the axial image as well. So this is these images are important for us because we want to see if the patient's disc is foraminal or not. So these are the foramina. This is the right side foramina. This is the left side foramina. We have already discussed this in the previous, so I will not go into much detail. However, you can see over here that these are the boundaries of the neuroforamina. So anteriorly we have the lower body, the lower half of the vertebral body. We have the disc in the lower part of the anterior border of the neuroforamina. Superiorly we have the pedicles, and then posteriorly we have the facet joint, right? And inferiorly we also have the pedicles. So this is the neuroforamina. We have the nerve roots inside, and we have the fat sleeve inside as well. If there's a disc compression, the fat sleeve usually disappears. So you can see there's some amount of herniation at this level. However, I don't think this is a proper cut of the right side. It looks the patient is not properly, it's not a proper right-sided cut, right? So I cannot really comment if this is a disc herniation involving the right neuroforamina. It should be like this, right? And on the left side, you can see the disc herniation of the L5S1 is not encroaching the neuroforaminas as well, right? So the neuroforaminas bilaterally are somewhat clear. So this is not a foraminal disc. That's fine. So this is the axial cut. In my opinion, this is the best cut. This is the cut that you have to look if you want to decide the patient has to go for a surgical intervention or not, right? So this is the disc. It is desiccated. It is not hydrated. It's blackish in color, and a normal disc would have increased T2 signals inside the area of the nucleus pulposus. However, this disc is severely dehydrated. It is not maintaining its kidney shape, and you can see the disc is herniated more towards the left side as compared to the right side. The thecal sac is compressed anteriorly, and you can see the ligamentum flavum does not hypertrophy. The facet joints are normal. However, there is a disc herniation which is involving the central as well as the lateral recess. In the lateral recess, we have the traversing nerve root. Here, we have the exiting nerve root. Mostly, the compression in lumbar disc herniations is on the traversing nerve root and not in exiting nerve root, unless the patient has other things like a foraminal disc, spondylolisthesis, in which case exiting nerve roots get affected. In this case, the patient has a disc which is compressing the traversing nerve root. So now the question would be based on this, the finding that we are seeing, the patient does not have stenosis, right? So what is your management plan would be for this patient? Will it be management
Will we manage this patient conservatively or we go for surgical intervention? Usually we do go for surgical intervention, but there are certain questions that you have to ask this patient, right? So one of those questions will be if he has taken any conservative treatment for this prior to going for surgery. Because majority of the discs, 60 to 80% of discs do resolve, they don't completely disappear, but once the edema resolves in an acute setting, the disc size decreases. Once it decreases, the patient's symptoms get better. So we have to ask if the patient has taken conservative treatment, which includes rehabilitation as well, for this disc or not. If the patient has severe pain, if the patient's got equinus syndromes, if the patient has a failed conservative management, which is conservative management more than 6 weeks, then the patient should go for surgery. If the patient's symptoms show that the patient has some sort of weakness or diminished reflexes, the patient should go for surgery. So in this case, I would go for surgical intervention. Okay, so the discussion points, this is my last slide and I'll sign off. So discussion points would be, you have to make sure in your history that you ask for the red flags. You have to decide whether the patient's, according to his history, examination and radiological findings, should be managed conservatively or surgically. And if it is a conservative plan, what is conservative management that you're opting for, what will be your conservative plan for the next 6 weeks, and the indications for microdiscectomy. Any questions? Okay, thank you. Thank you, Dr. Abil. Now, I would like to invite Professor Adil Ahmed Siddiqui to present his talk on MRI in bone and joint infections. अस्सलाम वालेकुम। थक गए होंगे आप लोग। मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत बेसिक है और लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसके बाद जो प्रोफेसर बदर हैं उनकी टॉपिक ज़रा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की ज़रूरत भी है एग्ज़ाम के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि इम्पॉर्टेंट्स में से स्लाइड्स आपको बता दूँ। होपफुली मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजी दो एक ये इन्फेक्शन या पॉइंटर भी ऑन कर देना सर। उसी चल रहा है, चल से चाहिए तो नहीं, बस ठीक है ठीक है। अब ये सब तो आप सुबह से पढ़ चुके हैं, कुछ स्लाइडें तो हम इसमें सब मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मैंने जो ये चीज़ें की थी वो फ्रॉम ABC है। ये जब भी स्टार्ट किया जाता है किसी को टीचिंग के लिए तो स्टार्ट तो वहीं से करना है। अब क्योंकि इन्फेक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन हुई नहीं है तो हमें स्टार्ट तो ABC से करना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से बेसिक सी चीज़ें आपके लिए निकाल लें ताकि आपको कुछ कम से कम बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम में जो है ना एक्चुअली अप्रोच कैसे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपको MRI जब अप्रोच करना है तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जो ना किसी को लिखना ही नहीं आता कि MRI क्या भेजना है। जब आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहते हैं कि भाई कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है MRI, मैंने अब मैं कहता हूँ भाई इस पर लिख के दिखाओ कौन सा MRI करना, क्या करोगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। मैं लिखवाता हूँ और भी बहुत सारे एग्जामिनर्स हैं जो कहते हैं कि भैया जब आपको लिखना ही नहीं आता, सेंड करना ही नहीं आता तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जो मस्कुलोस्केलेटल, बाकी तो MRI डिस्कस हो चुके, तो मस्कुलोस्केलेटल MRI जो इन्फेक्शन में होता है उनमें क्या चीज़ लिखा जाती है, तो ये है इस तरह से आपको लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है। जब भी लिखें विद और विदाउट कंट्रास्ट, जो भी हो आपको कंट्रास्ट से करना है तो कंट्रास्ट से करेंगे, ठीक है। टिबिया, फिबुला, फेमर, नी, सर्वाइकल, मतलब जहाँ PB है जो आपको करना है। जब इन्फेक्शन की बात होगी तो आपने कोशिश करें कि कंट्रास्ट के साथ हो, ठीक है। और अगर कंट्रास्ट कंट्राइंडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल है जो होते हैं समटाइम्स।
कि अगर कंट्रास्ट कंट्राइंडिकेटेड है तो फिर क्या किया जाए, तो फिर कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, ठीक है। तो वो भी आपने तो जो है उन्होंने जो बेसिक जो इन्फेक्शन के जो कंट्रोल्स होते हैं ये चीज़ चाहिए ही चाहिए आपको। T1, T2 स्टेर, T2 फैट सेट और डिफ्यूजन वेटेड और ADC इमेजेस, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं। ये बेसिक नॉन कंट्रास्ट प्रोटोकॉल होते हैं। जब आप भेजते हैं MRI के लिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना, जिससे आप स्क्रीनिंग स्टडी, वो सिर्फ T1 T2 होती है, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे फुल स्टडी चाहिए, ठीक है, तो फुल स्टडी के अंदर ये बेसिक ये सारे सीक्वेंस दे देंगे वो। लेकिन विद आपने कंट्रास्ट जब तक लिखेंगे नहीं ना, तो वो कंट्रास्ट करेगा नहीं, ठीक है। अब समटाइम्स हम लिखते नहीं है, वो उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो खुद ही कंट्रास्ट वो भेज देते हैं कि यार नहीं आपको हर सूरत में कंट्रास्ट करना है, वरना तो कंट्रास्ट के बगैर हम नहीं करेंगे। अब उसके पता है आपको कि इसकी प्राइसेस फ़र्क हो जाती हैं कंट्रास्ट के साथ, और कंट्रास्ट के अंदर एलर्जीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रीरिक्विजिट होती है। तो हम पहले ही से ही पेशेंट को ये सब चीज़ें करके भेजेंगे। अगर इन्फेक्शन के लिए जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कंट्रास्ट के साथ ही भेजें, ठीक है। और वो फिर क्या क्या प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। तो T1 स्टिर, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो लोग प्रोटॉन PD इमेजेस करते हैं, प्रोटॉन डेंसिटी फैट सेट इमेज, ये इस पर ही कर लेते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि T1 और T2 पे हम 80% इन्फेक्शन डायग्नोस कर लेते हैं। और ये जो स्टिर इमेज है, जो स्टिर इमेज कहलाता है, जब तक आपने पढ़ लिया कि कैसे होते हैं, उसके अंदर फिर मजीद हो जाता है। और बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना हो तो PD इमेजेस आ जाते हैं। तो व्हाट इफ कंट्रास्ट इज कंट्राइंडिकेटेड, तो कम से कम हमें चाहिए क्या, T1 T2 स्टिर और डिफ्यूजन वेटेड और DC मैप, ये तो करना ही करना है उसने। अगर आपने कंट्रास्ट कंट्राइंडिकेटेड है तो ये सीक्वेंस वो फॉलो करेगा। अगर कंट्रास्ट नहीं, इस पे भी 80 to 90% इन्फेक्शन पता चल जाते हैं मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है। तो ये तो टर्मिनोलॉजी अभी तक आपने पढ़ ली सुबह से लेके। लेकिन जो इन्फेक्शन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो ये सारी टर्मिनोलॉजी, जब भी MRI इन्फेक्शन का आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी जब मैं आपको आखिरी स्लाइड दिखाऊंगा, जो कि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग होती है। इससे ज़्यादा तो बोलना भी आना चाहिए कि MRI में क्या है, हाइपोडेंस, हाइपो इंटेंस, ठीक है, हाइपर इंटेंस, ठीक है। CT में कुछ बोलना है, MRI में कुछ बोलना है, ठीक है। डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन, अगर कलेक्शन आ गई है, एब्सेस आ गया, मिल गया आपको, तो क्या पढ़ लेंगे आपने। तो ये तमाम टर्मिनोलॉजी है जो जहाँ पे आपको ये बोला जाता है, और यही बताते हैं रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब किसी ने बोला था कि भाई अगर इम्प्लांट है तो फिर क्या किया जाए, तो क्या किया जाता है, फिर हम कहते हैं MRI कंपैटिबल, चेक द इम्प्लांट विच शुड बी MRI कंपैटिबल। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या, जिस तरह डिस्कशन हो गई थी कि टाइटेनियम जो है या कोबाल्ट क्रोम है, ये दीज आर MRI कंपैटिबल है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, फिर क्या किया जाएगा। फॉर एग्जांपल तो ज़ाहिर है आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आप नहीं है, MRI सेफ होना चाहिए आपको, ठीक। लेकिन स्टिल MRI कंपैटिबल प्लांट के अंदर जो है क्या क्रिएट करता है, आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करता है। तो हमें जो टेस्ला मशीन यूज़ करते हैं वो कम पावर की, यानी कम सीक्वेंस की, 1.5 टेस्ला की पावर की जो है MRI यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट ये देखिए सीक्वेंसेस हैं जो कि मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टेक्निक्स कहलाती हैं, ये यूज़ की जाती हैं जो रेडियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें मार्स है, सीमैक है, मैवरिक है और स्पिन इकोज इमेजेस हैं। तो ये वो करके आप लोगों को बता देते हैं कि यार ये इसमें क्या इश्यूज़ हैं। बल्कि अल्टरनेटिव इमेजिंग अगर नहीं है, अगर कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आपके पास CT है, बोन स्कैन है, पैट स्कैन है इन्फेक्शन के लिए, सही है। अब यहाँ तक बात तो समझ में आ गई ना आपको। अब हम जब मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन की तरफ आते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, इन्फेक्शन इन द बोन और इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। तो अगर इन्फेक्शन इन द बोन में हमने देखना है, स्टार्ट हम करेंगे बोन से ही, ठीक है, फिर सॉफ्ट टिश्यू, कोई सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यही रेडियोलॉजी भी फॉलो करते हैं, हमें भी यहीं से बोलना है। अभी हम आगे बताएंगे भाई किस तरह से आगे चलना है। तो बोन मैरो एडिमा मिलेगा, सबसे पहली चीज़ देखेंगे कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन है कि नहीं है, सिक्वेस्ट्रम है कि नहीं है, इन्वर्कुलम है कि नहीं है, एब्सेस फॉर्मेशन है कि नहीं है बोन के अंदर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है इन्फेक्शन के अंदर, ठीक।
सॉफ्ट टिश्यू में सेल्यूलाइटिस, मायोसाइटिस, एप्सिस, साइनस ट्रैक्ट। अब इसकी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं, वो मैं अब डिटेल में इतना टाइम नहीं रह गया कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि किस तरह आपको फॉलो करना है। ये एल्गोरिदम है जो आपको जब भी कोई MRI करेंगे, स्पेशली द इन्फेक्शन रिलेटेड, आपको ये एल्गोरिदम आपको फॉलो करना है। तो उसमें आपको जो है क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, इसके बगैर तो आपने खोलना ही कुछ नहीं है, ठीक है। जो रेडियोलॉजिस्ट है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजें तो प्रॉपर क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। हम क्या भेजते हैं, हम लिख के देते हैं MRI ये कर दें। जिस तरह आप हिस्टोपैथोलॉजी भेजते हैं उसी तरह ही आपको इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल भेजनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप नहीं भेजेंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। वो ये करता है, अगर अच्छा रेडियोलॉजी या अच्छा सेंटर है तो वो फिर खुद फ़ोन करके पेशेंट को बुलाते हैं, कहते हैं यार बताओ हिस्ट्री दो। अदरवाइज बिल्कुल ये भी आप ब्लाइंड है, आप इस पर 100% नहीं कर सकते। वो क्लिनिकल हिस्ट्री जजमेंट सारी होती है, जैसे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है वो सारा कुछ जजमेंट करता है, रेडियोलॉजी सब कुछ मंगाता है, इसी तरह रेडियोलॉजिस्ट भी इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉलो क्या करना है, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। जब भी हम MRI पढ़ेंगे, एग्जाम में भी आएगा, तो ये सीक्वेंस इस तरह फॉलो होंगे जिस तरह ये लिखे हुए। जो ऑर्थोपेडिक जो रेजिडेंट है या जो रेडियोलॉजिस्ट है, उसको क्या चीज़ 6 क्वेश्चंस आंसर करने हैं कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं है, इन्फेक्शन कहाँ है, हाउ एक्सटेंसिव, एब्सेस इज देयर, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट इज देयर, एंड व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ द एक्सक्लूजन। क्या हो सकते हैं डिफरेंस ऑफ द एक्सक्लूजन? मोस्ट कॉमन इज अ ट्यूमर और इन्फ्लेमेशन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्यूमर, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशियल करने हैं। तो आपको ये आंसर अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप अच्छी रिपोर्टिंग कर लेंगे। जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। तो ये तो आपको पता चल गई। तो क्लिनिकल हिस्ट्री में आपको सबको पता होना चाहिए, हिस्ट्री तो लेनी है आपने, ये क्लिनिकल क्लूज। अब स्टेप 1, जब भी आपको हिस्ट्री ले लिया, अब आपके पास अब एग्जामिनर ने लगा दिया कि भाई MRI बताओ, तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? आपको रीजनल एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन है। तो MRI के बारे में आपको बताना होगा कि कौन सी रीजन की एनाटमी है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली उसका नाम भी उस तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन की एनाटमी है। स्टेप 2, प्लेन्स, जो तक अब तक आपको पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी प्लेन्स हैं, ठीक है। तो मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये 3 प्लेन्स हैं जो कि आपको अब तक आइडेंटिफाई हो गए, सही। थर्ड स्टेप पे बेसिक MRI पल्स सीक्वेंसेस, जो कि हमने अभी देख ली कि कौन कौन सी पल्स सीक्वेंसेस है। T1 T2, मोस्टली T1 T2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इन्फेक्शन में T1 T2 और स्टिर, PD फैट सेट और डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस, ठीक है। और स्पेशली T1 पोस्ट कंट्रास्ट, इफ एब्सेस, अगर आपको सस्पेक्शन है कि एब्सेस है तो कंट्रास्ट चाहिए ही चाहिए, स्पेशली एक्सेस या सेप्टिक आर्थराइटिस केसेस में। अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि ये कौन कौन सी डिटेल है, मैं बना के तो लाया था कि डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। T1 वेटेड में एनाटमी सीक्वेंस होता है, ये सब आपको पता है। T2 के अंदर फ्लूइड सीक्वेंस होता है जिसके अंदर आपने देखे वाइट होता है। इसके अलावा स्टिर, देखिए अब स्टिर जो इमेज होता है ये दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये डिफ्रेंशिएट करता है सब कुछ, इसमें उसको जो है ना डिम कर देगा और सिर्फ जो एडिमा है ना वो उसको प्रोमिनेंट कर देगा इसके अंदर जहाँ जहाँ एडिमा है। तो ये इन्फेक्शन रिलेटेड सीक्वेंस है। बोन मैरो एडिमा इज नॉट 100% कि ये इन्फेक्शन है। बोन मैरो में किसी में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शन प्रोटोकॉल। अभी सारा सीक्वेंस है T2 फैट स्ट्रैट, लेकिन अब T2 इमेजिंग बहुत जगह ये नहीं होता है। T1 फैट सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी सीक्वेंस कहलाता है। अगर कहीं भी इन्फेक्शन है तो ये आपको पोस्ट कंडाइलम जो है, जिस फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक आर्थराइटिस है, एक्टिव पैथोलॉजी है, तो T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट ये एक्टिविटी आपको शो करेगा कि कहीं भी, चाहे ट्यूमर की हो, इन्फेक्शन हो, साइनोवाइटिस है, कुछ भी हो, ये T1 फैट सेट इमेज चाहिए ही चाहिए इन्फेक्शन के अंदर पोस्ट कंट्रास्ट। डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस, ये थोड़े से सीक्वेंसेस हर लोग नहीं करते, लेकिन ये अगर आप देखें इसको कहते हैं पस सीक्वेंस। ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है
यानी ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी इक्वली पानी जो है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्लो नहीं कर पाते ईजिली, इसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये ब्राइट हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा इसके अंदर। और इसकी जो एडीसी जिसकी जो सीक्वेंस वो मैपिंग होती है उसमें ये डार्क हो जाता है। तो ये आप उसको किसी भी फ्लूइड से, पस से, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कोई भी कैविटी है जिसकी कंट्रास्ट ने भी इन्हेंस कर दिया है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या कंटेंट है कि वो पस है या कुछ और है, सिस्टिक फ्लूइड है, वो कैसे पता चलेगा? वो इस डिफ्यूजन वेटेड इमेज बताएगा इसके अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे इसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देगा, यानी ब्राइट हो जाएगा और एडीसी जो इमेज आएगा वो डार्क हो जाएगा। तो ये बता देगा कि ये इसमें कोई पस, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, ये एमआरआई का मैंने बताया था कि जिस तरह एमआरआई जब जाते हैं मस्कुलर स्केलेटल इन्फेक्शन के, तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है मशीन। स्काउट इमेज के बाद T1 क्रोनल लेती है, फिर T1 सेजाइटल लेती है, फिर इसके बाद PD प्रोटॉन डेंसिटी फैट स्टैट कोरोनल, फिर इस तरह ये पूरा सीक्वेंस इस तरह फॉलो होता है। ये तमाम जो सीक्वेंस होते हैं T1 T2, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के होते हैं हर सीक्वेंस, ये याद रखें 3 से 4 मिनट में ये हो जाते हैं। फिर इसके बाद जितनी भी सीक्वेंसेस होते हैं ये इसके अंदर फीडिंग होते हैं, ये 4 से 5 मिनट लेते हैं फर्दर। तो ये पूरी जो स्टडी है ये तकरीबन अराउंड 45 मिनट 60 मिनट्स तक जाती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सीक्वेंस मुख्तलिफ औकात में वो MRI में रन करते हैं, ठीक है, लेकिन अराउंड 2 to 5 मिनट्स के अंदर ये हो जाते हैं हर सीक्वेंस। अब सबसे बात हो गई, जब आपको ये पता चल गया, यहाँ तक आपने बोल दिया कि ये हो गया, हमने ये चाहिए, अब आपने इसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे? T1 सीक्वेंस, सबसे पहला ये सीक्वेंस आपने T1 ही उठाना है। T1 सीक्वेंस पे आपने देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बहुत डिटेल मैं नहीं जाऊँगा कि इसमें किस तरह होता है। जैसे बोन मैरो आप देखेंगे, जो T1 के अंदर जो है वो कैसा होगा, नॉर्मल ऐसा होता है और ये डार्क हो जाएगा अगर इन्फेक्शन होगा बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और T2 के अंदर क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। T2 के अंदर ही ब्राइट होगी, क्योंकि ये वाटर सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। जो स्टिर मैंने अभी बताया कि दिस इज एन इन्फेक्शन डिटेक्टर, इसके अंदर ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, देखें ये सारे, ये उसमें पैथोलॉजी नजर आ रही है। अगर बोन में है तो अर्ली ऑस्टियोमिलाइटिस है, अगर बोन और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर स्टिर इन्वॉल्वमेंट है तो ऑस्टियोमिलाइटिस प्लस सेलुलाइटिस है, अगर मसल इन्वॉल्वमेंट है तो मायोसाइटिस भी, और अगर फेशियल पेन भी है तो फेशियाटिस या नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस है। तो वाई स्टिर इज बेटर देन T2? क्योंकि दोनों के अंदर नॉर्मल फैट जो और एडिमा जो है ना, इसमें ब्राइट होगा, लेकिन स्टिर के अंदर बाकी फैट डार्क हो जाता है और एडिमा के अंदर ब्राइट हो जाता है। ये बिल्कुल हर चीज को ब्राइट कर देगा इसके अंदर। So key radiology rule is never diagnose osteomyelitis from stir edema alone. तो confluent low T1 MRI signal corresponding to the high stir with post contrast enhancement and an appropriate clinical setting is the only answer, ठीक है। यानी T1 लो होगा, stir image high होगा और post contrast bright होगा, ठीक है। 3 चीज़ अगर मिल रही हैं तो ये इन्फेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जब हम आए सबसे पहले हमने बोन मैरो एडिमा देख लिया इनसाइड द बोन, देन द कॉर्टेक्स देखेंगे कहीं कॉर्टेक्स ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा हमें मिल जाएगा क्या, जहाँ पे कॉर्टेक्स ब्रेक है। इसके बाद हमने इसके अंदर सीक्वेस्ट्रम देखना है। सीक्वेस्ट्रम जो डेड बोन है, ये देखें सीक्वेस्ट्रम है, ये हाइपोडेंस एरिया होगा, ये हर उसके अंदर हर सीक्वेंस में ये हाइपोडेंस ही होगा, ये इन्हेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इन्हेंस नहीं करेगा, ये सीक्वेस्ट्रम इन्हेंस नहीं करेगा। एंड देन क्लोएका, आपको देखेंगे कि क्लोएका यहाँ पे अपर्चर है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है। इन्वॉर्कुलम जो होते हैं न्यू बोन फॉर्मेशन, आपको पता है ये भी लो ऑन T1 है एंड लो ऑन T2 वेजेस लाइक दिस, ये भी लो होगी अनलेस until इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो, तो फिर ये मॉडरेटली इनहांस होगी। अब
क्लोएका जो मैंने आपको पहले बताया था कि इससे कम्युनिकेशन, ये भी आपको एमआरआई में भी देखना है। पोस्ट कंट्रास्ट में इसकी इन्हांसमेंट मिल जाएगी। एंड एप्सिस आइदर इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रामेडुलरी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्सियल इमेजेस हैं, T1 फैट सेट और ये पोस्ट कंट्रास्ट, ठीक है। अब देखें ना, अब ये T1 जो है एक्सियल फैट स्प्रेड में देखा आपने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आपको इसमें मिल रहा है, लेकिन कंट्रास्ट के अंदर पूरी इन्हांसमेंट हो रही है इसके अंदर, ये एप्सिस की पूरी कैविटी की, ठीक है। तो इसलिए तमाम इमेजेस आपको ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आया ये सिर्फ खाली एडिमा है, ये कलेक्शन जो है वो एप्सिस है, वो कंट्रास्ट आपको बताएगा। तो कंट्रास्ट का भी तो पता चल गया, हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ सिक्वेस्ट्रम के अलावा सब कुछ इन्हांस होता है, एप्सिस में सिर्फ वॉल इन्हांस होती है, ठीक है। न्यूमरा साइन, ये प्यूमरा साइन कहते हैं, ये बॉडीज एप्सिस के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर आपको देखना होता है कि देयर इज अ टिपिकली 4 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4 कंसेंट्रिक लेयर्स। जो सेंट्रल जो कैविटी कहलाती है वो एप्सिस कैविटी होती है, वो T1 पे लो होती है क्योंकि वो फ्लूइड सिग्नल नहीं है T1 में। T2 इज अ फ्लूइड पल्स, ठीक है ना। T2 इमेज जो होता है उसमें हाई सिग्नल दे देगी, ठीक है। एंड ग्रेनुलेशन T2, सेकेंड जो लेयर है वो ग्रेनुलेशन लेयर होती है जो कि रिलेटिवली हाई सिग्नल ऑन T1, ठीक है। यानी यहाँ पे लो होगी, उससे थोड़ा सा बेहतर होगी, थोड़ा सा T1 के अंदर वो न्यूमरा जो ग्रेनुलेशन टिश्यू। एंड देन द स्क्लेरोटिक रिएक्टिव बोन विच इज लो सिग्नल ऑन बोथ T1 एंड T2। एंड देन आखिरी जो लेयर होगी वो बोन मैरो एडिमा, जिस जो लो T1 एंड हाई ऑन T2 एंड स्टेर। ये 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर है, ये देखें इसके अंदर ये। अगर आप ये देखें तो सेंट्रल है, फिर इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरमीडिएट सिग्नल है, फिर ये स्क्लेरोटिक रिम विद एडिमा सारा पूरा। और कंट्रास्ट के अंदर आपको पूरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर इंटरनल इकोस भी हैं और इसके साथ आप ये देखें सारा। अगर ये पिक्चर मिल रही है T1 T2 में, तो इसका मतलब है कि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडीज एप्सिस, ठीक है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस के बारे में भी हमने देख लिया, बता दिया। जॉइंट के अंदर इफ्यूजन है, आपको मिलेगा जो इन्हांसमेंट मिलेगी T2, स्टेर इमेज, पोस्ट कंट्रास्ट सब में मिलेगी। साइनोवाइटिस प्लस सेप्टिक आर्थराइटिस विद एप्सिस, अगर कोई कलेक्शन है तो इन्हांसमेंट सब में मिलेगी साइनोवियम की उसमें। अब मसला ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि साइनोवियल थिकनिंग कितनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक साइनोवियम मिल रहा है, पुराना कहें तो क्रॉनिक जो है ना सेप्टिक आर्थराइटिस होगा, आप ट्यूबरक्लोसिस को सस्पेक्ट करेंगे। साथ साथ इसके अंदर ना ये लिम्फ नोड्स वगैरह भी होते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ता है, ये भी आपको मिलेंगे, ये शो करते हैं कि इन्फेक्शन को। दोनों के अंदर जब सेप्टिक है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या सेप्टिक आर्थराइटिस है, दोनों के अंदर एमआरआई में क्या फ़र्क होगा कि दोनों में साइनोवियल एनहांसमेंट जो है मार्क्ड ही होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें बोन ओरिजिन सेप्टिक आर्थराइटिस में ज़्यादा होगी, जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आपको कम मिलेगी। बोन एडिमा जो हो कि सेप्टिक आर्थराइटिस में आपको T2 पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि इन्फ्लेमेटरी में बहुत माइल्ड मिलेगा। एप्सिस कॉमन होगा सेप्टिक आर्थराइटिस में, जबकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में इट्स रेयर। सो ये इन्फ्लेमेटरी और उसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, जिस लाइक ट्यूमर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। सेलुलाइटिस के अंदर एप्सिस के अलावा आपको तमाम फेशियल प्लेन के अंदर इन्हांसमेंट मिलेगी। मायोसाइटिस के अंदर आपको मसल्स प्लेन के अंदर मसल्स जो है इनलार्ज मिल सकती है और इस पर इंटरनल इकोज मिलेंगे इसमें सारा। तो इसमें कलेक्शन विद हाई स्टेर अवेलेबल, हाई स्टेर जो है इसमें आपको मिलेगा। ये नॉर्मल है, आप देखें स्टेर इमेजेस के अंदर कितना हाई, और कंट्रास्ट में भी ये इन्हांस हो जाएगा। निक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के अंदर जो फेशियल प्लेन्स जा रही है ये थिक मिलेंगे विद सराउंडिंग एडिमा, मसल्स इन्वॉल्वमेंट है। और गैस, अगर गैस सिग्नल होते हैं तो गैस सिग्नल कैसे मिलेंगे इसके अंदर? छोटे छोटे बबल्स मिलेंगे ब्लैक रंग के, डार्क रंग के। अगर इसके अंदर छोटे छोटे बबल जिस तरह ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ निक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, ठीक है। जबकि नॉर्मल फेशिया जो है या इसमें ये इस तरह के नहीं मिलेंगे आपको।
सो अब हम आ जाते हैं अपने केस पे। मैं जल्दी इसको देख ले आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम हो गया। तो पढ़ लिया होगा अब तक आप लोगों ने और आइडिया भी लगा लिया होगा कि क्या केस है। चले कोई डिफरेंशियल ही बता दें, इसमें तो डायग्नोसिस ही लिखा हुआ है वैसे मोस्ट प्रोबेबली। और सेप्टिक आर्थराइटिस में थाई में पेन होगा, हाँ नी में होगा ना, है ना? ठीक है, यस थाइएप्सिस हो सकता है। ये एक्सरे आ गया, कोई भी चीज़ हम रेडियोलॉजी के बगैर नहीं करनी। तो रेडियोलॉजी के अंदर ये आपको इस तरह का मिल रहा है, कॉर्टिकल थिकनिंग मिल रही है, बोन लाइसिस मिल रही है। ऐसे सिचुएशन ट्यूमर में भी मिल सकती है, ड्यूरेशन भी थोड़ा है। तो आपको डिफ्रेंशिएट तो करना है ना एक्सरे देखने के बाद। अब आपने MRI प्रिस्क्राइब करना है तो क्या करना है, कौन सा प्रोटोकॉल देना, अब आपको पता चल गया है क्या लिख के भेजना है। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा कि क्या लिख के भेजना है। एक्सरे तो लगाएंगे, पूछेंगे बताओ, इसके बाद MRI बोलेंगे अच्छा लिख के दिखाओ क्या MRI भेजोगे, कौन सा भेजोगे, और फिर इसके बाद यस गुड एक्सीलेंट। और अगर आपसे वो कहें कि विद कंट्रास्ट नहीं दे सकते तो फिर कौन से सीक्वेंस होंगे वो आपको मैंने बता दिए। कम से कम मिनिमम T1 T2 एंड स्टिर 3 बस याद रखें। ठीक है, वैसे PD जो इमेजेस कहलाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि बहुत एनाटमी को बहुत अच्छी तरह बताते हैं PD इमेजेस, प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस। तो वो रिप्लेस कर दिए हैं T2 से। T2 लोग जो प्रोटोकॉल में नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो ये आपने देखे T1 है, T2 है, इसमें सिर्फ एडिमा आपको मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी एनहांसमेंट मिल रही है। ठीक है, एडिमा की एनहांसमेंट। T1 में आपको कुछ भी एनहांस नहीं होता, T2 के एनहांसमेंट मिल रही है। साथ में फिर आपके अंदर ये एक्सियल है, आपने इसमें एक्सियल्स में अगर आप देखें तो ये सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट आपको मिल रही है। ठीक है, फिर एक्सियल स्टेर आ गया। एक्सियल स्टेर जो आ गया इसके अंदर आपने देखें कितना एक्सटेंसिव, इसने सब कुछ ब्लैक कर दिया, सब कुछ देखें हाइपोडेंस कर, बिल्कुल उसने कहा कि बस इसको देखो जो जहां पे मसला है। ठीक है, यानी एक्सियल फैट सेट पहले किया आपने, लेकिन इसमें भी एनाटमी इतनी नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही आपने स्टिर किया तो फौरन से आपको पता चल गया कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस में ये प्रॉक्सिमल 1/3 के करीब है। इसमें आप देखें बोन मैरो एडिमा भी मिल रहा है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स मिल रही हैं, कम्युनिकेशन इन द मसल्स, वास्टस मीडियालिस, इंटरमीडियस, सिक्वेस्ट्रम मिल रहा है, सिक्वेस्ट्रम ये क्लोएका है, कम्युनिकेशन विद दी। सिर्फ एक कॉर्नल इमेज से आपको ये आइडिया लग गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंस आप जब इसको फॉलो करेंगे मुख्तलिफ स्लाइड्स में तो ये बताते जाएंगे। तो मैंने एक चूज़ किया आपको, तो वो पूरी सीक्वेंस आपको बताते चले जाएंगे कि क्या है। तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस विद एब्सिस और उसको सारी ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट तो सब आपको पता है कि क्या है। इसी तरह एक 12 ईयर्स फीमेल है, ये आप क्या डिफरेंसेस बन रहा है, कुछ बन रहा है? यस, या ट्यूमर है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फीवर है तो ट्यूमर के साथ लेस लाइकली है। ठीक है ना, मैंने बहुत डिटेल नहीं लिखी, मैंने ज़रा बस ब्रीफ सी आपको दी है। अब ये आप देखें ये एक्सरे में ये फाइंडिंग्स आ गई। तो मल्टीपल लॉबुलेटेड ऑस्टियोलाइटिक लीजन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरिस्ट्रियल रिएक्शन नहीं मिला जो कि ट्यूमर शो करता है। ठीक, तो जाहिर है अब आपके पास अभी तक आप उसको है नहीं, जस्टिफाई तो नहीं है कि क्या है, मे बी बेनाइन लीजन, मे बी समथिंग इन्फेक्शन या कोई चीज़ आपको जस्टिफाई तो करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट तो देनी है। फिर आप MRI ऑर्डर करेंगे। MRI में आप ये देखें T1 ज़्यादा एनहांस नहीं हो रहा, ठीक है, सिजिटल है। T2 के अंदर ये देखें ये एनहांस हो गया, समथिंग जो भी बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको सारी आपको मिल गई, इसके अंदर एनहांस हो गई। फिर स्टेयर के अंदर ये बहुत ज़्यादा, इसमें सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट भी पता चल गई, फेशियल इन्वॉल्वमेंट भी पता चल गई क्या है, बाकी मसल्स वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि जो भी लीजन है वो यहाँ पे लोकलाइज्ड है इस तरह। और यहाँ पे अगर आप कोरोनल इसकी इमेज में देखें तो ये एडिमा मिल रहा है आपका सारा, उसमें सॉफ्ट टिश्यू सारे इन्वॉल्व मिल रहे हैं इसके सराउंडिंग में, जो मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें जब जैसे ही हमने इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, C+ का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जब भी लिखा होगा
तो ये इन्हांसिंग हो गया, आपने देखा ये सारा इन्हांस हो गया, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी है ये कोई कलेक्शन है इसमें पस है, सही है ना। तो लोकलाइज कोई भी चीज़ कलेक्शन है, अभी तक हमने देखा इसके अंदर वो सारी चीज़ें देखी, तो आपके जहन में कुछ डिफरेंशियल अब बना क्या? एक्सीलेंट, ब्रोडीज एब्सेस, ठीक है, वो जो हमने पिम्ब्रा साइन देखी थी ना वही है। ये अब मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी आप लोग देख के जा चुके हैं, स्पाइन पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है। आप मैं सिर्फ बेसिक बता देता हूँ, ये L5 है, वर्टिब्रा आपको एक्सरे पे नज़र आ रहा है। समटाइम्स जब ये इन्वॉल्वमेंट होती है सॉस मसल्स की ना, तो सॉस मसल गायब हो जाती है एक्सरे पे, ये जब जहन में रखिएगा जब भी ये इन्वॉल्वमेंट हो। और आप यहाँ पे देखें, दिस इज़ वन सिजाटल T2 इमेज जिसके अंदर आपको ये इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि T2 किस तरह है आपको पता है कि ये फ्लूइड सीक्वेंस है, और यहाँ पर ये इन्हांस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ के अंदर वर्टिब्रल बॉडी एडिमा, और सामने इसके पैरावर्टिब्रल जो है ना शेडो में मिल रहा है, जो कि स्टिर के अंदर आप देखें, कॉर्नल स्टिर के अंदर इसकी एक्सटेंशन मिल रही है। यहाँ आप समझ रहे हैं कि यार बस एक सीक्वेंस पे आपने एक उस पर देख लिया कि यार ये तो यहाँ पे जो एपिड्यूरल समटाइम्स कलेक्शन टाइप की है, लेकिन जब जैसे ही आपने दूसरा देखा तो आपको इतनी बड़ी कलेक्शन मिली, और सॉस मसल्स जा रही है ना, ये देखें सॉस मसल्स के अंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ तक पूरी, ठीक है, ये सारी इन्वॉल्वमेंट है, और कलेक्शन कहाँ तक जा रही है देखें पूरी एब्डोमिनल मसल तक इन्वॉल्व किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा एब्सेस कौन सा होता है इतने पुराने, ये इतनी मोटी बात भी बता दी ना आपने, बस इससे तो बस ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ अभी ये वही है, इसका फैट स्कैन के साथ है, लेकिन बहुत और डिटेल आ गया इसके अंदर। अब ये लास्ट केस है, ये क्लियर डायग्नोसिस है, कोई तो बता दे। हाँ, सेलुलाइटिस, गुड, और गुड, एक्सेलेंट। तो ये देखिए अब इसके अंदर ये फोकल लीजन मिल रही है, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन में आपने देखे कार्टिलेज डैमेज है नज़र आ रहा है, और यहाँ इफ्यूजन है, लेकिन T1 के अंदर ये क्योंकि फ्लूइड सीक्वेंस नहीं है, आपको इसमें इफ्यूजन नहीं मिलेगी, बोन मैरो की सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें में इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। जैसे आप कंट्रास्ट पे आएंगे तो सारा कुछ इन्हांस कर दिया इसने सारा, ठीक है, विद कलेक्शन आप नज़र आ रहा है, पूरी इन्हांसमेंट हो गई है, और ये सारा सब पता चल गया कि इसमें यहाँ पे कलेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है पैथोलॉजी है वो बोन से लेके यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस प्लस सेप्टिक आर्थराइटिस दोनों ही हैं इसके अंदर है। इसलिए 3 ये सेगमेंट्स होते हैं, ये आपको देखने ज़रूरी है, एक चीज़ पे नज़र ना रखें, कभी कभार एक पे सेगमेंट पे पैथोलॉजी नहीं मिलती, जब आप दूसरे उस पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या है। तो मैं हमारे फंडिंग पे नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम कम हो गया, बस ये डिस्कशन या अब ये तो सब कुछ आपको आता है। अब आप ये देखें, ये मैंने डाली हैं, अब ये हमारी जो रेडियोलॉजिस्ट हमारे जो है ना सो कॉल्ड, जो भी हमें जो भेजते हैं, देखें ये डॉ की है, क्या भेजा है इन्होंने, T1, T2 और स्टेयर इमेजेस, ठीक है, 3 हैं, बहुत सारे सीक्वेंस, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ 3 पे ही रिपोर्टिंग की है। तो सिर्फ मैं सिर्फ ये डाली इस वजह से कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 3 ही सीक्वेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्फेक्शन में 80-90% इसी पे ही डायग्नोज हो जाती है। अब एक और इंस्टीट्यूट की देख लेते हैं, ये ज़ियाउद्दीन की है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो T1, ठीक है, T2, ठीक, और यहाँ पे स्टेयर लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है, हाँ साथ ही लिखा हुआ है। तो ये अब आप अंदाजा लगाएं कि ये और डिटेल है, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस की थी, वो सेप्टिक आर्थराइटिस की थी, ये जो रिपोर्टिंग है सारी, लेकिन ये तीनों ही इन्होंने इस पे सीक्वेंस पे देखे। हालांकि बहुत सारे सीक्वेंस और थे जो अभी तक मैंने आपको बताए थे, लेकिन इस पे ही इतनी % डायग्नोसिस हो जाती है। एक चीज़ में आपको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, अगर आप ये देखें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आखिरी में कहते हैं रिप्रेजेंट इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस / ये कभी भी डायग्नोसिस नहीं देते,
और मैंने आपको स्लाइड बताई थी ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे, जब अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस को जो हमने देखे थे अच्छी तरह डिटेल स्टडी करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी है, ये नहीं करते, बस अब काम चलाओ। सही है? तो बस थैंक यू वेरी मच। सॉरी बहुत स्लाइड तो बहुत सारी, लेकिन मैंने बेसिक अब आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया एक और, जो कि आपके अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम ये इन्फेक्शन वाले तो केसेस ना रखें, स्पेशली द डिस्चार्ज वाले, लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। अगर केसेस की शॉर्टेज है और इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जिसमें साइनस नहीं बना हुआ, तो हम रखते हैं। इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट आपको सारी फाइंडिंग, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस स्पेशली, एक्यूट तो आएगा ही नहीं, सेप्टिक आर्थराइटिस आएगा ही नहीं, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में अगर उसमें कोई डिस्चार्जिंग साइनस वगैरह नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि रख दें, क्योंकि उसमें फाइंडिंग्स आपको MRI में सारी चीज़ें मिलेंगी। यही बोलना है। Thank you, Professor Adi. Sir, sarcoma wali. Now I would like to invite Professor Badruddin Sahito. सही है ना, उठा लूँगा। आपकी जरूरत है। बाकी तो बाद में देखें, ठीक है? इसका चलाएंगे। सर उससे नहीं चल रहा, उससे करें? इससे नहीं चल रहा, चल आगे चलाएंगे तो आपकी हेल्प चाहिए। सर चलना चाहिए वो, अब चल। तो ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना भाई? इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि भाई पेट हमें जब राइट नजर आएगी T1 में, सही है, T2 पे फिर राइट नजर। अब ये दो बात याद रखिए, मैं आपको ना इसमें एक MRI दिखाऊंगा, जो MRI पे डायग्नोज हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। ये दो बात याद रखिए, और ये हमें ये बात याद रखिए कि जिस भी स्ट्रक्चर में फ्लूइड नहीं होगा वो ब्लैक नजर। अब ये वैसे वो चाहे स्पेटर भी देख लें, चाहे आप ट्रॉमा भी देख लें, चाहे ट्यूमर भी देख लें, जरूर देख लें, ठीक है? अब जब भी हम ट्यूमर पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सरे कराएंगे, फिर MRI कराएंगे, हमेशा कंट्रास्ट जो रेडियोलॉजी है, फिर बोन स्कैन कराएंगे, सही? तो तीन बड़े नहीं कराएंगे, रेडियोलॉजी करेंगे, कभी कभार पेट कराएंगे, बाद में कराएंगे, मतलब तीन बड़े। तो सबसे पहले एक्सरे। अब ये 12 साल का बच्चा है और राइट आर्म स्वेलिंग, तो पॉइंट ऑफ दिखाइए ना, चल नहीं रहा है ये देखें, इसको देखें आप, ये ट्रायंगल है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? सही है। और अगर इसको बोल से देखें तो इसमें लेमिनेशन एक लाइन है, दो लाइन है, और इसके लंबी भी है। अब ये पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन जो होता है सब से यार, सही है। डायपार्टल है तो हार्मोनल इन्फेक्शन होगा, अगर ये ट्यूमर है तो सबसे पहले क्या होगा? ये एक्सरे बता आप मुझे ना क्या कहते हैं, MRI सर्जन को क्या चाहिए, क्यों करना चाहते हैं? सही है, मुझे ना मैं सर्जन
करनी है सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन के लिए न्यूरोमस्कुलर एनहांसमेंट के लिए तो दो बातें याद रखें। तो एमआरआई करते हैं ट्यूमर में 2 वजह, सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन के लिए, बोन में एक्सटेंशन के लिए और न्यूरोमस्कुलर। ठीक है, अब मैं इसी पेशेंट की एमआरआई करूं। सेम पेशेंट एमआरआई कर लिया आपने। अच्छा, उसमें देखें कि सिर्फ डीएनए से लग रहा है कि सिर्फ इस जगह पे है। अब इसकी एमआरआई करेंगे तो लुक एट दिस, ये T1 है T2 है? T1 है, बोन से राइट है। हां, दिस इज T2 क्यों? क्यों T2 है? पेट देखें, पेट प्लेट है काली है तो T1 में होगा तो पेट हमेशा ब्राइट होता है। इसमें क्या है, पेट काली है ना, तो पेट काले और सुबह जो पढ़ा रहे हैं पेट वाला ये देखते हैं तो T2 देखते हैं, पेट वाला ये देखते हैं तो सही है। तो सब देखें, ये भी समझे इम्तिहान में 4 सवाल पूछते हैं। भाई ये क्या है, सीटी स्कैन है हमारा, तो पहले तो कैंडिडेट सोचता है कि सीटी स्कैन है, पहले तो उसको परेशान कर जाता है। ये भी सीटी स्कैन है हमारा कैसे लग जाती है सिटी में भी दिखाते हैं। बोन ऐसी नजर आएगी सीटी स्कैन में जैसे ट्यूबलाइट, ऐसे वाइट आएगी सीटी स्कैन और एमआरआई में हमेशा बोन ग्रे नजर आएगी। ये देखने आज सबसे पहला काम है तो आपने एक्सएम पकड़ा था ना फोटो, तो ये तो पता चले सीटी स्कैन एमआरआई सही है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा अपने कौन सा भी है, ठीक है भाई कोरोनल है, सजाइटल है, ठीक 2 बार जायज़ है, ठीक है। फिर मुझे T1 है T2, तो पहले पेट दे, अगर पेट ब्राइट है तो T1, पेट ब्राइट नहीं डाल दे तो एक्सेप्शन में दिखाऊंगा, सही है। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, दिस इज द ट्यूमर और सबसे पहली मसल कौन सी रैप अप होती है, हिमरत पे ब्रेक करें, पता है, ठीक है। और ये जो मसल है जो ये डार्क नजर आ रही है, दिस इज बाइसेप्स, ठीक है, जिसका मतलब है इसकी ब्रेकलेस इन्वॉल्व है, सही है। मोर देन 2/3 ऑफ दिस डायफ्राम इन्वॉल्व है, मगर लुक एट ये जो डेंसिटी है और इसमें ना फर्क है, ये लाइट होती जा रही है। तो इसका मतलब है ये एडिमा जैसा दिखा है, तो दिस इज ओनली एडिमा बट दिस होल इज इन्वॉल्विंग दिस डायफ्राम, ठीक है क्लियर। अब इसमें पूछेगा क्या, कहां से कहां तक एक्सप्लेन बताएं मुझे, इसका क्या देखना चाहिए, एक्सियल देखने को मुझे पता चले 0 सही है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेन एरिया, ये ब्लैक क्या है, व्हाट इज दिस ब्लैक, ठीक है। टेंडर इज ब्लैक, इसका डोंट हैव अदर, इसमें एडिमा नजर आना जरूर है, इसका मतलब टेंडर इंफ्लेमेशन या कोई प्रॉब्लम हो, तो दिस इज सिंपल, ठीक है। अब ये ग्रेनाइड है, ये हिमरल हेड का ही है। जैसे सीक्वेंस नीचे चलते जाएंगे ना आपको अपने लिए की जगह पता है। ये कौन सी मसल है, ये सब इसके ये कौन सी सुप्रास्पैंडस, दिस इज राइट सही है, इंफ्रास्पैंडस सही। अब ये देखिए बच्चे मैं तो बीइंग अ ट्यूमर सर्जन इसमें मरीज मैं चाहूंगा मेरे डेड पैड भाई होने चाहिए, सही, क्योंकि मेरा फंक्शन सारा डेड पैड, अगर डेड पैड इन्वॉल्व है तो मैं सारी रिस्ट्रिक्शन डेड पैड के साथ करूँ, तो पेशेंट को पहले बताऊंगा शोल्डर न चले, भले कुछ भी कर, सही ना, एब्डक्शन नहीं होगी, नहीं आप यूज भी कर लो तो एब्डक्शन नहीं होगी। तो आपकी मेला क्लास जो है इस चीज पे रिसेक्शन पे प्लस डेड पैड प्रिजर्वेशन पूरी क्लास में लिखा है, डेड पैड इनफैक्ट इन्वॉल्व, डेड पैड नॉट इन्वॉल्व, सही। तो जब शोल्डर देखेंगे तो डेड पैड जरूर देखेंगे, ठीक है क्लियर। सेम आप देखें ये अनिल साहब ने सीक्वेंस दिखाया था उसने कि पहले स्कॉट फिल्म देखेंगे तो ये पहले स्कॉट फिल्म देखेंगे, तो इस पे देखें नंबर भी लगेगा कि स्कॉट फिल्म शुरू करेंगे ना तो कहाँ से शुरू करेंगे, भाई ये हेड आ गया यहाँ से, ये ग्रेनाइड आ गई मेरी, ये बाइसेप्स का टेंडन आ गया इधर तक, अब ये सिग्नल आना शुरू हो रहा है यहाँ तक, तो सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे एडिमा मतलब लुक इट नाउ इट्स गोइंग आउटसाइड द बोन, आउटसाइड बोन वेयर द नेवस टू बट नथिंग, दिस इज द नेवस, सारा ब्रेकअप प्लेसेस मीडियल है, ट्यूमर उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। और जैसे करीब आएंगे ना लुक इट सम वेसल इज हियर वेरी नियर टू द ट्यूमर। अब ये हमें देखना, अब हम इसमें वो उन्होंने नर्व भी दिखा दी, जो उन्होंने एल्बो दिखाया उसने मैडम ने, उन्होंने एल्बो भी दिखाया, उसमें अल्ना नर्व भी दिखाया, एडल नर्व भी दिखाया। अब जिसमें नजर आएगी एल्बो में ना ये सारा ब्रेकअप प्लेसेस लुक इट नाउ इट्स कमिंग नियर टू द, और एक तो मतलब एक सीक्वेंस में है, नजर आएगा बिल्कुल दूर पड़ी है, और कंसीक्यूटिव देखते हुए हैं तो आपको लगेगा न्यूरोस टू बंडल मिड ऑफ द आर्म में सारा आगे ट्यूमर के साथ लगती है,
सही। तो ये एक पूरा सीक्वेंस देखने इस शॉर्ट फिल्म को इसमें देखिए नंबर लिखा 35, इसमें देखिए 35 ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। Look at this. These is all variable present medially is how somehow ideal. इसमें जैसे लग रहा है ना कि यहाँ से दूर पड़ा हुआ है, तो ट्यूमर है, तो दूर पड़ा हुआ है। जैसे सीक्वेंस देखते नजर आएंगे ना तो चीज पूरा ब्रेकल प्लेजर उसको मीडियल साइड में है। तो कौन सी दो चीजें देखनी है? एक्सटेंड इन सॉफ्ट टिश्यू बोन एंड डेवलप परमानेंट वॉल। सिंपल ये ट्यूमर है, इतनी सी कहानी, मगर आपको उसके लिए अच्छी एनाटॉमी चाहिए। हो गया भाई। ये दूसरा पेशेंट कहाँ पे लिया? ये ऑर्थोप्लास्टिक डायग्राम लिया। आप इस पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ें तो कॉन्डोसार्कोमा लेफ्ट हमने बायोप्सी कर ली कॉन्डोसार्कोमा, इसको पहले भी लिम्फोमा था, उसके लिए कीमो भी ले चुका है, तो ये रेट्रो इंड्यूस कॉन्डोसार्कोमा। अब इसकी बायोप्सी सही। अब ये दूसरा है नस्ती, लेकिन ये भी देखा जाए ये एंटीरियर है पोस्टीरियर है। देखो एग्जाम में तो पास आलू कंफ्यूज होना ना, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है। क्योंकि ये ए लगी हुई ए लगी हुई, तो इसका मतलब ये पोर्शन एंटीरियर ये पोर्शन, तो ये ट्राइसेप्स हो गई, ये बाइसेप्स हो गई, ये आपके लेटरल, सही है ना। तो ये देखिए जिसका मतलब है योर एंटीरियर लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज इम्पोर्टेंट, सही सिंपल। अच्छा ये T2 है T1 है T1 है, इधर ब्राइट लग रहा है, इधर भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आगे पीछे किया हो, मगर ये दोनों नॉट गुड ना, कंफ्यूज करते हैं। इधर भी ब्राइट नजर आ रहा है, ब्राइट हां फैटी ट्यूमर भी, तो फैटी कंपोनेंट भी उसमें होता है, ये एक है, मगर ये तो देखिए फैटी कंपोनेंट नहीं है। अच्छा ये देखें, लुक एट दिस, व्हाट इट इज, ये ट्राइंगल है, तो ये क्या है? कोरोनल, इसमें हां चमक रहा है, बट लुक एट दिस, इसमें देखिए यहाँ पे डायग्राम इन्वॉल्व है, ये बोन बिल्कुल डार्क है, ऐसा लग रहा बोन नाम है, सही। बट इंट्रामेडुलर ये देखें तो सिग्नल आना शुरू, इसका मतलब इंट्रामेडुलर एक्सटेंशन है, सही। तो कभी कभार आपको ऐसा मिसगाइड करेगा ये तो बोन इन्वॉल्व नहीं है, बट बिकॉज़ दिस एनसर्कलिंग द बोन, तो समहाउ दिस बोन माइट बी डेड बिकॉज़ ऑफ प्रेशर, नहीं, क्योंकि तो रेडिएशन भी हुई है, कीमो भी हुई है, तो उसकी वजह से इसमें सिग्नल नहीं आ रहा। तो ये एक एलिमेंट है T2 में। कभी वो जो अभी साहब ने दिखाया कि सिक्वेस्ट्रम विल बी ब्लैक का नहीं मारा है, उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि डेड मोड में ब्लड नहीं होती, ये भी समझे, तभी वो डेड में ब्लैक नजर आए। सेम ना प्रेशर की वजह से रेडिएशन का रिप्लेसमेंट खत्म हो गया, तभी वो डेड हो गया। ठीक है, क्लियर। अब ये है, अब इसको ये देखिए T2 है, अब इसको गौर से देखेंगे ना, मीडियल साइड पर एडिमा है, लुक एट द लेटरल साइड एंड इट मार्क और एक्सटेंडिंग टिल दिस गिलेना, दिस प्रॉक्सिमल 1/3 और डायफ्राम। ठीक है, एक्सटेंड पता चल गई। इसका एक्सियल देखेंगे तो ये न्यूरस को फ्रंट लेजर से पूरा ही स्क्वायर हो, ठीक है, होगी बात। चलिए तीसरा देखें, सही है, 10 ईयर बायोप्सिकली पावर, तो ये कहाँ पे है? तो एक्सरे के ब्लड से साफ ट्यूमर में एक्सरे की वो भी अच्छा शेडो बताता है, सही 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 है। लेकिन 10 पेशेंट दिस इज एमआरआई, सही है। ये क्या है? एक्सियल व्यू है, एक्सियल व्यू सही। अब ये हमने जानबूझ के वो कट लिया जिसमें जो उसको बर्डन नहीं है, क्योंकि ब्लड चार्ट पे जाके लिया, ठीक है। लुक एट दिस, होल ट्राइसेप्स इज इन्वॉल्व, सही, होल ट्राइसेप्स इज इन्वॉल्व। ये एंटीरियरली बायोसेल बैक्टीरिया, everything on both of them. Look at this. This is affected is radial nerve. सही, तो इसका मतलब है रेडियल नर्व, इसको गौर से देखेंगे ना, इन्वॉल्व है बायोडी, इसकी गौर से देखेंगे ना, जीपी बायोडी अभी भी बची हुई है नर्व की, तो इसका मतलब है वो इसके साथ इसको पुश कर रही है, इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे। अगर आपको एनकेस देखिए, एनकेस होती तो ये चारों तरफ से घूम के आ जाती है, तो इसकी एज पे look at this, everting, this is hepatic and pushing against the bone, so this is not complete involved, ऐसा hepatic कैंसर का मतलब सेंटर में आ गया, तो सेंटर में नहीं है ना, ट्यूमर के पेरिफेरी में, तो ये अंदर नजर आ रहा है कि ये रेडियल नर्व, तो which part of the compartment more, only posterior tricep, अगर आपकी tricep निकाल भी दें, तो still you can have a chance to say the रेडियल नर्व, अगर काउंट हो जाएगा नहीं पेशेंट को, बाद में yes, this drop होगी बोलता हूँ, तो मुझे देखते ही हमारा पता चलेगा कि पोस्ट ऑपरेटर पेशेंट को स्टॉप होगा, भाई चलिए करें, सही। चल ये ऐसे सामने दिखाया है, मैं रहते ही दिखा रही हूँ।
सही, ये इन्फेक्शन है ट्यूमर है, चला गया देखिए इसमें जरूर देखें यहाँ पे ना हाइपरटेंस सिग्नल है, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइपरटेंस सिग्नल है, तो ये दिस इज नॉट ट्यूमर। अगर ये भी देखें पीछे वाली सारी तस्वीरें दोबारा देखें, ये ना एक तरह से गोल है पूरी, इधर उधर नहीं, एक जगह ऐसे नहीं, ऐसे वाइड नहीं, सिर्फ एक जगह को इन्वॉल्व किया। जो भी साउंड टिश्यू होते हैं ना वो ना सेंटर टू पेरिफेरी ग्रो करते हैं, तो वो जब भी देखेंगे ना जैसे पूरा एक राउंड पास हो, तो इन्फेक्शन कभी वैसे नहीं करेगा एक्सेप्ट रोडिज्म। इन्फेक्शन इधर होगा उधर हर जगह वाइड डार्ट करता है। अगर ज्वाइंट के अराउंड सेप्टिक अल्सर है तो इसका मतलब जहाँ साइनोम होगी उस पूरी के अराउंड इन्फेक्शन आ जाएगा। तो उसमें अगर एक कट आपने देखा तो हो सकता है ऑलिकन को समझ पता नजर आए, दूसरा कट देखें तो लगेगा मीडियल साइड में, तीसरा देखेंगे तो लेटरल साइड ऑफ एल्बो है, तो उसमें अलग अलग पॉकेट नजर आएंगे। ट्यूमर में कभी भी ऐसे नहीं होगा, पूरा इन्वॉल्व। तो इसको आगे करिए, सही है, ये सही है, 10 साल का बच्चा है, अल्लाह में सोए, ठीक है, आपने इसकी दिया, ये पहले का है ना, दिस इज बिफोर कीमोथेरेपी। जब ये प्रेजेंट किया ना, लुक एट दिस, नाउ व्हिच बोन इट इज, radius, now this is basically some intraocular membrane, now these plaques are tendon, सही है, अभी बात की टेंडन विल बी प्लेग, ठीक है, जिसका मतलब ये सारे प्लेग टेंडन, ये एक टेंडन है, ये प्लेग कैसे पता चला, ये देखिए इधर ए लिखी, ये पी लिखी हुई इधर, इधर पी लिखी, सही, ठीक। तो जिसका मतलब है ये जो मीडियल कंपार्टमेंट एज अ होल है ना, तो ये टेंडन सारे पुश होकर एंट्रियल आ गए, अदरवाइज ऑल मसल बेल इज इन्वॉल्वड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बोन। इसका मैं कभी दिखाएंगे आपको, और जिसको कीमो होगी तो सारी बोन अलग होगी। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको देखने के बाद इसको देखने के बाद एम्पुटेशन क्यों एम्पुटेशन करेंगे यार, ये समझा, कुछ नहीं करना, बायोप्सी करेंगे, ये बायोप्सी करेंगे ना, हमें पता चला कि अल्लाह साइड है, ये वहाँ से पूरा मीडियल साइड कंपार्टमेंट लेटरल साइड पूरा बचा हुआ है, आर्टरी तो इसका मतलब रेडियल आर्टरी जब देखेंगे ना दूर से, तो यहाँ पे ना, यहाँ आपको ये देख लो फिर रेडियल आर्टरी सही है, रेडियल आर्टरी से उसमें कुछ भी मसला नहीं, but there is a problem only on the other side, because there is no half of the forearm intraocular membrane is normal, ऐसा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो बायोप्सी एंड देन प्लेन बायोप्सी इमेज आ गई तो कीमो करेंगे, डोंट एम्पुटेट। तो आप उसको दिखाएंगे ना, ये बोन बिल्कुल साफ है, ये ट्यूमर नजर नहीं आ रहा ना, तो ये पोस्ट कीमो पूरी अल्लाह नजर आने दो, तो ये आपको बात दिखाएंगे। मगर look at this, what we did the MRI, take the biopsy, confirm it, सही आ जाए, सही है। ये 21 मेल बाउल ब्लैडर प्रॉब्लम, ठीक है, ये कौन से जॉइंट है, एसआई जॉइंट, सही है। इनमें देखिए वाइट सिग्नल आ रहा है, सही है, देखिए फाइब्रस जॉइंट है, उसमें फेड होती है नॉर्मल ना भाई, एसआई जॉइंट कौन से जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट, सही। तब ये इसमें देखना, ये तो आपका ये उन्होंने बताया भी, तो लुक एट दिस, ये सेंटर में इधर एब्डोमेन नजर आ रहा है, लुक एट दिस सेंटर में, यहाँ से एब्डोमेन, ठीक है। तो ऐसा जॉइंट प्रिजर्व्ड है, मगर H1H2 की बॉडी है जो पूरी इन्वॉल्व है ट्यूमर, तो व्हिच इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन व्हाट इज द सेकंड वन, जीसीसी, सही है। तो कुछ भी हो सकता है, बायोप्सी करनी चाहिए, तो इसको देखने का तरीका ये, ठीक है, आप एक्चुअल जरूर देखेंगे, वो आपको एक्टेड बता देते हैं, एंट्रियल नहीं गया हुआ, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये अभी मैडम ने बताया था, ये क्या है भाई, तो ये पढ़िए फाइनल रूट, ये सही, आगे और दो स्ट्रक्चर उन्होंने मेन बताया, और ना एक तरफ दूसरा, ठीक है, और दूसरा बाउल ब्लैडर देखेंगे ना, तो ब्लैडर नजर आएगी यहाँ पे, बाउल नजर आएगी यहाँ, इसका मतलब रेक्टम जरूर देखेंगे जब ये देखेंगे, और ब्लैडर जरूर देखेंगे आगे, दो चीजें जब ये एंगल कट देखेंगे ना स्पाइन का रेक्टम देखने के लिए, तो दो चीजें देखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम रिसेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ होती है एल्फाइन रूट, यहाँ पे जो बॉडी के एंट्री होती है पड़ी, और उसके एंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें रेक्टम। अगर आप रेक्टम स्क्वायर करेंगे तो सही जरूर नहीं, तो खुलासा में बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है दिस इज लाइन इनसाइड द रेक्टम जॉइंट की बॉडी। चलिए, तो इसका सेम पेशेंट का सही सजाइडल व्यू है,
तो इसमें क्या है, हाइपरटेंसिव नजर आ रहे हैं ओनली S1, ये S5 है, ये S1 में है, S1 में, ठीक है ना? ठीक है, कोई सवाल है तो अभी पूछे। सर ये स्पाइनल कॉर्ड भी माफ कर रहे हैं ना? तो ये देखें यहाँ पे, ये कार्ड तो L1 पे खत्म हो गया ना? अच्छा, ये भी समझे, L1 पे कार्ड तो खत्म हो गया, तो ये जब आप S1 तक आगे समझ आगे नीचे आ जाए ना रूटी हो, जिसको आप कार्ड आए ना वो, ठीक है ना? ऐसे कौन मॉड्यूल में है सर? चले, ये भी अब इसको देखते हो, ये कॉलीफ्लावर आपकी सीधा सीधा भाई, अब मुझे इसको MRI क्यों करानी है? केस में कब न्यूरोमस्कुलर स्टैटिक इधर न्यूरोमस्कुलर ना, ये स्टेटिक है, मगर जो फीमोरल है वो कहाँ? यहाँ पे, इसका मतलब है लेफ्ट लाइन, बट ये अब आगे मारा देखिए, ये बोन है, ठीक है, ये ब्लैडर है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये है आपका बोन, और लुक एट एवरीथिंग ऑन पोस्टीरियर साइड, इसका मतलब है यूरेटर मैक्सिमम मीडियस मिनिमम तीनों मसल नॉर्मल। अगर पेशेंट की सर्जरी करेंगे भी सारा निकाल दे फुटा से, तो पेशेंट को बताएंगे भाई ये करेंगे सारी मसल है कुछ भी है, तो आपने मसल तो ब्रेन सारी पूरी निकाल दी, ठीक है ना? ये सेम पेशेंट है। और दूसरा क्या, वो पूछा है मेरा जॉइंट सही है, तो लुक एट जॉइंट आर एग्जैक्टली नॉर्मल एंड होता है, तो ये जिसका मतलब बोनी कंपोनेंट इसमें ज्यादा नहीं है जितना सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट हो, ठीक है? नॉर्मल नहीं, एवियन लग रहा आपको सही है, ठीक है? इस तरह एक लाइन आ गई, ब्लैक पर ये नजर आ, इधर भी नजर आ, इधर भी नजर आ, तो दोनों जगह एक जैसे है ना, ठीक है? चले, अब ये दूसरा पेशेंट देखती है, look at this patient present with urine retention and constipation, जब वो प्रेजेंट किया तो आए इतना, look at the bladder ना, bladder देखें कैसे हो गए, पूरा कुछ हो गया, उसकी शेप भी चेंज हो गई, एक तो ये फाइंडिंग होगी, दूसरा इसमें मास देखें ये प्यूबिक सिम्फिसिस से पूरी पेलिस में अंदर चला गया, बट दिस कम्स थ्रू द ऑब्ट्यूटर फोरामेना डाउन इनटू द मिडल साइड, सही? और ये जो मसल है ना, दिस इज एडेटर कंपार्टमेंट, बट स्टिल सी दिस इमोरल हेड इज प्रेजेंट, जॉइंट इज प्रेजेंट। अब से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब सर्जन को ये पता चल गया मेरा जॉइंट प्रेजेंट, सही है? मुझे जरा यूरोलॉजिस्ट को बुला लेना है कि ब्लैडर को देख ले, वरना ऐसे नहीं है ब्लैडर काट रहा है, तो बड़ी जबान क्या काम कर रहे हैं, तो हाँ मैं तो ये इंफॉर्मेशन ना दिस विल प्रोवाइड कि भाई the nearest structure relationship with the tumor is this. So if you are trying to compare this, you should see in the rectum, bladder, L5 nerve, the ureter even sometimes, because the ureter is coming from down here, down into this here. So ureter, this is a key point. Think about joint. So it means joint conservation is still possible. Yes. आपके ख्याल में किस चीज़ है? प्यूबिस से, सिंपल। सही है, सुपियर प्यूबिक एमआरआई में सही है, वो इतना बड़ा हो गया कि एब्डोमेन अंदर भी चला गया, ग्रेटर क्या कहते हैं ऑपरेटर फोरामेना में आ गया, सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लिया। सर्जरी तो देख डिस्कस नहीं करना हम तो, ये तो देखिए नोटो साधनों में है, एक्चुअली आपने दिखाया ना, सही तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे आप, ये बात हम ये पर्टिकुलर जो है टेलर केवल बायोटिक ये बायोटिक मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा, जब डॉक्टर मदद कर रहा है यार फाइबर डिस्प्ले लगा, मैंने उसकी बायोटिक के लिए फाइबर डिस्प्ले डाला, सही है, ले डाल दिया कौन तो ताकत मार जब दोबारा बायोटिक और उसकी इनपुटेशन है ये सारी सही है, तो आप ये जवाब ही ना बोलेंगे ये सब क्या करें, यस दीदी हो सकती है, जो तो डू व्हाट बायोटिक करूंगा कंफर्म बायोटिक करूंगा सर स्टेज 1 स्टेज 2 जीसीटी या फिर अगली ऑस्टियोमाइलाइटिस सर उसमें पहले हम बायोप्सी ही करेंगे, फिर उसके बाद देखिए ऑस्टियोमाइलाइटिस का सिद्धांत दिखा, तीनों सीक्वेंस दिखा कि इसमें ना क्लासिकल फाइंडिंग है, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं, आप उसको इंसिजन लगाएंगे तो ये होल करेंगे पास निकलना शुरू हो जाएगी, फिर तो खत्म होगी ना बात, सही। हम सम टाइम इमेज में प्रॉब्लम होती है, उसमें ड्रिल भी करने लगता है, एक रूल है ऑलवेज डू स्टॉप पे चला नहीं करेंगे, सही, ऑलवेज कल्चर द पीपल, ये रूल इसलिए ही है कि मिस ना हो जाए, क्या होगा अगर आपने एक मंथ और किया तो मिस हो गई, 15 दिन दोबारा जाएंगे, आप लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस करके ट्रीट कर लेंगे, इसको पेशेंट आ जाएगा, तो उसके लिए जब फॉर्म भरे ना तो डू द कल्चर फॉर ट्यूमर, यस डू द कल्चर फॉर ट्यूमर, ओके डू द हिस्टोपैथोलॉजी फॉर इन्फेक्शन, तो ये रूल इसलिए कि भाई मिस ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ये जुमले जो थोड़े बोल के ना याद रखने के लिए, तो ये ऐसे ही है,
ये तो सीधा सीधा कॉन्डोसार्कोमा है, ठीक है। हाँ T2 है ना, देखिए ब्राइट हो गया। अच्छा हाँ ब्लेडर देखिए, ये ब्लेडर देखिए ना, उसमें ब्लेड है वाइट हो गया, ब्लेडर वाइट हो गया, इसका मतलब है this is T2 तभी तो वाइट है, ठीक है ना। और look at this everywhere muscle is grey, इसका मतलब है बाकी muscle का नाम। तो MRI अच्छा ये क्यों है इसका एक्सेल, ठीक है। इसमें भी गौर से देखिए ये कौन सा है, एक्सेल नहीं कोरोनल है, हाँ सही चल है। देखिए आप ये इम्तिहान में देखिए कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, भाई ये सीटी स्कैन है, हमारा है, ये ट्रांसो है, एक्सेल है, कोरोनल है, ये 4 सवाल तो पहले पूछेगा आपसे, ठीक है सर मान लो ठीक है। मतलब देखिए आप इधर उधर घूमेंगे ना तो वो आपसे यही पूछे, आप करने मुझे पता नहीं क्या पूछेगा हमारा, कोई जब 4 दिन नहीं निकलेंगे तो दूसरी को नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। But see, this hip joint is normal, but this tumor is just lying below, passing through the pubic lemma through the obturator foramen into the mid of the. इसका मतलब है अगर हम इसकी सारे सुपीरियर pubic lemma निकाल दें तो भी इसकी ट्यूमर नहीं सकते, मतलब उसमें मीडियल कंपार्टमेंट था निकालने के मिड ऑफ साइड तक आया, ठीक है कहते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, मतलब कि सर्जिकल है या इसको रख ले पहला, ये तो कोरोनल है, कोरोनल तो ये सजाए में इसलिए है कि ये देखिए ये P है, ये P है, ये A है, सही है, अभी तो सही है ना। देखिए सभी देखिए बार-बार मैं आपको इधर A लगी हुई है तो इसका मतलब ये एंटीरियर है, एक्सियल है, इधर A लगी हुई है तो इसका मतलब ये एंटीरियर है, तो ठीक है ना, अभी तो कोरोनल हो गया ना। नहीं देखिए आप फोन को दिखा के नहीं पता चलेगा T1 ठीक है। सबसे पहले पढ़ा देना दिन का नाम लेकर कर लेगा, पेट देखते पहले, पेट राइट ऑन T1, ये पेट डार्क ऑन T2, फ्लूइड ऑलवेज राइट ऑन T2, सही है ना। तो ये देखें पेट फ्लो में कितने होते हैं, फ्लूइड ज्यादा होते हैं, पेट फ्लो में ज्यादा होता है, फैट का उल्टा हो जाएगा ना बोन में सर, बोन जो है T2 में ब्लैक कलर आएगी, एक मिनट अभी दोबारा वापस, ये इस बोन को क्या है, ग्रे, ये कुछ भी नहीं, फेरो नहीं है ना, तो बोन तो दोनों सिग्नल में ग्रे आएगी, अंडर हो जाएगी, पेट काला नहीं ना, ये भी समझने की जरूरत है कि बार-बार समझाते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना फिर आप वही पढ़ते रहेंगे, बाकी चीजें तो बड़ी डिस्कस नहीं होंगी। चलो पूछे जल्दी करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। अदिल साहब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, 3 से ज़्यादा कह रहे हैं छुट्टी होगी हमारी। जी सर सर प्रीवियस में सर वो जो आपका होता है कोरोनल इमेज ये तो इसमें तो ये लोअर बॉर्डर का स्टेटस को फिर बहुत कर रहना चाहिए, जब नीचे अच्छा लोअर पार्ट में वैसे में क्या होता है दोनों की, नहीं सर वो नीचे से ट्रांसफर लिगामेंट होता है, अगर आप स्टेम से काटेंगे तो नीचे तो बोन ही नहीं, जब इसको काटेंगे तो स्टेम भी काटेंगे तो पे रिमाइलर से काटेंगे तो निकल आएगा, इसका मतलब है इसका हेड भी बचेगा और इसकी ट्रायंगुलर शेप की ऐसी डेवलपमेंट तो बॉडी। यस अब आप समझिए कि तो सब पार्ट मार्जिन तो नहीं होता, तो कभी कभार वैल्यूज में 1 mm मार्जिन इज एक्सेप्टेबल, वैल्यूज ऐसी जगह है ब्लेडर को चिपका हो तो ब्लेडर काट देंगे, तो वैल्यूज ऐसी जगह है जहाँ 1 mm मार्जिन भी मिल जाए तो वैल्यूज एक्सेप्टेबल, ये भी समझिए, ठीक है। चले भाई ये कौन सा कंपार्टमेंट है, मीडियल, सही है, तो हाइपरटेंशन सेक्शन नजर आ रहा है, मीडियल कंपार्टमेंट है, सही। अच्छा ये इसमें एक और ये नजर आ रहा है, ये सिग्नल क्या है, तो ये नीचे आएगी, यहाँ आगे राइट में पीछे घूम जाए, तो इसका मतलब है मीडियल साइड पे ये वेसल कार्ट्रिज है, अदरवाइज इट्स इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द, इतनी आनी चाहिए आपको ऑपरेटिव स्कीम, मुझे स्पेशल इसको नहीं बनाना, हमें तो पेशेंट ओरिएंटेड एमआरआई देखनी आनी चाहिए, वो डायस्पोर्ट देखें, पेशेंट देखें, कुछ भी देखें, सही है। अच्छा इसमें न्यूरोस के बंडल का ओ ये सही है, तो दिस इज femoral, ठीक है, एंड दिस इज medial compartment एंड दिस इज posterior compartment, ठीक है, इसका मतलब है medial compartment, ये कौन सी मतलब
most probably great because it will must be the must. So here is some other medial compartment सारे मतलब look at this is somehow adherent to this. ये section अगर वो distal आ जाता है थोड़ा सा तो वो जैसे जैसे जाएंगे तो आपको और क्लियर नजर आएगा कि ये तो बिल्कुल उधर से की हुई है अलग ही नहीं. But see still you find some dark signal. फिर ये भैया अभी भी देखें स्पेस है वरना सर्कल नहीं है. तो ये सर्जन के लिए है कि देखें अभी भी मैं स्पिनल लेंथ सर्वे कर रहा हूँ. ये सर्जन अपने आपको सुनाएगा कि यार अभी भी स्पेस है मैं ना इसको अच्छा जाते हैं तो जल्दी ना तो लेट हो जाता है. ठीक है सर जब हम अगर बिल्कुल न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं उसमें भी हम मार्जिन वाला रूल तो हमारा वो चला गया. सही है. एक वर्ड है मार्जिन. Margin, if the tumor is adherent to the artery, take the adventitia. If the tumor is adherent to the nerve, take the outermost layer of the nerve. Do the biopsy. If that is not involved, it means margins are clear. If the tumor is adherent to the periostum, take them in the periostum. It means periostum is free. It means tumor is free from the periostum. It means margins are clear. So if the tumor doesn't involve the intramuscular septum, it means the tumor is free. भले वो होने में नहीं आ जाए. नहीं तो हर जगह वो जो वाइट मार्जिन निकाल दो डिवाइडर होता है तो उसको मारता है उसको निकाल लो. मैं इतनी स्पेस है कि 3 सेंटीमीटर का अलग से टिश्यू निकालें. स्पेस ही नहीं है. एक्जिला में ओपलाइटर होता है एंकल में. these are the spaces where even 1 mm margin is acceptable. मान लो 3 सेंटीमीटर ले नहीं सकते. 3 सेंटीमीटर मतलब सारी बोन बोन तस्वीरें काट के निकाल दो. तो वो ये एक्सेप्शन है रूल. ठीक है. अब ये 48 साइज है. अब ये देखें ये सिराबलम है. ये नाम से बैठता है. ये क्या है? ये देखें सिराबलम है ना. इसका मतलब बोटा है. तो ये अच्छा ये देखें ये T1 है T2 है. T1 है. जब देखें where is T1? Fate is bright and tumor is also bright. So what is the diagnosis? Is a lymphoma. Is a lymphoma. Now same patient this is T2. Because fate becomes dark, tumor becomes dark. So this is exception to the rule. कि अगर आप MRI में आपको नहीं 100% पता चलेगा भाई इसको लाइकोमा या लाइकोसर इसको कोई और मसला नहीं. तो सिंपल तो कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं MRI में जो आपको 100% बताएंगे. ठीक है. चलिए सही. ऑस्टियोब्लास्ट क्लियर है. फीमर मीडियल लैटरल या पोस्ट फीमर सेम. ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है. ठीक है. ना सी दिस इज द न्यूरोस्कोपिकल है. और ये पूरी वास्टस लेटर्स इन्वॉल्व है. डायफ्राम भी इन्वॉल्व है. हाफ ऑफ ठीक है. इसका मतलब मीटर साइज कहाँ बचा हुआ है? ये वाला ये ये हाँ ये एग्री. ठीक है. वास्टस इंटरमीडिएट क्योंकि बोन पे ज्यादा मसल का कौन सा पोर्शन है? वास्टस इंटरमीडिएट. ये वास्टस इंटरमीडिएट है और ऑन एंटागोनिस्ट सर्फेस. ठीक है. क्लियर. तो ये इसको रेडियोलॉजिकली क्या डायग्नोस? इसमें कॉर्पस ट्रायंगल है. ये देखो ये तो ऑर्थोप्लाज्मा सही. अब ये एक्सरे देखें जो ये हेड सही है मगर नेक भी इन्वॉल्व है. ट्रोकेंटर भी इन्वॉल्व है और सबट्रोक भी इन्वॉल्व है. एब्डक्टर भी इन्वॉल्व है. की बायोप्सी जैन से ट्यूमर सही. तो सिंपल MRI will give you कि भाई कहाँ से कहते हैं न्यूरोस्कोपिकल. चलिए ये क्या है? में एक ही डायग्नोसिस सही कौन बता रहा हूं. और MRI में क्या देखना है? इसको MRI को क्यों देखना चाह रहा हूं? ज्वाइंट में देखना. आप इसमें ये तकरीबन ACL की जगह है. इसमें पॉपिटल आर्टरी आप देखते हैं ना वेस्टिबुलर. एक बंडल देखो. तो लुक एट इसमें ऐसा लग रहा है जैसे एंटीरियर. अब इसमें दो से देखेंगे ना. ये पोस्टीरियर वन साइड है. भी पहले एंटीरियर तो थोड़े बहुत दिख रहा है. बाकी तो आधी से पोस्टीरियर इन्वॉल्व है. ठीक है. आधी से पोस्टीरियर इन्वॉल्व. अगर आपने सिर्फ ये आगे वाला सिर्फ प्रोडक्ट के तो आधा तो पहले रह जाएगा. तो MRI will give you कि भाई आपकी ग्रोथ पीरियड की कितनी % इन्वॉल्व. तो आप पेशेंट को ये भी गाइड करें भाई ग्रोथ कितनी होगी. इन्हें आपने ऐसे ग्रोथ का साइज खराब है. और ये आपको अप्रोच भी बताएगा कि भाई मुझे पोस्टीरियर से भी निकालना है तो पोस्टीरियर वाला कैसे निकालो. तो आप इसका मतलब पोस्टीरियर मीडियल अप्रोच करेंगे अगर मुझे पूरी फाइल को साफ करना है. क्योंकि लेटरल साइड से जाऊंगा तो मुझे फिबुला और लेटरल साइड के स्ट्रेचर मुझे आने नहीं देंगे. मैं पीछे पोस्टीरियर बोलता है पास पहुंच नहीं पाऊंगा. जब ऐसा के रूल है कि मेटाफिजिक्स अगर इन्वॉल्व है तो एपिफिजिक्स बायोलॉजिकल वेरी ऑटोमेटिकली
निकाल लें। ये देखिए इसमें ना आपकी ग्रोथ प्लेट भी एंटी तो देखिए बेरियर जरूर है बट दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट सब में नहीं है। अगर ट्यूमर एक ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व कर दे सही है। तो इसमें देखिए ये बेनाइन है तो भी बेनाइन प्रोटोप्लाज्मा बेनाइन एग्रेस है ना तो भी देखिए एग्रेस इन्वॉल्व किया सही है भाई। आपके दिखा दें तो बहुत सारे आपको दिखा सही है। ये ऑपरेट हो गया इसमें हमारा फाइंडिंग अच्छी है दिखा सही। अब ये यहाँ पे पहले बायोप्सी होगी जीसीटी आ गया वो एपीसी आ गया फिर बोन ट्रांसपोर्ट कर ली फिर उन्होंने विक्रांत हो गई फिर दोबारा बायोप्सी की जीसीटी आ गया फिर 4 डोज जेनुसुमेब दे दी फिर वो हमारे पास आ गया। अब 4 डोज जेनुसुमेब देने के बाद वापस आ गई ये वो जेनुसुमेब ठीक है। आपके कान में रेडियोलॉजिकली क्या है EP5 खुली में बच्चा है ना 20 साल से बड़ा नहीं है ना ये बच्ची है उसके ऊपर है 15 साल सही। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली बेनाइन ज़्यादा लग रहा है सही। पहले ये ECG कम लगा है फिर पीछे होनी चाहिए 20 ईयर है वो उसके ऊपर होना चाहिए मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए इसमें तो अभी भी EP5 खुली हुई ये तो अब रेडियोलॉजी के लिए तो ये ऐसे है कि जैसे बायोप्सी ना एक ये हुई दूसरी हुई अब क्या करता है सही। तो उसने ना उसको GCT लेने आपने उसमें दे दी जब टेबल अब लुक एट द इसमें एक साइन है डबल बबल साइन एक बबल ये एक बबल ये एक बबल ये एक बबल ये तो ना मल्टीपल बबल साइन नजर आता है एबीसी में बबल साइन नजर आता है तो ये तो डबल बबल साइन इज डायग्नोस्टिक फॉर एबीसी मगर आपको जीसीटी के एमआरआई में उसमें भी कभी कभार आता है सर फिर उसकी बायोप्सी में वो कैसे क्योंकि एबीसी में भी जेंट सेल ट्यूमर आते हैं जेंट आते हैं एबीसी की बायोप्सी करेंगे ना तो उसमें भी जेंट सेल मगर उसमें हिमोसेल रिमूव ये जीसीटी में हिमोसेल नहीं अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया है तो हो सकता है जीसीटी हो तो ये देखिए जीसीटी जेंट सेल है ना उसमें तो जेंट सेल जहाँ पे भी तो वहाँ डंडे से काम करे तो कॉन्ट्रोप्लाज्मा में भी बायोप्सी में भी जेंट सेल होती है तो वहाँ पे भी काम करे हाँ ये तो उसमें ये होता है कि अगर ये जीसीटी है तो उसके एक जेंट सेल में 50 जेंट सेल हो 50 एबीसी वाले में 5 होंगे 5 से 10 होंगे कितने हाइपरप्लाज्मा ये तो 50 सेल होंगे ये भी समझे सही है। ऐसे तो हाइपरप्लाज्मा और एक सेल से कम होगा ये सभी जेंट सेल होंगे। सर जीसीटी के अंदर भी सर वो कहते हैं कि मतलब समटाइम्स इट डजंट ब्लीडिंग की वजह से हेमोसाइटिक डेपोजिशन की वजह से कुछ वो फाइब्रोस्ट्रोमा भी नजर आता है उसके जो कंपोनेंट है फाइब्रोस्ट्रोमा होता है वो भी सेल नजर आता है टिपिकली सही है भाई क्लियर रोड पे अभी आप इसको बहुत देखेंगे ना ये एक बबल ये दूसरा बबल सर ये एक बबल ये दूसरा बबल ये सर क्या कह रहे हैं इसकी एक्सपेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एबीसी इज एब्सोल्युटली एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट तो ऐसे भी हो सकते हैं सर। और एबीसी का सबसे पहला डिफरेंस डायग्नोस क्या है जीसीटी दूसरा पहले इंजेक्शन हॉस्पिटल था इसकी सर एबीसी सी ऐसा लगेगा जैसे पहले और उसमें भी लगेगा जैसे ब्लड आ रहा है तो लगा ब्लड आया बायोप्सी भी कभी कभी जाए सर लोकेशन भी सेम है ये डेंजरस तो पहले इंजेक्शन हॉस्पिटल था पहला डिफरेंस आया तो डोंट इग्नोर व्हाई आप एबीसी देखें ना कंफर्म जरूर करें उससे कंफर्म सही है भाई क्लियर चलिए हाँ सही है ह्यूज सही है अभी ब्लीड कर रहा है कंप्लीट हो गया वेयर द ट्यूमर ये टिबिला अब आप मुझे क्या पता चला टिबिला में नॉर्मल है नहीं है इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी सर एमआरआई कराएंगे तो ये हमारा लिख के देते हैं हमारा कुछ भी नहीं नजर सर ये न्यूरो से बंदा साइड दूसरा वाला ये ऊपर ब्लैक वाला ये तो टिबिला है कुछ भी नहीं नजर आ रहा है कुछ भी नहीं नजर आ रहा इसका मतलब है तो पोस्ट के लिए पूरा डिपार्टमेंट कंपार्टमेंट तो इंट्रोडक्शन कर मुझे बहुत बात दिखाएंगे लगेगा कि एक कट इज नॉट टू बी तो इट मींस यू नीड कॉन्जुगेटर कहीं नहीं ये वेसल नजर आए अगर एक भी बची हुई है तो भी काम कर सकते तो ये पोस्टर आगे इन्वॉल्व है फेयर इनफ इनके उसको जम जाएगा मगर वेयर द शेडिंग ना ये कॉमन फेयर ना यही है ना सही है तो कॉमन फेयर अंदर में देखें अभी कुछ होगी मगर बात क्या रिमूव इट रिमूव विद कॉमन फेयर जिसका
ड्रॉप हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर? अब इसका दूसरा कट है, एवरीथिंग एल्स दिस विल बी परमिसिबल, एवरीथिंग ऑन पोस्टीरियर मीडियल पोस्टीरियर लेटरल साइड, ये जो भी स्ट्रक्चर होने सारे मॉडल मीडियल साइड से चले भाई। आपकी और बहुत सारे सर बैकग्राउंड क्या चाहिए? जी भाई, ये डॉक्टर यूसुफ ये संभाल लेंगे, अपने बैग में डाल देंगे। किसकी दुकान पे? खाना अंदर अलाउ नहीं है भाई, खाना बाहर। आप कराची जब बैठ जाए
आप ही थे जो लड़ रहे थे मुझसे? हाँ कहाँ पे? नहीं मैं पता नहीं, एक कोई बंदा लड़ रहा था, वो लड़ रहा था कि वो जो है ना वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं, वो दूसरा था, मैं तो इधर बैठा था सारा दिन। जी ये अंदर अलाउड नहीं है, बंद कर दिया। प्लीज खाना अंदर अलाउड नहीं, आपको बाहर खाना पड़ेगा। नहीं बाहर खा रहा था, लेकिन बात ये कि जो माइक तो नहीं ऑन ना, माइक ऑफ है ना, मेरी आवाज़ सारी जा रही है वहाँ भाई, सारी आवाज़ चली गई। आ जाए ना डॉक्टर यूसुफ। क्या काम है? ये तो रख दे मेरे बेग में। बंद हो गया, मैं इसको ये बंद नहीं होगा, ये बंद करो। अच्छा वो ये छोड़ना से अच्छा सॉरी म्यूट करो। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, आप यहाँ पे बोतलें बता उसको कहाँ है, बस सारी लाइटें बंद करता जा रहा था। नहीं शट डाउन नहीं, खाली केबल निकालिए, जस्ट पुट द केबल आउट।
लैपटॉप मुझे कुछ 20 वर्ष यूज करना था, वो सब करता अच्छा नहीं लगता। वो सीन है। इसीलिए से तो हुकूमत ने मार्केट बंद कर दी, 8 बजे ये किया था, वापस ये इसके पिक्चर डाला जी मैं में पड़ा ये गवर्नमेंट को दिखाएगा, वो कार्ड है ना आपको मैं लेने गया 8 बजे पहले मार्केट ही बंद हो गई और सुबह उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपके कर दूँगा, मेरे पास अभी है नहीं मेरा उस बंदे के पास पहुँचा बताऊँ 8:30 बजे मेरे लिए आधी थी वो होता ना तो उससे मेरे लैपटॉप में लगा होता, सेम काम अपने लैपटॉप से करता मेरे ख्याल से जो लेक्चर जो होते हैं बाकी जो लास्ट वाला है वो शर्जील भाई से पूछ के कंफर्म रखे उनके लिए गेस्ट के लिए जो बाहर से क्या चीज़ मेरी कहाँ है चाबी, दो कोई डाव वाले थे वो भी नाराज हो रहे थे, ये लोग ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं सर्टिफिकेट तो बहुत बड़े हैं, लड़के नीचे लेके गए वो, इसीलिए एहतियातन लेके गए उसमें फिर। अच्छा ये मेरे पास 2 हैं, 2 हो गए ना कितने? हाँ तो हो गए ना? अच्छा है 2 और मैं हूँ और 2 ले गया वो दाढ़ी वाला ले गया, नहीं वो नहीं ले गया, वो जो अभी बोल रहा था। हाँ हाँ जो हमने साथ करा था ना पतला, हाँ वो ले गया। अच्छा, उसको फिर भी इधर ही हूँ भाई। अच्छा ऐसे देखे जाओ यार स्टॉप पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये कह रहा है ये वही भाई वीमैक्स की तरह का, उसी तरह का ये फ्री है। आप वीमैक्स कौन सा है? वीमैक्स तो पेड है, ये फ्री है, बस में ये है कि थोड़ा गिमिक्स हैं, ये मैं कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। बंद क्यों नहीं हो रहा, ये यूज़ भी कर दिया पुराने बहुत हो गया। आप उसको नीचे से बंद करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं यही पहले मैंने इसी को यूज़ किया था। 400-300 रुपये इधर ये जुगाड़ है, मेरा कैमरा भी लग सकता है, फ़ोन भी लग सकता है, बस इतना ही है। नहीं कैसा करना चाहिए कर सकते हैं।